बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान तमाम नाजरीन को स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त मैच खेला जा रहा है और ज़बरदस्त इस लिहाज से कि बड़ी ज़बरदस्त हमें बैटिंग परफॉर्मेंसेज यहाँ पे देखने को मिली हैं। बलूचिस्तान वर्सेस नॉर्दर्न ये मैच और 4 रोज़ा मैच का आज तीसरा दिन है और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है अब तक इस मैच में हुरैरा ने और बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। सरमद भट्टी के साथ मिलकर हुरैरा और सरमद भट्टी ने 365 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। बड़ी ज़बरदस्त डबल सेंचुरी स्कोर की, कैरियर बेस्ट इनिंग खेलने में कामयाब हुए हुरैरा। इस वक्त 243 रन के साथ नॉट आउट है। इसके अलावा जितनी दाद दी जाए सरमद भट्टी को ये भी कम है क्योंकि सरमद भट्टी ने भी 135 रन की इनिंग खेली और 365 रन का रिकॉर्ड साज ओपनिंग स्टैंड जो है वो फराहम करने में इस वक्त कामयाब हुई है। यहाँ पर नॉर्दर्न की टीम 144 रन की बर्तरी जनाब अभी भी हासिल है। यहाँ पे नॉर्दर्न को तीसरा दिन है, मैच में काफ़ी टाइम है, मैच का मूड क्या होगा, मैच किस करवट बैठेगा, यकीनी तौर पे इसको हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन साथ साथ जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है मोहम्मद हुरैरा ने, नौजवान हुरैरा पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अपनी परफॉर्मेंस को बताने के लिए इस वक्त मेरे फेलो एंकर शाह फैसल के साथ मौजूद हैं। सो ओवर टू शाह फैसल। हुरैरा, दिस इज़ योर डेब्यू फर्स्ट क्लास सीज़न एंड यू आर हैविंग एन आउटस्टैंडिंग सीज़न। कल जो आपने इनिंग्स खेली वो तो सबसे बेहतरीन साबित हुई। टेल अस समथिंग अबाउट योर फर्स्ट सीज़न इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना ब्लेसिंग है मेरे पे पहले सीज़न में इतना अच्छा करना। तो इसमें मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे सब फैमिली मेम्बर्स, इसमें सब शामिल है। मैं आई थिंक कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी हूँ, मैं उन्हीं की वजह से हूँ। और अगर कल की इनिंग्स के बारे में, पिच को कैसा पाया आपने? जी, पिच पे ये था कि पहले शान भाई भी खेले थे जैसे, तो उसमें थोड़ा सा ये था कि टाइम ले रहा था, पिच में बॉल सीम हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो ये था कि थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आप शॉट्स अपने खेल सकते थे, तो यही मैंने किया। पहले थोड़ा सा सर्वाइव किया और उसके बाद शॉट्स खेले, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाबी मिली। और आप लाहौर और जो सिंध का लेग है, कराची का लेग है फर्स्ट क्लास का, डिफरेंट पिचेस पर खेलने का एक्सपीरियंस हुआ, कुछ उस बारे में बताइए कि कैसे आपने एडजस्टमेंट की? जी बिल्कुल, लाहौर में ज़रा प्रॉपर ज़रा बैटिंग ट्रैक्स थे, जिसके ड्राई ट्रैक्स थे, जिसमें बॉल काफ़ी इजीली आ रहा था। आप हर तरह के शॉट्स अर्ली ऑन भी आप खेल सकते थे। लेकिन कराची में ज़रा बॉल अर्ली ऑन सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, उसके साथ साथ स्पिन भी हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। और इसके साथ साथ फिर जैसे आप टाइम लेते हैं, आप सेट होते हैं, तो फिर आप शॉट्स अपने सारे खेल सकते हैं। और आप जो टीम है आपकी उस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में, इस मैच को कैसे आगे जाता देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि एक अच्छी लीड पे उनको दोबारा से बारी दें और उनको आउट करें जल्द से जल्द। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैच हमारी फेवर में जाएगा। ट्रिपल सेंचुरी पर है नज़र? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अपना आई गिव माय बेस्ट शॉट, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। यू प्लेड वेरी वेल हुरैरा, एक्सीलेंट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपने सुना नौजवान हुरैरा को, क्या ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दी है और 243 रन की इनिंग खेली। शाह फैसल से अपनी इस इनिंग के हवाले से बात कर रहे थे और मेरे साथ मौजूद हैं गुज़िश्ता दिन के खेल को डिस्कस करने के लिए और आज की स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, पाकिस्तान अंडर 19 के फॉर्मर कैप्टन अहमद सईद। अहमद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। ये बताएं, कल जो मैच आपने देखा, रन्स की बरसात थी, जिस तरह हुरैरा खेलें, क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली और सरमद भट्टी का भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बेहतरीन इनिंग्स के लिए अभी कम उम्र है, पहला उनका सीज़न है, पहले ही 3 सेंचुरी बना चुके हैं और कमाल की बैटिंग उन्होंने की है। सबसे अच्छी बात, सीधा खेलते और टेक्निक जो है उनकी काफ़ी डिसेंट है। और सबसे जो अच्छी बात इस विकेट पे खेलने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि अब उन्होंने अपने एक एरिया बनाया, शॉट्स को कंट्रोल किया और बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। इस वक्त स्क्रीन पे नाज़रीन आप बैटिंग के ग्लिम्सेस भी देख रहे हैं, जिस अंदाज से हुरैरा ने बैटिंग की है और हुरैरा जिस अंदाज से खेलते हैं, आपने देखा उन्होंने कट शॉट भी खेले हैं, पुल शॉट भी खेले हैं, स्वीप पे भी गए, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा टैकल किया। काशिफ भट्टी को बिलखुसूस बहुत अच्छा खेले हुरैरा। जी हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक आपने बात की। फास्ट बॉलर और स्पिनर्स अच्छे प्लेयर की ये निशानी है कि ज़ाहिर है अगर वो किसी भी एक उसमें कमज़ोर हो तो आगे उसका खेलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो है वो दिखाया है कितना कंट्रोल है इनको, दोनों फास्ट बॉलर्स पे भी और स्पिनर्स पे भी। फुटवर्क बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको इतने श्योर हैं ये अपने फुटवर्क में कि इनको अभी तक मैंने आउट ऑफ प्लेस नहीं देखा इतनी बड़ी इनिंग में भी। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं हुरैरा की, लेकिन साथ साथ सरमद भट्टी को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त पिच रिपोर्ट के लिए शाह फैसल मौजूद है, हमारे पिच एक्सपर्ट। सो ओवर टू शाह फैसल। स्टेट बैंक की इस पिच पर 2 दिन में 750 रन बन गए।
ऐसा क्या हुआ इस पिच पे कि जहां पहले 2 दिन बैटर्स स्ट्रगल करते हैं, रन्स के अंबार लग गए। गौर से देखा जाए तो अगर बॉलिंग जिस एरियाज में हुई है वो ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है। ये आपके सामने एक मार्क मैंने लगा के रखा है, ये शॉर्ट ऑफ बैक ऑफ अ लेंथ है और स्टंप्स की लाइन से बाहर है। बहुत ज़्यादा रन स्क्वायर ऑफ द विकेट बने हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि बॉलिंग पीछे भी हुई है और विकेटों की लाइन से बाहर भी हुई है। जो पहले मैचों में हमने देखा है, जो आइडियल लाइन और लेंथ इस पिच पे रही है पहले 2 दिनों में, वो तकरीबन ये जो 6 मीटर का एरिया है उसके करीब रही है और स्टंप्स की लाइन में चौथी ऑफ स्टंप तक ये चीज़ें देखने में नहीं आई पहले 2 दिनों में। तीसरे दिन की अगर बात करें तो तीसरा दिन तो होता बैटर्स के लिए ज़्यादा साजगार है यहाँ स्टेट बैंक की इस पिच पर, लेकिन जो चीज़ें अहमियत की हामिल हैं, आपका गेम प्लान अच्छा हो, आपका स्किल लेवल अच्छा हो और एक्सिक्यूशन अच्छी हो, तभी इस विकेट को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे आप बैट्समैन हो या बॉलर। थैंक यू सो मच शाह फैसल। पिच रिपोर्ट आपने सुनी नाज़रीन शाह फैसल से। अब जिस तरह से शाह फैसल ने पिच रिपोर्ट दी है, अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि रन्स का एक पहाड़, 144 रन की बरतरी है यहाँ पे नॉर्दर्न के अगेंस्ट है बलोचिस्तान। किस स्ट्रैटेजी के साथ आज आएगी नॉर्दर्न? देखिए, विकेट जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है बैटिंग के लिए। कल भी हमने देखा कि इस कतर अच्छी बैटिंग के लिए वो हो गई थी, मुश्किल हो रही थी बलूचिस्तान के बॉलर्स को बॉल करने में। दूसरा, उनका कीपर का जो मसला चल रहा है बड़ा गंभीर है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो, जाहिर है उसमें बॉलर्स भी जो है वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन ये है कि हुरैरा की आई एम श्योर 300 रन की इनिंग, 300 रन के करीब आ गए हैं वो, 50 रन मेरे ख्याल से रह गए हैं अब, तो उसका इंतज़ार ज़रूर करेगी नॉर्दर्न। उसके बाद प्लान करेगी मेरे ख्याल से जल्द अज जल्द कुछ इस तरह की लीड, 200-250 रन की लीड देके इनको खिलाने की कोशिश करेंगे। अब बलूचिस्तान के क्या मसाइल है? उनका जो विकेट कीपर हैं बिस्मिल्लाह ज़ख्मी हो गए, फिर उमर अकमल जो उनके सेकंड विकेट कीपर थे उनको इंजरी हुई, अजीम घुम्मन के बॉल लगी। क्रेडिट जाएगा अजीम घुम्मन को, जल्लाद को, रज़ाउल हसन को, कि जिन्होंने अपने हाथ उठाए और टीम को सपोर्ट किया, टीम मैन बन के सामने आए। जी हाँ, बिल्कुल 100% उनको जो है वो क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो मेन स्ट्रीम प्लेयर्स आप नहीं कहेंगे इनकी। अगर आप टीम के नाम उठा के देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं उसमें। तो मेरा ख्याल से लैक ऑफ कमिटमेंट मुझे बलूचिस्तान की तरफ से नज़र आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि जीतने का तो इनका जिसको कहते हैं खुद ही ऐसा लग रहा है कि जी नहीं चाह रहा जीतने का। लेकिन अगर ये मैच बचाने में भी कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ऑलराइट, मैच बचाने में भी कामयाब हो जाए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन साथ साथ अभी हुरैरा को जो है 57 रन मजीद दरकार हैं अपनी ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने के लिए। सीज़न की दूसरी ट्रिपल सेंचुरी होगी एहसान अली के बाद, जो हुरैरा इस वक्त उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरह आमिर वसीम ने कोचिंग की हुरैरा की, शुएब मलिक के ये जो है वो नेफ्यू हैं, तो ये एक जो इनकी कोचिंग है, जो इनकी स्किल्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, कि जो इनकी बेसिक्स बड़ी अच्छी नज़र आई हैं। बिल्कुल लग रहा है कि अच्छे कोचेस ने इनके ऊपर काम किया है। ज़ाहिर है शुएब मलिक का इन्फ्लुएंस जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का सारा उन्होंने अपना तजुर्बा जो है वो भी इन पे लगाया होगा, ज़रूर दिया होगा, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऊपर वो भी इनको बताई होंगी। तो एक बड़ी अर्ली एज से अच्छा है कि ये अच्छे प्लेयर्स के इन्फ्लुएंस में, अच्छे कोचेस के इन्फ्लुएंस में, तो आई एम श्योर कि आगे जाके इनको बहुत फ़ायदा होगा। सरमत भट्टी के लिए क्या कहेंगे? अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, अजीम घुम्मन की क़यादत में, उनके नायब कप्तान थे। उसके बाद परफॉर्मेंस की इन और आउट चलती रहती है, लेकिन इस सीज़न में सरमत बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म करते नजर आए। जी हाँ, बहुत अच्छी। और मेरे ख्याल से वो मैं कह रहा हूँ पिछले 2 दिन से कि वो मेक शिफ्ट ओपनर के तौर पे हैं। आमतौर पे नीचे खेलते हैं, लेकिन ओपनर के तौर पे आए और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और 200 के मुकाबले में उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस छुप गई, लेकिन शानदार बैटिंग उन्होंने भी की है, बहुत अच्छी इनिंग्स है। ऑलराइट है, लेकिन परफॉर्मेंस जो दी है बड़ी ज़बरदस्त कुछ परफॉर्मेंसेस नज़र आई हैं बलूचिस्तान की जानिब से। जो 190 रन की इनिंग खेली शान मसूद ने, उसको भी जो है हमें बिल्कुल सराहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात में, टेंस सिचुएशन में जाके शान मसूद ने सिंगल हैंडेडली इस एक एंड को ऑक्यूपाई रखा और एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर बोर्ड पे सजाने में कामयाब हुए। यहाँ से इतना ही। अब से थोड़ी देर के बाद बलूचिस्तान वर्सेज नॉर्दर्न लाइव एक्शन का आगाज़ होगा। हुरैरा 243 रन के साथ अपनी इनिंग का आगाज़ करेंगे। स्ट्रेट अवे लिए चलते हैं आपको लाइव एक्शन के लिए कमेंट्री बॉक्स की जानिब। Hello and welcome to a lovely day here at State Bank Sports Complex for day 3 of round 10 between Northern and Balochistan, where Northern will start their inning from 449 for 2. What a fantastic day it was yesterday for them. A star was born in form of Mohammad Hureira, a young lad from Sialkot, eyeing to be the second youngest Pakistani to score a 300. What a proud moment this must be for him, for his family, for the coach, for the management of Northern. Him alongside Umar Amin, who's still not around 17. I've got Shah Faisal alongside me, who spoke to
Herrera in the morning. What a lovely moment. What a lovely young lad he is. Definitely. He lit up this stadium yesterday with his fantastic stroke play. And I was quite surprised. He talks very well. He has very good perspective on how things are at the moment. Very pleasant young man. It was a pleasure indeed to talk to him this morning. And like I said, very impressive the way he looks at things in perspective and the way he explained his thought process behind this fantastic first season. It just shows in his batting too. He was disciplined. He was very skillful. He definitely showed that he's got a good head on his shoulders. A very, very impressive young lad. He's on 243 at the moment. Everybody wants him to get to that 300 mark. Yeah, I did ask him that. He just brought a smile out on his face and that look in his eyes. He just said he wants to start again and then he'll see where this innings takes him. But looking at his eyes, you could tell he really liked the thought of getting to that triple ton and won't be surprised if he gets there. But this morning's session is very important. That new ball is still relatively new, and Akif in particular bowled really well in that evening session. So he would have to get through this first hour, and then third day is normally a batting day here at the State Bank Sports Complex. 17 not out, Umar Amin. He will have to play a role for Mohammad Herrera. Just stay there with him, being the senior partner. It's always helpful to have somebody like him alongside. Because here is Herrera, a young lad from Sialkot, 19 years of age, 243, is still unbeaten. And the strike rate is magnificent, 91, 4 sixes, 30 boundaries to his name. An excellent prospect in making. You make a good point about Umar Amin. His importance is vital because there will be some nerves definitely for young Herrera. Akif to start off the day. We've got another wicketkeeper. Raza Al Hassan this time. It's been a troubled match for Balochistan. Do we need to talk about it? Well, we'll have to as long as this misery continues. Raza Al Hassan did the job for a brief moment yesterday before Jalal Khan took over. But I think he must be sore as well. If you haven't done a lot of keeping in your life, it is not the easiest thing in the world. Balochistan, their troubles are infinite. Nice defense. The quality that I've witnessed yesterday from Herrera was that he looks to get runs. Even if he's defending, he's playing it in the gap. And that is what you want to see from a young batter. Always searching for runs, always looking for runs. It's end of 92 overs, 449 for 2 Northern. Highest individual scores in Quaid Azam Trophy since the revamp of the system. Ahsan Ali, that magnificent triple 100 earlier in the season. So Hussain Talat last year, big double 100. Rizwan Hussain at this venue just a few weeks ago. Abid Ali, and then Mohammad Herrera. He has all the opportunity to climb right up top this list. And the most excellent thing is to see the youngsters. He's 19 years old. Have a look at Rizwan Hussain, a youngster, 253. Herrera, 243, still unbeaten. And topping the list is another very talented young batter. Ahsan Ali scored a brilliant 300 in a day-nighter at Gaddafi Stadium against Central Punjab. It was a lovely inning we witnessed there. Hussain Talat, Abid Ali in the list too. Look at those eyes. They mean business. They mean purpose. Yes, indeed. And towards the end of last over, you made this point about how he's always looking for runs, even on that forward defense. He looks to play it with soft hands and takes a few steps, making sure that his partner knows his intentions are clear. Tajwali, another player getting 100. Not with the bat, but with the ball. He's given away 107 runs in his 22nd over he's into. It's not something that he will be proud of.
Have a look at that, 107 runs from your premier fast bowler. Tells you the story. Normally a very reliable campaigner, Tajwali, but that complacency, that lack of professionalism around the camp has probably affected everyone. Nicely off to the back foot. So remember, bowling is a very, very tough physical job, and if you see around the group lack of interest or lack of commitment, it really puts a dampener on how much effort you want to put in as a bowler, especially as a fast bowler, running in ball after ball. Not easy. And Tajwali has succumbed to that feeling around the group, because we've seen him many times. He's a very, very reliable customer, but these figures are not like Tajwali. Spot on. Spot on with that, Shah Faisal. It's been disappointing. Probably the poorest effort we have seen from the last 10 games that we have witnessed in Quaid Azam Trophy. But Balochistan's troubles are not just limited to this game. Cast your mind back to the start of the season. Faisal Iqbal was their coach. A lot of things did come out of that group, and then eventually, in a bizarre circumstances, Faisal Iqbal took a leave for some mental health issues, and then went ahead and took an assignment in the T10. That was really not on, and I think he's in the hot water for that. Yeah, you make a very good point about the troubles of Balochistan. Well, they started off well in the first game. Bangalore getting a 200. We all thought, fine, here's a team to look forward. But then when they moved to Faisalabad, things started to go worse for them. And after that, whatever you said, it's all correct, it's all true. Yeah, definitely. And one of the advantages of this system would have been to spread cricket to that part of the world. Runs, first of the morning to Umar Amin. And this one run will bring up 450 for Northern for the loss of just 2 wickets. It's been a remarkable game of cricket for them. Wonderful partnership early on between Hurera and Salman Bhatti. And now it's Hurera and Umar Amin taking to that lead to 145 runs. They just look certain from here to at least draw this game, if not win it. But they should look to win it from here and qualify for the final that's going to start from 25th. Wonderful effort. He can take his time. There's plenty of time left in the game. We're at the beginning of the third day. 2 days to go. 93 overs gone. 450 for 2 Northern. Good start from Herrera in particular. Sometimes when you play that big knock, you come out next morning, you're thinking you're still batting on 243, which is the case. But today's the new day. You have to start again. And he's done it well. Remember, Chef Faisal, he's just 19 years old. The muscles have not developed as such. Still young, the body's weak. Still, you got to give it to him for this effort. I did ask him off air about the situation with his right arm. That's where he was troubled, and with a smile, he just said he's fine. He's got to be fine. Because 243 is a wonderful effort. Edged! It's gone through. Gone through Imam ul Haq. This tells you the story. Nothing has worked for Balochistan. Another time this edge going down. The misery continues. Well, is that man Imam ul Haq? I hope he's fully fit as well, because he wasn't part of the warm-up routine of the Balochistan team. Whilst they were warming up, he was inside the dressing room. And that edge, slip catches are never easy. It was on a perfect height. Must have swallowed it
for an international cricketer. It's a combination of mind and body. If your mind is not in the game, if you're not concentrating enough, you will see such incidents to happen in the ground. And if you do this to your bowlers, and if you look at their figures after the game, conceding 5 or 6 and over, then you don't blame the bowlers. Imamul Haq, very disappointed. Very, very disappointing. It's not Yasir Shah, mind you. Wonderfully done. This extraordinary drive will earn Herrera his first boundary of the day as he moves to 247 now. Adding injury to the insult. Akif looking to bowl that fuller length, but Herrera's driving has been outstanding. Just turning the face of the bat to find that gap between cover and point. Look at that, split the gap beautifully. The timing was immaculate. Wonderful. It's just so heartening to see a young guy playing such a sensible inning. Inning full of patience, skill, aggression also. Just loved the way he played Yasir Shah yesterday. Came down the track on every occasion, hit him for a couple of sixes, then rocketed on the back foot and played it towards mid-wicket area. It's never easy to play a leg spinner towards that onside, and he did it with some ease. Yasir Shah had no answer to his inning yesterday. They've been on the shorter side, this Balochistan side. My friend Shah Faisal have been emphasizing on the length all day long since the first game here at State Bank, that you got to bowl in the right areas, that 5-meter mark. They're not listening to you, especially the Balochistan side. 455 for 2. That's what they're staring at. Look at that wicket. These are the marks, the red and blue. That's the ideal line and length. We have a look at it in detail, but they've been a lot shorter than that and wider, allowing the batters to free their arms. Pretty dry, but the surface in general is well intact. Wow, what a start to the morning by Herrera. Second time in this morning session, in this over, he's played a wonderful drive to bring up his 250-run inning. An excellent inning. Wonderful batting. This is great to watch. Left arm over the wicket angle was there, like we've seen many times. He's using this footwork. Look at that. On that occasion, he gave himself a little bit of room to open up that offside. It wasn't your classical cover drive, more of a square drive. Use of the wrist as well. He's showing full range of his repertoire. The placement was wonderfully placed. It has been the case since yesterday. Young Herrera, 19-year-old, 251 run. Just heartening to see. The guy with purpose. Probably the only thing that we're looking forward today. Not the first time Yasir Shah has done that. Gone through him for one. We don't mind that because Herrera is back on strike. We just saw that list of top scorers. We saw Hassan Ali, he's an opener. Abid Ali, he's an opener. Herrera is an opener. Rizwan Hussain can be an opener. He's batted number 3 or 4 at times in this season, but he has opened as well. And then I'll continue my point after this point. Another one through the gap. Excellent placement. What a wonderful shot this has been from young Herrera. Third boundary of the morning. It seems like they're starting from where he left yesterday. Wow. Simply wow. His cover driving has been of the highest order in this match. The technique to go with it, the shot selection. Look at that.
High front elbow, that bent front knee. Little bit of flourish, not the full flourish, but still the timing and placement was superb. Three boundaries. What a wonderful start. This was exactly what was expected of Herrera. He's moved to 255. And the third one was the best of the lot this morning. Definitely he's in control. And the point I was making with Pakistan team, Abdullah Shafiq making a very, very good debut. And we all know how much high hopes everyone has of him. Abid Ali is holding on to his place. Shan Masood shows that showed yesterday or the day before that he's still around. And then you see Herrera coming in, Haider Ali. Few of them can also be a part of 50-over cricket as well. That really will pose challenge for the likes of Imamul Haq, who was on the part of the test squad for Bangladesh. He's not a regular in test cricket. He is a regular in 50-over format and doesn't play T20 cricket as well. He would have to do a lot of catching up to match these youngsters. Up and over this time. Wonderful batting continues from young Herrera. This is the fourth boundary for him in this morning session, and is hurrying on to that milestone he's supposed to get, that 300 mark, to be the second youngest to get that. And he has started from where he left. Excellent batting. He stays with the shot. Look at that. This time he was intending to go aerial, but the shape that he kept until the ball hit the bat, he was very, very still, and the timing was there. A lot to learn from this youngster. Very solid technique he's built on. Just amazing point of contact he makes. Lets the ball come to him, plays it late. His head, his arms, his bat, all in one line when he plays that cover shot. Oh, look at the defense also. His head position, his arms, his footwork, all in one line. Very good lesson for any youngsters. This defense he's built his game on, and all the strokes on that front foot are the extension of that defense. He's moved up to the ladder. He's now become the second highest individual inning scorer of the Quaid Azam trophy this season. Just second in the list after Ehsan Ali's 303. Hussain Talat in the list also, 253. Rizwan Hussain played a wonderful inning in the same ground, 253. Abid Ali for Sindh, he scored 249 in the last season. Wonderful batters, wonderful list. What can fast bowlers do? It's been so hard to get wickets, and when an opportunity comes, they spill it. Like we saw in the last over of Akif Javed, it was a straightforward chance to Imamul Haq. Probably still not in the mood. Looks lazy. Just not the way you play cricket. Sorry, but no. Wow. Another very stylish batter, Umar Amin. The way he drives, it looks very stylish. Everything so good about his batting. Very unfortunate not to cement his plate in Pakistan side. At one point he was rated really high in that list of upcoming batters back in 2010-11 season when he toured England. But just lost his way after that. Very strange. A talented man like him lost his way. He scored runs this season also. He's amongst the runs getter of the season. He scored lots of runs over here in this Karachi leg. 753 runs, as I've been told by a friend on my left side, Farhan Nisar.
Always working with numbers. Always looking at the laptop. Always with his phone. Always tweeting about the stats of the players. Wonderful man. Played and a miss. I'll say that in Urdu. Little bit of invariable bounce. This went underneath the bat of Umar Amin. You look at Akif Javed. Wicket is pretty dry. Pretty good still. Let's talk about Farhan Nisar. Where he comes from, where he belongs to, what he does. We'll explain you in a bit. So probably, Shah Faisal, you've been around for 10 matches with Farhan Nisar. Probably the best statsman of the country, because he knows everything about not just the numbers, but their families, from where they come, from which club they belong to, what's their history. He just loves the game, just loves talking about it. Well, you'll hardly find a more better or a passionate person for the domestic cricket or the domestic game in Pakistan than Farhan Nisar. I've known him for a long time now, not just these 10 games, but... Yeah, for me, it's just the 10 games. We haven't met before that. It's very strange that I haven't met a cricket fanatic like Farhan before. Farhan, well done. We're proud of you. Your education is complete now for the domestic game once you've met Farhan Nisar, because you cannot claim that if you haven't met him. 468 for 2. Yeah, we've been talking about Farhan Nisar, and you just mentioned about no better guy for domestic. I came across an article 6 years ago. He wrote about young Herrera. Would you believe it? 6 years ago, he wrote about Herrera, and look at today. He's on the brink of being the second highest to get a 300. Farhan, well done. The thing is, he's got a network, and he keeps an eye through that for the upcoming talent. Oh, this will run away for 4. Luck is on his side too. So it should be, because he's been brave. He's been exciting. He's been committed. Another boundary to him. Tajwali's struggles continue with the ball. This was a short delivery, but wrong line. Herrera just helped it on its way. Boundaries are flowing for the young man this morning. He's climbing that list very quickly. Just the one frontier to conquer. That's 303 by Hasan Ali. 40 runs away from that. Pulled. There is a fielder. Oh, he's done well. Very few good things that have happened to Balochistan. This fielding effort is one of them. You can imagine how few they've been. Even that, an old-fashioned way of stopping the ball. No dive. Just bring out the big number 12. But Herrera got on top of it nicely. Rolled the wrist and found the gap. Kashif Bhatti saving 2 runs. Just love his stance. Gets ready just before the ball is delivered. The balance is perfect. Shuffles across a little. Have a look at that. Oh, it's in the air. It's in there, but it should be safe. It should be safe. It is safe. Oh, Herrera, be careful. Be very careful. This was an opportunity. A false stroke. This is what we wanted to see, that how can he cope the short pitch stuff. He hasn't been attacked with that. This ball was outside the off stump, got big on him. He was looking to drag it, but couldn't control. Lucky it fell safely. Got to watch out for that. This is the second time, Shah Faisal, that he's played this shot. Remember, even in this last session, last evening, he played a similar shot outside the off stump, a short delivery, which he tried to pull it in the air, but it was safe. He's not gonna get away many times because of that shot. He's got to learn to let go of these deliveries outside the off stump, these shorter ones. Another run added to the total.
Yeah, like I said, one would like to see him attack more with this line and length to see how good is he against short pitch stuff, because other than that, he's really shown complete dominance. Too early, and you can get away with mistakes like this when you're batting on 266, but you got to keep an eye out on that. Yeah, yesterday there were occasions when he scooped those, late carried them over that slip area. But whenever he's tried, yeah, just like that I was talking about. Wonderful shot, but there is a fielder placed for that, but he can't help it. He can't help anything. 4 more runs to young Herrera. Everything working for him. Well, at least Balochistan has got a plan today, but Herrera has really shown his liking for this shot. A very modern day kind of a stroke, and bounces on a good line. He's easily been dealing with that, but that pull shot hasn't come out cleanly, but this is excellent. Shows how well he is watching this ball. It is not an easy shot to execute. You got to wait and watch the ball till the end to execute this sort of a shot. Wonderful batting. Oh. Whoa. 2 wonderful shots either side of the ground. Last one over third, and this one straight to the fielder. Straight drive. 97 overs gone. 480 for 2. Northern lead by 175 runs at the moment. What would Northern be looking from here, Shah Faisal? What would be their plan? For how long will they carry on batting? There's a lot of time left in the game, but the intent has to be there for them to get to a certain target, whichever they have in mind, like we were talking about 600 yesterday, to get there as soon as possible. And young Herrera is executing that plan. That's poor bowling. Easy pickings for Umar Amin. Gentle half volley towards leg stump isn't going to harm many batters. Yeah, the plan for Northern is to play with intent. And Herrera, who's close to a triple hundred, but he's sticking to that game plan. And he's batting with real intent, not allowing any opportunity to score runs go by. He's not thinking about his personal milestone, just sticking to the team goals. That's what good teams are made of. When you don't play for your individual milestones, teams are always bigger from your individual performances. This young lad is showing us that. Well, that's how he has played since yesterday. He's looked to be positive. He's looked for runs. He's kept on searching for singles, kept on rotating the strikes. We've seen everything. Should look to get 2. Now he'll settle in for 1. And also in cricket, they say timing is very important. This inning from Herrera being live streamed cannot have come at a better time, because the next one is the big final, which will have even more audiences. When he gets into that final, he would already be expected to do well. That would put him under a different kind of pressure, and it will be a different kind of test for him. And it can make him grow very fast if he produces another good one there. Spot on. Well, he looks very compact, looks very disciplined. And it looks like a typical guy from Sialkot. Shoaib Malik, we've seen a lot of talent from Sialkot. Shoaib Malik tops the list. Another one I remember is Zaid Fazal from 90s. Shahid Yusuf coming from Sialkot. Ayub Dogar also coming from Sialkot. Ijaz Ahmed was the first one in the modern era who got to the Pakistan team. He really made his mark. Always players coming out of Sialkot are good against pace. Forgot to take one name. That was Mansoor Amjad.
very fine leg spinner. And I've just been told by the Superman, by the Statsman, that Herrera is under his coaching back there in Sialkot. Wonderful signs. He would know how to build a player. Did have a chance to talk to Mansoor Amjad earlier in the season and was very impressed with his progressive thoughts, the way he wants to carry his responsibilities and what kind of brand he wants to promote in his charges. That's Mansoor Amjad. And good to see such young coaches coming and having an influence on players like Herrera. Absolutely. I think it's very important. I think this is the greatest step that PCB has taken to give these opportunities to these young guys to coach. That's one of them, Samuel Niazi, recently retired. We saw Izaz Chima for Southern, Irfan Fazil in that list. Something that we have not witnessed is from Balochistan. We've not seen much from that coaching camp. This will end the 98 overs. 483 for 2. Northern lead by 178 runs. नजीबुल्लाह गेंद करने के लिए मौजूद हैं। उमर अमीन ने एक मोहतात रवैया अब तक अपनाया हुआ है। हुरैरा टॉक ऑफ द टाउन। तवील चेज है एक मरतबा फिर डीप में, लेकिन आकिब जावेद की जब तक थ्रो पहुंचती है दूसरा रन मुकम्मल करने के लिए चले गए। अभी भी फ्रेश हैं, आधे घंटे का वक्त हुआ है। कल की निस्बत आज कुछ मौसम गर्म ज़रूर है, लेकिन अभी भी एक फ़्रेश फीलिंग आपको मिल सकती है। नमी कुछ ज़्यादा है आज के दिन शहर कराची में। हुरैरा ने आज शानदार इनिंग्स खेली है और इनफरादी इनिंग्स का जहाँ तक सवाल है उस फहरस्त में अब वो आगे आ गए हैं। इनसे ऊपर अब मौजूद हैं खाली एहसान अली, जो कि सिंध की जानिब से लाहौर में सेंट्रल पंजाब के ख़िलाफ़ शानदार ट्रिपल सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद हुसैन तलत, रिजवान और आबिद अली का नंबर आता है। तो इस नए फॉर्मेट में ये नादिर मौका है कि ना सिर्फ इस सीज़न के बल्कि इन तीनों सालों के वो अब तक के टॉप स्कोर बनने का एजाज़ हासिल करेंगे सी इनफरादी इनिंग्स के हवाले से। सुबह खैर अली। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच अकील। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की नौजवान हुरैरा ने 243 रन के साथ आज अपने खेल का आगाज़ किया। 271 के इनफरादी स्कोर पे पहुँचे में यकीनी तौर पे ट्रिपल सेंचुरी की जानिब निगाहें होंगी और जिस अंदाज से खेल रहे हैं अंदेशा है और यकीन है मुझे कि 499 रन का जो रिकॉर्ड है हनीफ मोहम्मद का वो भी ब्रेक कर सकते हैं। अच्छी गेंद थी इस मरतबा। एक और इंजरी मुसलसल हम देख रहे हैं इस मैच में कि प्लेयर्स के हाथों पे काफ़ी ज़्यादा चोटें लग रही हैं। कल हमने देखा उमर अकमल के बॉल लगी, अजीम घुम्मन के बॉल लगी। ये शॉर्ट बॉल ऑफकोर्स थोड़ा सा बाउंस मिला, उसको मैनेज नहीं कर सके, गेंद बिल्कुल फिंगर टिप्स पे जाके लगी। पिच में अभी भी ये जंप मौजूद तो है, जिस अंदाज से रॉकेट किया है इस गेंद ने लगने के बाद पिच पे, वो शायद नॉर्दर्न वालों को ये सहूलत देगी कि वो अपने हरीफ बैट्समैन को जेर कर सकें। और दूसरी तरफ जीबुल अक्सई तवील कामत के हामिल हैं, बड़ा ज़बरदस्त इनका रनअप है, लेकिन वो जो बाउंस ऐसे कद के और ऐसे कद काट के हामिल एक नौजवान फास्ट बॉलर को मिलना चाहिए था, जो कि इसके अलावा भी उनको
मुख्तलिफ गेंदों पे कोशिश करनी चाहिए थी, शायद वो उस तरह की डिलीवरीज एग्जीक्यूट नहीं कर पाए जो कि बैट्समैन को सरप्राइज़ करती। टोटल आपके सामने है। अली, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये आज का दिन 2 सेशन इसके बाद अभी पहले आधे घंटे का खेल हुआ है और एक दिन और मौजूद है और बरतरी इनकी अब 20 रन पीछे रह गई 200 के। एक और शॉर्ट बॉल, अच्छा मैनेज किया इसको उमर अमीन ने। बिल्कुल 300 रन में समझता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए और जिस अंदाज से जो बॉडी लैंग्वेज है बलूचिस्तान की, वो बिल्कुल ही इस वक्त डाउन है, गिव अप कर चुके हैं। उनके प्लेयर्स को भी इंजरी का सामना है, विकेट कीपर भी उनके पास जानवन विकेट कीपर नहीं है, पार्ट टाइम स्टैंडिंग विकेट कीपर विकेट कीपिंग कर रहे हैं और ऐसे विकेट कीपर विकेट कीपिंग कर रहे हैं कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में शायद ग्लव्स नहीं पहने हों। तो इस तरह जो टीम का जो मोराल है उससे काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। लेकिन शान मसूद एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने पहले इनिंग में काफ़ी मज़ाहमत की थी, इस मरतबा पॉइंट पे खेलने में कामयाब हुए, रन का इजाफा हुआ। तो हम बात करते हैं इंजरीज की। काफ़ी इंजरीज हमें इस मैच में देखने को मिली हैं अकील। और कल जब ये मैच ख़त्म हुआ और हमारे जो कैमरामैन थे जब अपना ट्राईपॉड बंद कर रहे थे तो उनकी भी उंगली उस ट्राईपॉड में आ गई। इतना अनलकी चल रहा है ये मैच। जी हाँ, और सर्द मौसम में ज़ाहिर बात है कि ये एहसास भी ज़्यादा होता है, लेकिन आज के दिन उतना ज़्यादा सर्द नहीं है और उम्मीद करते हैं कि सिलसिला थमेगा, क्योंकि अभी भी एक मैच बाकी है इस कायद आज़म ट्रॉफ़ी का और सीज़न की ये अभी गहमा गहमी जारी रहेगी। इसके बाद PSL है, वक्फा रहेगा लगभग 1 महीने का और उसके बाद उसके अख्तिताम के साथ ही पाकिस्तान कप की शुरुआत है। ऑफ बाहर गेंद और ये होता है कि अगर यहाँ पर जेन्युइन विकेट कीपर होता तो इसको पकड़ने में कामयाब होता। आप देखें रजा ने कोशिश की लेकिन आप उनको दोष नहीं दे सकते, ब्लेम नहीं दे सकते। 22 के 4 रन। एक मरतबा फिर बाउंस हासिल किया है और लेटरल मूवमेंट भी इनको मिली, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इनके लिए ये और मसले का बायस बन गई, चूँकि ये सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर मौजूद थे और उन्होंने अपनी सी कोशिश की, लेकिन ना सिर्फ वक्त पे झुकने में कामयाब ना हो सके और ना ही ये गेंद उनके लिए रोकने का कोई मौका मिला। ओवर मुकम्मल हुआ 490 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे, लेकिन शायद विकेट कीपर को दोष नहीं दे सकते ऐसी एफर्ट पे। वो जिस तरह से अली कह रहे हैं कि किसी भी मौके पर उन्होंने शायद विकेट कीपिंग ना की हो, लेकिन ये मुश्किल जो आन पड़ी है। अब देखना ये वो किस अंदाज से इसको संभाल पाते हैं। एक वक्त एक क्वेश्चन ये भी है कि जो वक्त इनके हाथों से निकला जा रहा है, क्योंकि अभी भी अली आप देख रहे हैं कि बैटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा धड़का और गुंजाइश नहीं है पिच में जो कि आपको परेशान कर सके। और जीत हम दूसरे मैचेस पे भी निगाह रख रहे हैं, लेकिन नॉर्दर्न के अपने लिए जीत बहरहाल तकरीबन हर लिहाज से ज़रूरी है, तो वक्त उनको इतना देना होगा कि वो कंफर्टेबली आउट कर सकें। उमर अमीन एक्सपीरियंस प्लेयर इन कंडीशंस को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और कर रहे हैं। 185 रन की बढ़तरी है अब नॉर्दर्न की। मुश्किल से 2-4 बलूचिस्तान और उमर अमीन बार बार अपने हाथ को झटका देते हुए, जहां पे नजीबुल्लाह चकज़ई की गेंद लगी थी उनकी फिंगर टिप्स पर। पाकिस्तान के 200वें टेस्ट क्रिकेटर उमर अमीन। आकिब जावेद की शॉर्ट बॉल, पंजों के बल रखा हुआ है अब तक दोनों पेसर्स ने उमर अमीन को। और आज सुबह जो है वो कैच भी ड्रॉप हुआ इमामुल अक्सर सलिम में, तो जो चांस एक मिला था मुमकिन तौर पर अकील, उसको भी अवेल नहीं कर सकी बलूचिस्तान। जी हाँ, और इसके साथ साथ जो जनूबी पंजाब की टीम का स्कोर है वो तो सिंध से आगे जा रहे हैं 361 के नुकसान पे। खुद जनूबी पंजाब के लिए अब जो इतनी टीम्स मजीद आगे बढ़ गई हैं, चांस मौजूद नहीं है फाइनल तक पहुंचने का, लेकिन साथ साथ वो सिंध के चांसेस को भी अब इफेक्टिवली ख़त्म करते जा रहे हैं। NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुकाबला जारी है, जहां पर 361 रन बना लिए हैं जनूबी पंजाब ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पहले 4 विकेट्स हासिल करनी है, बर्तरी को उनको ख़त्म करना है, कुछ टारगेट देना है, जिसके लिए अब बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचा। तो सिंध की टीम ने हालांकि बाद में जाकर कुछ रिकवरी की इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो एक मरतबा फिर फाइनल की पहुंच से बहुत दूर नज़र आते हैं। और इस मरतबा इतना ज़रूर है कि टैलेंट नज़र आया है। जो सेकंड 11 में आपको टीम्स परफॉर्म करती नज़र आ रही हैं, जो नौजवान टीम परफॉर्म करती नज़र आ रही हैं, आने वाले सीज़न में मेरे ख्याल से अली हाई टाइम है कि उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके अब मेन टीम में भी, क्योंकि अब जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, अगर टॉप 2 में नहीं आ पा रहे हैं
तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से टीम कॉम्बिनेशन में अभी भी गुंजाइश मौजूद है जिसको ठीक किया जा सकता है। उमर अमीन की पिच पे मौजूदगी यकीनी तौर पे हुरैरा के लिए काफ़ी जो है वो तक़वियत का बाइस होगी, क्योंकि अभी भी हुरैरा 271 रन के स्कोर पे मौजूद हैं। ट्रिपल सेंचुरी की जाने जाने के लिए नफसियाती तौर पे उनको मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ खेले और अच्छी फील्डिंग थी यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग तैमूर अली की जानिब से यकीनी रन महफूज किए अपनी टीम के लिए। कुछ ग्लिम्सेस में बलूचिस्तान के प्लेयर्स ने ज़रूर परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो अब तक डोमिनेट ही किया है यहाँ पे नॉर्दर्न ने, और उसके लिए यकीनी तौर पे उनके कोच एजाजुनियर समीउल्लाह न्याजी और उनकी टीम मेंबरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आवाज चेक करने आ रही है कि नहीं आ रही? इस पे तो बत्ती आ रही। ये कैच किसका ड्रॉप हुआ? ओके। ओवर से खेल मुकम्मल हुआ। नॉर्दर्न यहाँ पर 127 पॉइंट के साथ टॉप पे मौजूद है इस मैच के आगाज से पहले तक। और एक और मिस फील्डिंग हुई है यहाँ पर, इस तरफा शान मसूद के पास से गेंद निकल गई और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। हुरैरा को शॉर्ट गेंद अब जो हासिल हुई है, जहां खेलने की मुतकाज़ी थी वैसे खेले, टॉप ऑफ द बाउंस जाके इस शॉट को उन्होंने निकाला है। पिछले 2 ओवर के दौरान कुछ हमने प्रॉब्लम देखी थी उनको शॉर्ट गेंदों की जाने, वो ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, लेकिन पिक्चर परफेक्ट शॉट, शानदार प्लेसमेंट ऑफ द बैक फुट बाउंस के टॉप पे जाके। तो ये जो पॉइंट्स टेबल है अली, इतना रश यहाँ लगा हुआ है, इतना तो एम्प्रेस मार्केट की गलियों में नहीं होता है, जहाँ पर 127 पॉइंट्स नॉर्दर्न के थे। और वो अब चूंकि जो सिंध क्रिकेट की हम सूरत हाल आपको बता रहे हैं, अगर वो मैच ड्रॉ होता है तो नॉर्दर्न के लिए भी ड्रॉ बहुत काफ़ी होगा, क्योंकि जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, अपडेटेड पॉइंट्स अब तक 135 पे पहुंच गए, 8 पॉइंट्स मजीद हासिल कर लिए नॉर्दर्न ने। ओ शानदार शॉट, अपर कट, और एक मरतबा फिर गेंद को चौके के लिए ले गए। ये दिन में दूसरी मरतबा हुआ है, कल कई मरतबा हमने देखा हुरैरा कराची की जान बने हुए हैं अपनी इस बैटिंग से। शानदार शॉर्ट बॉल दी और आखिर तक गेंद पे निगाह रखते हुए इस अपर कट को खेलने में कामयाब हुए हुरैरा। कोई फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं था और कोई फील्डर यहाँ प्लेस हो भी नहीं सकता, तो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बैटिंग का मुजाहरा नौजवान हुरैरा की जानिब से। शॉर्ट बॉल ऑस्टर से बाहर और उसको बड़े वाइजली खेलने में कामयाब हुए, दानिस्ता तौर पे 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अपनी बैटिंग से मुतासर करते हुए कोचेस को, सिलेक्टर्स को 279 के इनफरादी स्कोर पे जा पहुंचे हैं हुरैरा। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। और अगर आप हुरैरा को बैटिंग करते हुए देखें, गेंद गिरने से पहले 3-4 दफ़ा अपने सर को बड़े मखसूस अंदाज से झटका देते हैं। अब ये देखिएगा, ये 3-4 अंदाज से 3-4 मरतबा, ये ऐसा लगता है बॉलर बोलते हैं अब क्या, अब क्या। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। इस मरतबा शॉर्ट बॉल थी, उसको पुल करने में कामयाब हुए, आकिफ थे वहां पे फील्डर। मैं इनको कल से ये नोट कर रहा हूं कि जब बॉलर भागना शुरू करते हैं तो 3-4 दफा ये झटके देते हैं अपने सर को। यहाँ नॉर्दर्न की टीम फाइनल तक जो उनकी सूरत हाल बड़ी शानदार नज़र आ रही है, वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होंगे देखने के लिए फाइनल में। ये 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज हासिल की हैं। पहले बाउंस के टॉप पे जाकर ऑफ द बैक फुट, क्या कड़ाकेदार आवाज़ निकली थी, और उसके बाद जो उन्होंने खेला उससे ज़्यादा खूबसूरत, गेंद को उसी एंगल से निकाल दिया जिससे बाउंस हासिल कर रही थी, और नजीबुल्लाह के इस उछाल का उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है नौजवान हुरैरा ने। और फरहान निसार जो हमारे स्टैट्स गुरु हैं, उनके मुताबिक ये क़ायद आज़म ट्रॉफी की हिस्ट्री में किसी भी
ओपनर का 8वां बड़ा इनफरादी स्कोर है। और अगर डिक्लेरेशन नहीं किए तो 499 रन जिस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास का पाकिस्तान क्रिकेट का रिकॉर्ड है हनीफ मोहम्मद साहब का, और इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं जिस अंदाज से खेल रहे हैं हुरैरा। कोई जल्दी नहीं, कोई बॉलिंग में इतनी जान नज़र नहीं आ रही है, जब चाह रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं स्ट्रोक खेलते हैं। ये देखें जिस अंदाज से हुरैरा ने आज कल से अब तक बैटिंग की, बड़ी उम्दा बैटिंग की। हाँ जी, अहलियत तो बिल्कुल इनमें मौजूद है और साथ साथ वो उसका मुजाहरा भी पेश करें, लेकिन शायद वक्त कुछ इनके हाथों से निकल जाएगा अगर ये मज़ीद 200 से ज़ायद रन्स के इंतज़ार में बैठे रहें, और फिर बलूचिस्तान के लिए चांसेस बन सकते हैं कि वो इस मैच को ड्रॉ करने के लिए जाएं, कुछ कंसोलेशन पॉइंट्स हासिल करें। तो इस ओवर के अख्ताम पर हम एक मरतबा फिर एक ताराना निगाह डालेंगे पॉइंट्स टेबल पे, चूँकि बड़ी मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। आज की शाम तक शायद पिक्चर और क्लियर हो, और कल के दिन तो ज़ाहिर बात है कि वाज़े हो ही जाना है कि कौन सी 2 टीम्स जा रही हैं नेशनल स्टेडियम कराची इन 3 स्टेडियम से नेशनल स्टेडियम में। ओवर मुकम्मल हुआ 499 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 8 पॉइंट्स इस पहली इनिंग्स में कमा लिए हैं नॉर्दर्न ने, जो कि उनको 135 पॉइंट्स तक इफेक्टिवली ले गया। खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने 10 पॉइंट्स कमाए हैं, और वो अचानक से अगर हम इस वक्त देखते हैं तो सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रह गई है। हालांकि इस मैच की इब्तिदा से पहले वो 3 पॉइंट पीछे थे और मैच को जीतने के भी वो करीब नज़र आ रहे हैं। सिंध की टीम ने सिर्फ 5 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और वो है भी बैकफुट पे, चूँकि सेंट्रल पंजाब ने सदर्न पंजाब ने बरतरी हासिल कर ली। सेंट्रल पंजाब बहरहाल बैकफुट पे है, सिर्फ 3 पॉइंट्स उनको मिले और वो उनके किसी काम नहीं आएंगे। सदर्न पंजाब की टीम को 7 पॉइंट्स मिले हैं, और वो भी पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं सिंध की अगर वो कुछ बनाना चाहते थे। बलोचिस्तान की टीम भी 3 पॉइंट्स निकालने में कामयाब रही, और ये जो पहला हाफ था पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद और कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया, उसमें तो ज़्यादातर पॉइंट सिर्फ एक फतह के अलावा ये सारे पॉइंट्स इधर से ही कमाए गए थे, और उसके बाद से सूरत बदली है। सिर्फ कराची में आने के बाद एक मैच ऐसा है जो कि ड्रॉ हुआ, अदरवाइज़ हर मैच में हमें रिजल्ट मिलता नज़र आ रहा है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो नॉर्दर्न आज की सुबह मुतमईन महसूस कर रहा होगा कि अगर बलूचिस्तान बैट आउट करने में भी कामयाब हो जाता है तो जितने पॉइंट्स उन्होंने निकाल लिए हैं, और इसके साथ साथ सिंध की जो पोजीशन है वो अगर इवन ड्रॉ भी होता है तो भी वो फाइनल तक जा सकते हैं। शायद उनको तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा इस गेम में, लेकिन इस वक्त नज़रों का मरकज़ है हुरैरा, 280 नॉट आउट। जी हाँ, पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे मौजूद है नॉर्दर्न, और इस वक्त भी डोमिनेट करती नज़र आ रही है। तो हार और जीत का कतई नज़र यहाँ पर डोमिनेशन और पॉइंट्स टेबल पे टॉपर हैं इस वक्त नॉर्दर्न। काशिफ भट्टी कंटिन्यू करेंगे, बॉलिंग के निशान पे तैयार हैं काशिफ भट्टी। अब तक विकेट लेस रहे, बैटिंग अच्छी की थी, 68 रन की इनिंग खेली, लेकिन बॉलिंग में इतने इफेक्टिव नहीं रहे। स्लिप में मौजूद हैं यासिर शाह, मैराथन इनिंग जारी है हुरैरा की जानिब से। क्या हुरैरा को इतना टाइम मिलेगा कि वो अपने रिकॉर्ड को मजीद बेहतर कर सकें? निस्बतन मौसम में कुछ तब्दीली है आज शहर में। पहले ये 2 सुबह इस मैच की बहुत ज़्यादा सर्द थी, और उसकी बड़ी वजह नमी का कम होना था। आज 50% से ज़ायद फ़िज़ा में मौजूद है, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा आप सर्दी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल अभी भी बेहतरीन मौसम है क्रिकेट के लिए। खिलाड़ी फ्रेश नज़र आते हैं, लेकिन बलोचिस्तान की टीम विकेट की मुंतज़र है। और इस मरतबा कट किया उमर अमीन ने, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, पॉइंट पोजीशन पे, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 2 संगे मील वाला ये ओवर बनता जा रहा है। 500 रन पहले हासिल किए हैं नॉर्दर्न ने, और अब 200 रन से सिर्फ 1 रन पीछे रह गए इनकी बढ़तरी। इंतज़ार किया, इस गेंद का कोई टर्न मौजूद नहीं था, और आसानी के साथ इसको खाली जगह पे खेलने में कामयाब रहे। खूबसूरत शॉट एक्सपीरियंस उमर अमीन का 4 रन के लिए। काफ़ी क्रिकेट दोनों एक साथ खेले हैं उमर अमीन और काशिफ भट्टी सुई सदरन गैस से, यकीनन दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते होंगे। वाकिफ हैं नौजवान फास्ट बॉलर, बलूचिस्तान के लोकल बॉय, और ये मैन ऑफ द मोमेंट हुरैरा।
जी, उमर अमीन के लिए आप बात कर रहे थे, बड़ी इन्होंने जल्दी फास्ट ट्रैक करके इनको डेब्यू दिया गया था श्रीलंका के खिलाफ अब से 11 साल पहले, लेकिन वो और उस वक्त लग भी रहा था कि नेक्स्ट बिग थिंग होंगे पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन कंटिन्यू ना कर पाए। बिल्कुल ना होने के करीब आज हवा मौजूद है, लेकिन टेम्परेचर 20s में। एक और रन हासिल किया जिसके साथ ओवर मुकम्मल हुआ। 200 से ज़्यादा की बरतरी, 500 से ज़्यादा रन, 507 पे 2 नॉर्दर्न। काफ़ी रिलैक्स है डग आउट नॉर्दर्न का। समीउल्लाह न्याजी बॉलिंग कोच नॉर्दर्न के, उनके साथ दीगर खिलाड़ी मौजूद हैं। समीउल्लाह न्याजी 2 वनडे मैचेस के लिए पाकिस्तान के लिए, और इनका कैरियर जो है वो सिंध से शुरू के सिंध में ही ख़त्म हो गया। कराची में डेब्यू हुआ और अगला मैच इन्होंने हैदराबाद में खेला, और उसके बाद फिर इनको पाकिस्तान से खेलने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे अपने वक्त के। इंग्लैंड के टूर पे भी जिस मैच में इंजमाम उल हक का और अंपायर डेरिल हेयर का तनाज़ा हुआ, 4 फीट हुआ वो मैच, उस स्क्वाड का भी हिस्सा थे ये। इंग्लैंड में अपनी बैक इंजरी की वजह से वहाँ पे ज़्यादा नहीं परफॉर्म कर सके थे, लेकिन बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे अपने वक्त के। कट किया पॉइंट पोजीशन के फील्डर के करीब से गेंद को निकालने में, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ी बेजरर सी बॉलिंग है यहाँ, और फ्रेंडली बॉलिंग जिसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों बैट्समैन। नजीबुल्लाह ने अब से कुछ देर पहले आज के दिन की शुरुआत अच्छी की थी। पिछले ओवर में भी उनको बाउंस मिला, लेकिन लगता है कि 2 चौके खाने के बाद वो अब अपनी हथियार फेंक चुके हैं ऑफ स्टंप के बाहर। ऐसी गेंद जिसको जहां चाहते खेल सकते थे। उमर अमीन ने अब फैसला कर लिया कि वो ऐसी गेंदों को नहीं छोड़ेंगे। छठा चौका है उमर का। तेजी के साथ वो भी अपनी 50 को अप्रोच कर रहे हैं। पिछली चंद गेंदों से हरेरा इतने स्ट्राइक पर मौजूद नहीं है, और दिलचस्पी का आंसर होगा उनका 300 रन तक पहुंचना, जिसके आसपास 150 रन तक इनकी बढ़तरी पहुंच सकती है। नॉर्दर्न की टीम के पास 250 रादर, तो वो उसके कुछ देर के बाद हो सकता है कि पहले सेशन के अख्तिताम पे डिक्लेयर का फैसला करें। अच्छी गेंद थी इस मौके पे, और अगर बॉलर के लिए बड़ी मुश्किल है अकेले के बैट्समैन से बचाए, तो फिर कीपर के बाजार, कीपर से भी गेंद का रुकना काफ़ी मुश्किल मुहाल है। लेकिन इसमें रज़ा हसन को भी हम जिस तरह बार बार कह रहे हैं कि दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो विकेट कीपिंग करने के काबिल है उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। बिल्कुल सामने गेंद गिरी, और गेंद बिल्कुल हाथों के दरमियान से होती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। हर चंद के हैं मगर नहीं है। और जिन्होंने ये तमाम बहस या इसका एक जायज़ा मिस किया, उनको बताते चलें कि पहले 2 विकेट कीपर जो कि इनके फर्स्ट चॉइस थे, बिस्मिल्लाह खान वो मैच से पहले अनफिट हुए, उमर अकमल आए वो अनफिट होकर वापस गए, और फिर अजीम घुमन को ये ग्लव्स सौंपे गए और उनके भी गेंद कई मरतबा लगी, जिसके बाद वो भी नहीं विकेट कीपिंग कर सके। मज़ीद रन हासिल होंगे उमर को। सो उसके बाद हालांकि स्लिप में मौजूद है इमरान बट, जिनके ड्रिल्स तो डिफरेंट होती हैं, लेकिन कम अज़ कम वो शायद बेहतर विकेट कीपर होते हैं। कम अज़ कम रज़ा हसन या किसी और खिलाड़ी से, जल्लाद को भी एक मौके पे ग्लव्स दे रहे थे। और दूसरी तरफ इमाम उल हक, जो कि अगर आप PSL की चकाचौंध देखते हैं, जब ज़ल्मी का एक तमाम तर क्राउड और एक तमाम जोश मौजूद होता है, उस वक्त आप अगर ग्लव्स पहन सकते हैं तो फिर दिस इज़ द प्रीमियर क्रिकेट। और यहाँ पर भी मेरे अपने हिसाब से इनको ख़ुद अपनी सर्विसेज को पेश करने चाहिए थे। ये बहरहाल मतलब शर्ट ज़रूर पहन रहे हैं, पहले कल बिस्मिल्लाह की थी और आज यासिर की। अली जी हाँ, ना ग्लव्स पहन रहे हैं ना शर्टें अपनी पहन रहे हैं। बहरहाल चैलेंज डिफरेंट है। ऑब्वियसली T20 में शायद आपको इतने ज़्यादा मानी नहीं रखता कि विकेट कीपर को चांस दे या ना दे, लेकिन तजर्बा बहरहाल वहाँ से इनके पास ज़रूर मौजूद है, जो कि यहाँ पर अपनी सर्विसेज पेश करके वो कुछ ज़रूर बड़ेपन का मुजाहरा कर सकते थे। अकील इमरान बट ने SNGPL के लिए कुछ मैचेस बतौर विकेट कीपर खेले। लास्ट सीजन उन्होंने 172 ओवर तक विकेट कीपिंग की है। तो यहाँ बड़ा एक हैरान कौन ये डिसीजन है कि इमाम उल हक जो PSL में भी हमने भी मैचेस कवर किए, आपने भी कवर किए, कि PSL में विकेट कीपर के तौर पे हमें नज़र आए। तो बड़ा हैरान कौन ये डिसीजन है कि रज़ा हसन विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जल्लाद विकेट कीपिंग कर रहे हैं, अजीम घुमन विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में विकेट कीपिंग के ग्लव्स नहीं पहने हो, लेकिन जो विकेट कीपिंग करते आए हैं। ठीक है, ये विकेट कीपर जेन्युइन विकेट कीपर नहीं है ये, लेकिन बहरहाल इनको एक्सपीरियंस है विकेट कीपिंग का, और टीम को ज़रूरत थी इस मौके पर। लेकिन बहरहाल इन्होंने विकेट कीपिंग के ग्लव्स नहीं पहने, और रज़ा हसन जिस तरह 22 के रन दे रहे हैं, इनको भी हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते। कल मैं जिक्र कर रहा था लॉर्ड्स के उस टेस्ट मैच का कि जहाँ एक टेस्ट मैच में 4 विकेट कीपर्स ने विकेट कीपिंग की,
हेडली का बाउंसर लगा था ब्रूस फ्रेंच के सर पे, वो हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद बेलेथे ने कुछ ओवर विकेट कीपिंग की। फिर 1-1.5 साल में रिटायर हुए थे बॉब टेलर, वो जो स्पॉन्सर था उसके नुमाइंदे के तौर पे ग्राउंड पे मौजूद थे। माइक जैटिन ने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने तकरीबन 1-1.5 दिन तक विकेट कीपिंग की। उसके बाद फिर जो हैम्पशायर काउंटी के हैं बॉबी पार्क्स, उनको बुलाया गया, उन्होंने विकेट कीपिंग की। और फिर उसके बाद दोबारा ब्रूस फ्रेंच वापस आ गए। तो उस रिकॉर्ड को मुझे लगता है इस फर्स्ट क्लास मैच में ब्रेक कर दिया है। जबरदस्त इंफॉर्मेशन, और इसी के साथ एक और ओवर मुकम्मल। 516 पे 2 नॉर्दर्न। SBB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक ज़बरदस्त होस्ट रहा। ना सिर्फ ये कि यहाँ पर आप एक्शन के बहुत करीब होते हैं, ये जो बिल्डिंग है जिसके आप दाएं जानिब जो पेविलियन देख सकते हैं वहीं पे ये कमेंट्री रूम भी मौजूद है। दाएं और बाएं जानिब दोनों पेविलियंस हैं विक्टोरियन स्टाइल के इस बिल्डिंग में। और इसके साथ साथ आपको बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर आकर एक एंगल मिलता है, और एक ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं है। अदरवाइज़ बड़े गुंजान आबाद इलाके में ये वाक़ है SBB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसके बाद एक्शन यहाँ पर ख़त्म होगा। पिछले साल पाकिस्तान कप के मैचेस खेले गए थे साइड बाय साइड यहाँ पर UBL और NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और इस मरतबा 5 मैचेस, पाँचों नतीजा खेज। इसकी भी उम्मीद यही है कि होने जा रहे हैं, और जो लाहौर और इस्लामाबाद से मेहमान आए हैं वो भी बड़े महजूज हो रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, नॉर्दर्न इस वक्त डोमिनेट कर रही है। शाह फैसल और अहमद सईद हमारे कमेंट्री फेलोज एंजॉय करते हुए कराची के वेदर को, और साथ साथ फरहान निसार जो है अपने स्टैट्स को एंजॉय करते हुए। मैं ब्रूस फ्रेंच का तस्करा कर रहा था। ब्रूस फ्रेंच के हवाले से अकील बड़ी जो है वो ज़बरदस्त कुछ चीज़ें हैं जो उनके शख्सियत से, उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई हैं। 1986 के टूर पे ब्रूस फ्रेंच जब पाकिस्तान आए और उस वक्त तमाशाइयों को ग्राउंड में जाने की इजाज़त थी प्रैक्टिस में, तो प्रैक्टिस के सेशन में एक तमाशाई ने थ्रो की जो उनके सर पे लग गई। इस मरतबा उठा के खेले हुरैरा, गेंद थोड़ी देर हवा में रही, फिल्टर गेंद तक पहुंचने में कामयाब हुए, 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। तो सर पे गेंद लगी। हॉस्पिटल जब वो पहुंचे हैं, हॉस्पिटल के गेट पे उनकी गाड़ी टकरा गई एक दूसरी गाड़ी से। फ्लैटेड डिलीवरी उठा के खेले, इस मौके टाइम सही से नहीं कर सके थे, जिसके नतीजे में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जा सकी और फील्डर को गेंद तक पहुंचने का मौका मिला। और जब आंख के ऊपर वो टांके लगवा के वापस निकले हॉस्पिटल से, तो एक लाइट चीज लटकी हुई थी उससे टकरा गए वो। तो ब्रूस फ्रेंच का यही ये मामला खत्म नहीं हुआ। जब वेस्ट इंडीज के टूर पे गए पॉल डाउनटन के डिप्टी के तौर पे, तो वह जॉगिंग करते हुए उनको कुत्ते ने काट लिया। तो अगर आपका दिन बहुत अच्छा नहीं गुजर रहा तो मेरे ख्याल से आप YouTube पे बार बार इनके इस मसले को सुन सकते हैं और आपको ज़िंदगी आसान लगने लग जाएगी, आई एम श्योर। तो अकेल कल मैं इस बात का तस्करा भी कर रहा था, तो ब्रूस फ्रेंच के हवाले से, क्योंकि ये रिकॉर्ड जब जब आएगा इस टेस्ट मैसेज को ज़रूर रिलेट किया जाएगा। कितने सारे विकेट कीपर्स ने विकेट कीपिंग की किसी एक फर्स्ट क्लास मैच में। तो ओवर भी अपने अख्तिताम को पहुंचाए, 519 से स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। तो ये है आज का तीसरा दिन, जिसके बाद 2 सेशन आज के दिन के बाकी हैं। अली, आपके लिए क्या असेसमेंट है? ये काफ़ी वक्त होगा इनके लिए अगर 1.5 सेशन आज का और कल का इनका पूरा दिन मिलता है, क्योंकि इस वक्त पिच तो बज़ाहिर बड़ी सहल नज़र आ रही है बैटिंग के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन मैं ट्रिपल सेंचुरी देखना चाहूँगा हुरैरा की जानिब से। डिजर्व करते हैं नौजवान हुरैरा, 20 साल हुरैरा अगर इस उम्र में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करते हैं तो उनके कैरियर के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। क्योंकि इस मैच को किसी सूरत जीतने के काबिल तो नहीं हो सकेगी बलूचिस्तान, क्योंकि अजीम घुम्मन भी अनफिट हैं जो उनके मेन प्लेयर हैं, उमर अकमल भी अनफिट हैं। तो फील्डिंग के बाद, बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी जो है वो स्ट्रगल जो करती नजर आएगी यहाँ पे हमें बलूचिस्तान। हुरैरा की बैटिंग की खास बात, तकरीबन इब्तिदा से ही इब्तिदाई 50-60 रन हासिल करने के बाद से उन्होंने ये 90 से 95 के दरमियान का स्ट्राइक रेट भी बरकरार रखा है और एक बड़े मुस्बत अंदाज से उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। और आमतौर पर इतने बड़े स्कोर में आपको 1 या 2 चांसेस तो लाजमी मिल ही जाते हैं, और इनकी बिल्कुल ये स्पॉटलेस इनिंग्स।
और फिर एज निकल के फिर ना कैरी हुआ ना स्लिप के जानिब गया, बल्कि वाइड होता हुआ गेंद चौके को ले गया। उमर अमीन के लिए रन्स का अंबार लगा हुआ है। एक और चौका उमर अमीन के बैट से। बल्ले का किनारा लेने के बाद गेंद विकेटों के पीछे। फर्स्ट वो सेकंड स्लिप वहाँ पे मौजूद नहीं थी, इसलिए आसानी के साथ गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो रन्स यहाँ पे मुसलसल दस्तयाब हैं नॉर्दर्न के लिए। और नॉर्दर्न से जो तस्वुर आता है पहाड़ों का, हिली एरियाज का तस्वुर आता है, तो रन्स के पहाड़ यहाँ पे खड़ा कर दिया है नॉर्दर्न के इब्तिदाई बैट्समैन ने। लगता है स्ट्रेंथ से बहुत मुतासिर है, सर की है वो पहाड़। बिल्कुल, इनके लोगों में भी ये पहाड़ों का एक एलिमेंट नज़र आता है और बड़ी तादाद में इन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को खिलाया है। हुरैरा उनमें से एक है। इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए आए किसी ओपनर का आज़म ट्रॉफी में बेहतरीन इनफरादी स्कोर में इस फहरिस्त में आ गए हैं, जहां पर जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से अली ने जिक्र किया ग्रेट लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद का, कराची में उन्होंने बहावलपुर के ख़िलाफ़ ये 499 रन की टॉप इनिंग्स खेली थी एज एन ओपनर भी और वैसे भी। और उसके बाद आपको इस लिस्ट में नवीद लतीफ़, एहसान अली जिन्होंने इसी सीज़न में बनाए रन, रिफ़तुल्लाह अहमद जो कि वापडा की जानिब से उसको खेल रहे थे, बड़े नाम नज़र आते हैं। सो हुरैरा ने इस जमा उम्री में इस फहरिस्त में कदम रख लिया है और कम अज़ कम इसके वो करीब है कि एहसान अली के इस नए फॉर्मेट में आने वाले नई टीम्स के साथ सबसे बड़े टोटल को हासिल करें। इसके अलावा हमजा घांची जिन्होंने कराची के लिए 300 रन की इनिंग खेली थी नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। हालांकि HBL से भी वो कई सीज़न खेले हैं उसके बाद। इस दफ़ा जल्लाद के हाथ पे गेंद लगी है और मुसलसल जो है वो हाथों पे चोट लग रही है यहाँ पे प्लेयर्स के, चाहे बैट्समैन हो, चाहे विकेट कीपर हो, चाहे फील्डर हो। अली, आप स्पॉन्सर के नुमाइंदों की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से अब आप किट करके आ जाएं जिस हिसाब से ये, क्योंकि ये खुद सब्सटीट्यूट खिलाड़ी थे और ये एक मरतबा फिर उनको जाके गेंद लगी और कोई मुतमईन नज़र नहीं आते। बड़े तजर्बेकार खिलाड़ी हैं लेकिन मौजूद हैं और ना ही उन्होंने फिजियो को बुलाया। अच्छी खबर है क्योंकि इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक का टाइम हो चुका है, वहाँ पर जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए होगी मिल जाएगी। कैंप बहरहाल जो उनका बेंच है वो अब खाली होता जा रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और ये भी वापस आ रहे हैं। फील्ड चेंज किया मेरे ख्याल में इनको, पीछे किया है और अब शायद वो इन्होंने बाहर जाने का फैसला किया और अब गौर फैज जा रहे हैं ग्राउंड में। अब बात करते हैं लोगों पे पहाड़ बना हुआ है इसलिए इतने रन हैं, तो लोगों तो बलूचिस्तान के भी 2 बैट हैं लेकिन ये इस्तेमाल होते नज़र नहीं आए। जी हाँ, ये बैट और ये जो भागदौड़ है वो इतने हाथों में गई है, इसकी वजह से शायद कुछ स्टेबिलिटी आ नहीं सकी। आने वाले सीज़न के लिए बहुत कुछ जल्द और ठीक फैसले करने होंगे नौजवान खिलाड़ियों को, लोकल प्लेयर्स को मौका देने का। और जिस तरह से प्लेयर्स की अदम दस्तियाबी है, कामयाबी है, मुझे याद है 79 के टूर पे जब पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया था तो एक मैच में इतने कम प्लेयर थे कि असलम संजरानी जो उस वक्त टीम के मैनेजर थे उनको फील्डिंग करनी पड़ी थी। और एक जो प्रैक्टिस मैच था, एक एग्जीबिशन मैच था जो मुंबई का क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की सेलिब्रेशन के लिए हुआ था, वहाँ पे पाकिस्तान की जो एक इन्विटेशन 11 थी उसके प्लेयर कम हो गए तो फिर सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के लिए फील्डिंग करना पड़ी थी। जल्लाद खान का ट्रीटमेंट होता हुआ स्वेलिंग नजर आ रही होगी आपको इनके फिंगर पे। शानदार डिलीवरी नजीबुल्लाह जगजई और नौजवान हुरैरा के दरमियान ये शानदार मुकाबला जारी है, मुकम्मल तौर पे बीट किया। और उससे भी बड़ी बात थी कि रजा हसन ने गेंद पकड़ ली। इसके साथ ही यहाँ पर पानी का वक्फा, ये वो डिलीवरी जिसके नतीजे में बिल्कुल बल्ले के करीब से गेंद गई, स्टंप्स के भी करीब से, और रजा हसन इसको पकड़ने में कामयाब हुए। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हुए किस अंदाज से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जल्लाद खान एक और इंजर्ड प्लेयर, मुसलसल जो है प्लेयर्स के हाथों पे गेंद लग रही है और मुसलसल जो है इंजरीज हो रही हैं। इस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि कल जब मैच खत्म हुआ तो हमारे कैमरामैन जो थे वो अपना कैमरा बंद कर रहे थे तो उनकी ट्राईपॉड में उनकी उंगली आ गई। तो मुसलसल जो है वो मामलात यहाँ पे जो इंजरी के हवाले से काफ़ी ख़राब चल रहे हैं।
Imam al-Haq, the guilty party on that occasion. Umar Amin benefited from that lapse in the field very earlier on day 3. The lead is 219 runs for Northern. Good time to welcome along Pakistan's former under-19 skipper Amir Saeed. Thank you, Shah Faisal, and a very good morning to all the viewers. That's the man who spilled the opportunity. Big point of interest is Herrera's 100. 17 to go, Amir. Well, it's not only the big moment, but the only moment, I think, in the match. The only thing important left in this match is if Herrera gets to that magical 300. Otherwise, it's nothing to show in this match. Professionalism has been 0. Commitment 0. All the players have failed each other as a group, which is for Balochistan, which is well, it's certainly not pleasing to the eye when you watch this match. There's a lot of viewership for this game, and like you said, you summed it up perfectly. They've failed each other. As Umar Amin gets another single, they have failed each other collectively, and this game as a contest is not a great spectacle. A lot need to get looked into from Balochistan side. But highlights for all the good reasons is Herrera. He has been nothing short of sensational. Oh yes, what a beautiful innings it has been so far, laced with all the shots you can think of. He's been correct technically, he has been innovative. You've seen everything in this innings. And the best part is, he plays all over the ground. There is not an area where you can restrict him. 529 for 2. Yeah, his array of strokes all around the wicket. Even those ramp shots, he was able to put away good bounces with good line and length. Slight point of discomfort for him was that slightly higher and wider bouncers that he was trying to drag it onto the onside. He was lucky on one occasion where that splice didn't carry to the fielder. But other than that, he's really shone brightly here at the State Bank Sports Complex. And the beauty of it is that the innings, the sort of innings Herrera has played, even Umar Amin, who's not out on 47, they're not visible at the moment because of that beautiful innings. The way he has gone about things. Umar Amin played very well for his 47. Sarmad Bhatti played very well for his 135. But the only thing noticeable is Herrera. You make a good point. Like you see Umar Amin driving so fluently. He's so elegant when he does that. But Herrera's performance has eclipsed. I would even go further in saying that he's even eclipsed that wonderful knock from Shan Masood in the opposition. Such has been the extent of the brilliance of his innings. Noman Ali, Northern skipper, would be thinking when is the best time to declare and get those 10 wickets as soon as possible. Another flowing off drive from Umar Amin.
Typical left-hander's grace, all too visible when he drives the ball front or back foot. And this is Balochistan's coach. I don't want to be in his shoes, would you? No, not at all. Yeah. But I do need to add here that even though, yes, there have been problems with the management, inconsistency, the coach leaving them halfway, but still I would say that that is not an excuse for such a lackluster performance. The names you see in this team, even if they just play to their potential, they should have been in a better position. Even the big name players other than Shan Masood has not really lived up or didn't play to their reputation, which is the most disappointing thing. Very nice and balanced stance from Herrera. Helped it on its way. He was hurried into that shot from that short pitch delivery from Najib. Carrying on from your point, Amr, is a lot of reputations are at stake. Before we came into this game, we knew Balochistan had no opportunity to get into that final, but there was a lot of pride at stake. Having been winless throughout the season, they would have thought they would welcome coming of Yasir Shah, but then he took the reins immediately, having been an absentee throughout the season. Never ideal. And I don't know what was the thought process behind that. It certainly hasn't worked at all. .531 for 2, Northern. You see, defense of going deep in his crease to play that ball as late as possible. Well, even though I can understand that when there is lack of management, of course, the plans of course cannot be executed because they're not very clear what the plans are. But even then, I would have liked to see some sort of professionalism. I think of this lot, leave alone Shan Masood, hardly anyone has shown that professionalism. Not warming up in the morning with the team. You see the skipper Looking for 2, Herrera. Will get there comfortably. You see the skipper fielding in the slips. Have you ever seen him field in the slips? And with the services of Imran, who is known to be or has built a reputation to be one of the best fielders in the world, in that position, the skipper chooses himself to be placed in that area. Yeah, good point. Because I've been told this is the first time that Imran Butt is out of the slips. Like you said, he's gained that reputation for his wonderful catching ability in that region, being a specialist position that is really very unprofessional on the part of Yasir Shah. And even with his bowling, there was a lot of eyeballs on him because he's making a comeback. Already lost his place in the national side. Have not really lived up to his name and his reputation. Well, Northern have scored 535 runs at a run rate of nearly 5. But nothing has been done about it. The skipper, who's one of the best leg spinners in the world, has bowled only 14 overs out of those 108 overs.
they have not thought out anything. 5:35 for 2, Northern. You know, I keep mentioning this small little example from yesterday. Young Herrera was batting on 199 and they didn't even bother to bring the long on and long off up. Give the youngster a challenge to hit over the top. And he easily punched one down the ground to get into his 200 on the very first opportunity he was asked for. This is not on at this level of cricket. You have to make it as difficult as possible for the opposition. Looks like they're going through the motions. But to Northern's credit, they're rubbing their noses in dirt. And skipper Yasir Shah will have to take a part of that drubbing. And the bad news continues for Balochistan, as we all know that Umar Akmal might not be able to bat because of that injury to his finger. And now it's Azim Gumman, whose hand was hurt when he was asked to keep wickets, and he's also got a hairline fracture in his hand, so he might not be able to bat as well. Well. Like I said, their troubles are infinite, never ending. Let me say this, I have the impression they want to be out of here as soon as possible. Umar Amin will get to his 50. Slight fumble in the field. A very, very fluent knock from this elegant left-hander. He raises the bat to the gallery. Well batted, Umar Amin. '51st half century for Umar Amin. Very consistent and it's really been there for a long time. Nearing 10,000 runs, if I'm not wrong, in first class cricket. And also he's climbing that chart of the top batters of the season, the most run getters. Pretty close to 800 runs he would be by now. $11 needed for Herrera. Well spread out field now. In the air, but reasonably well controlled. Balochistan has come out with this short pitch stuff against Herrera this morning. Short and wide, Umar Amin really laid into it. The sweeper is set back there though. Yari. Herrera, second on that list, 290. Closing in on that triple hundred. And Ahsan Ali's 303 not out earlier in the season. Once again, Herrera
favors that stroke rather than the conventional pull stroke. We haven't seen him executing this very nicely as compared to the hook or pull shot. Look at that. Very rarely do we see him out of position, and this was that rare occasion. Shah Faisal, you witnessed that 303 from Azam in Lahore, I think. How do you rate Herrera's innings? Which one did you enjoy more? Got hold of this pull stroke, will earn just a single. Both are quite different innings. I must say there was more intensity in that game, and the wicket was flat though. Hassan Ali really murdered the bowling on that occasion. 539 for 2. Especially outside the off stump, he was really belligerent and he was very prolific in that area. But this one from a youngster who's in his first season is very impressive in a different way, because the array of strokes that Herrera has shown is, the range is a lot more than Hassan's. Both phenomenal knocks. You can say that the innings of Herrera, the gloss will be taken off of it because of the lack of competition or intensity from Balochistan. It's not his fault, but as a neutral, you got to keep this in perspective. Another run closer to that triple hundred. Each and every one present in this ground is waiting for Herrera to get to that mark, including the 11 Balochistan players as well. Every time he scores a run, most of them look at the dressing room of Northern. Are they prepared to declare now? Want to get off the field as soon as possible. Umar Amin giving him the charge. He hasn't hit it cleanly. Chance offered and taken. Shan Masood was underneath it and he completed the catch very, very easily. Umar Amin, after getting his 50, looking to push along the scoring, has perished in the cause. Well flighted delivery, that one, and he didn't really get to the ball, but still went on with the shot, and an easy catch for Shan Masood. Umar Amin out for 51 of 73 deliveries, 540 for 3 Northern. Faizan Riaz is the new batter coming in, also an experienced campaigner. You see 85 matches, 5,185 runs, good average, nearly 40, 22 50s and 13 hundreds, 256 not out is his best. He's really enhanced his reputation over the last 2 seasons. He scored heavily last year as well, and in this season he's been prolific. That average nudging into 40. It's been on the up in the last 2 seasons. Very prolific run getter and an experienced campaigner. It has to be said, sometimes with that lack of intensity from the opposition, it makes it very difficult for batters as well to concentrate. A lot of players are at their best when the situations are very demanding. That brings out the best in them. But Northern way ahead in the game, and like before Umar's dismissal, Amar was making a point.
Balochistan is also eagerly waiting for that declaration from Northern, and I think the sooner Herrera gets to that 300, the sooner Northern will be thinking about it. But they have all the time in the world. Be interesting to see which strategy they want. Would they want to keep Balochistan in the field, or we just get over and done with? Yes, that would be very important, because we'll have to see if they want to save this match or keep their reputations, or will there be another very embarrassing performance just like the one we saw in the first innings. Embarrassing is the right word, Amar. See, with Herrera only 8 runs away, still got sweepers all over the place as we watch Umar Amin's dismissal. Got beaten in flight, but decided to go through with the shot. This one has been pushed through the gap for another single. And Herrera will keep the strike. 541 for 3. There you see, beaten in flight, and easy pickings for Shan Masood at long on. Northern unsure. Once Herrera gets to that magic mark, they will be looking to really accelerate, or maybe they think that these runs are enough. Probably with Umar Amin not available to bat, Northern would think that they have got plenty on the board. Just about half an hour left before the luncheon interval. Helped it on its way, looking for 2. Decides against it. Herrera, if you look at that score, 294 is only a stroke away from 300. But different batsmen have different approach when they are getting to a milestone. Some of them don't want to take those risks and go for singles and complete that milestone, but some like to get to those milestones with a big hit. We'll have to wait and see what Herrera chooses. Well, this was Faizan Riaz's first delivery. He's very unorthodox. He's trying to check if the slip fielders were awake. Lucky for the slippers, he didn't get an edge. Shan Masood in the first slip, Imam al-Haq in the second slip. Nice punch down the ground. Even now, see if the ball is put in the right areas. It's not easy for a new batter. So Faizan Riaz trying to play an extravagant shot, but it is not on. You cannot do this on this track. Even now, even in this situation, got to take your time. Helped it on its way, finds the fielder who
almost overran it. Akif was able to stop the boundary. Herrera, like Amber was mentioning, getting up to that milestone one at a time. String of singles for him in the last 15 to 20 minutes to get him to 295 now. Well, that's the sensible thing to do, I think. For me, I would never ever go for that big hit to get to a milestone. But you never know. Batters do fancy it nowadays. Faizan Riaz has not got to his bearings just yet. Like I said, it's hard to concentrate sometimes. And that level of competition is not there. But he has to be very professional. He, on his part, cannot afford to be complacent. Yeah, the term used for someone who's been padded up and waiting for his turn to bat, it's called a pad rash. Put on those pads and keep on waiting for nearly a day. And at times, when all of a sudden you do get the opportunity, it's very difficult to concentrate. 5:44 for 3, Northern. यंग हुरैरा सिर्फ 5 रन दूर है एक माइलस्टोन से। बहुत ही शानदार इनिंग रही है ये। कमिटमेंट, स्किल लेवल सब बहुत हाई रहा है। इसके साथ साथ टीम की जो लीड है वो 239 रन पर पहुंच गई है। अकील समर मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। अकील, अ प्राउड मोमेंट फॉर नॉर्दर्न एंड द फैमिली ऑफ हुरैरा। बिलाशुबा जिस माइलस्टोन के करीब हैं, उन्होंने शानदार एफर्ट किया। हेलमेट अब उन्होंने उतार दिया है। स्पिनर्स को एक्शन में देखते हुए अब तक की शानदार एफर्ट, जिस अंदाज से वो इनिंग्स को लेकर चले हैं, जो उन्होंने गियर्स को चेंज किया, जो उनकी रेंज अब तक हमें दिखी है, और ख़ासकर अब तक हमने देखा है कि कैसी भी इनिंग्स हो, जो भी सूरत हाल हो, आपको कहीं ना कहीं इक्का दुक्का चांस ज़रूर मिल जाता है। लेकिन ये बिल्कुल उससे मुबर्रा एक क्लीन इनिंग्स है। स्पॉटलेस अंदाज से अब तक पहुँचे, माइलस्टोन के करीब हैं। ये चेहरे में बला का इत्मीनान, लेकिन रन्स की भूख अभी भी नज़र आती है। और देखना ये है कि ये जो बड़ा माइलस्टोन है वो मुकम्मल कर पाते हैं किस तरह, और यादगार लम्हा कैसे आता है। यहाँ जितनी भी तारीफ की जाए इस इनिंग की कम है। सिर्फ 19 साल की उम्र में ऐसा मार्का सर अंजाम देना, ये काबिल तारीफ बात है। और तो काफ़ी हेल्प हुई है बलूचिस्तान की फील्डिंग और बॉलिंग की जानिब से, लेकिन इनकी इस इनिंग से कुछ हम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत शानदार बैटिंग रही। कमिटमेंट लेवल बहुत कमाल कर रहा है। और सबसे अच्छी बात अकील ये रही कि जिस तरीके से उन्होंने स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को खेला है। फुटवर्क कमाल कर रहा है, एग्रेशन भी बहुत कमाल कर रहा है। जब मौका मिला है रन्स लिए, लेकिन बैकफुट पे बहुत जल्दी जाते हैं, लेंथ को बहुत जल्दी परख लेते हैं। क्योंकि जब तक आप तेजी से रन्स नहीं करेंगे, रन्स की तलाश में रहेंगे, इतने बड़े रन्स करना एक दिन के अंदर। इनफैक्ट कल का पूरा दिन बैटिंग किया, आज का ये सेशन लगभग 1.5 दिन हम कह सकते हैं इन्होंने ये रन्स बनाने के लिए लिए हैं। जल्दी नहीं है क्योंकि मैच में बहुत आगे है नॉर्दर्न की टीम। सेफ होंगे आप क्योंकि 241 रन की लीड है। यहां से आप मैच तो हार नहीं सकते। तो हुरैरा के पास रहेगा स्ट्राइक। 547 नॉर्दर्न 3 पे।
297 रन बनाकर एक माइलस्टोन तो उन्होंने अबूर कर लिया कि टॉप 10 में आ गए रन गेटर में, जो कायद आजम ट्रॉफी की हिस्ट्री में आज तक रन हुए हैं हाईएस्ट रन गेटर में, और सिर्फ 3 रन दूर है, यंगेस्ट बन जाएंगे ये, सेकंड यंगेस्ट इनफैक्ट आफ्टर ग्रेट जावेद मियांदाद। इस एज के अंदर इतनी कमिटमेंट दिखाना, इतनी मैच्योरिटी दिखाना, ये कमाल की बात है। सियालकोट से ताल्लुक है इनका। कलाइयों की मदद से गाइड कर दिया फाइन लेग की जानिब से, सिर्फ 2 रन दूर है यंग हुरैरा। आप कुछ प्रेडिक्शन करने के मूड में हैं ये डिक्लेरेशन के हवाले से, या फिर आप देखेंगे क्या होता है? क्योंकि अगर मुझसे पूछें, वैसे तो मुझसे पूछता कोई नहीं है, लेकिन ये जो लंच ब्रेक है इसमें बेहतरीन वक्त हो सकता है, क्योंकि आपके पास फ्रेश लेग्स होंगी गेंद करने को। जैसे आपने बताया कंफर्मेशन, ये नया फॉर्मेट जिसमें नई टीम्स आपको नज़र आती हैं, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, उसमें ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं। एहसान अली ने इसी सीज़न में कज़ाफ़ी स्टेडियम में सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 303 रन बनाए हैं, जिससे भी ये सिर्फ 5 रन की दूरी पर रह गए हैं, उस लिस्ट में भी आगे आ सकते हैं। लेकिन इस जवां उम्री में पहले सीज़न में ये कारनामा सर अंजाम देना हर लिहाज से एक शानदार एफर्ट है अब तक हुरैरा के पार्ट पे। यहाँ एहसान अली ने भी बहुत शानदार इनिंग खेली थी डे एंड नाइट मैच में सेंट्रल के अगेंस्ट कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लेकिन ये मुझे लगता है कि अकील ये उससे रेट हाई मैं इसलिए करूँगा क्योंकि ये पिच थोड़ा मुख्तलिफ था, थोड़ा मुश्किल था बैटिंग के लिए अर्ली ऑन, स्पेशली जब आप नया बॉल फेस करते हैं तो बॉल काफ़ी सीम होता है, स्विंग होता है। ऑल्दो बहुत जल्दी लेंथ चेंज हो गई थी बलोचिस्तान बॉलर्स की, लेकिन अर्ली ऑन 2 नए बॉल खेले हैं इन्होंने, सर्वाइव किया है उस टाइम को, अच्छी कमिटमेंट शो की है, मकसद शो किया है। एक तो पर्सनल मकसद, ऊपर से टीम के लिए भी एक मकसद है, क्योंकि टीम ने क्वालिफाई करना है फाइनल के लिए, ये मैच जीतना ज़रूरी था या कम से कम ड्रॉ करना ज़रूरी था। और अब जब उनको थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि फील्ड खुल गई है, थर्ड पे फील्डर मौजूद है, तो अब वो जो शॉट है इनका फेवरेट जो वो स्कूप खेलते हैं स्लिप के ऊपर से, उससे भी आप गुरेज कर रहे हैं, और करना चाहिए क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है कि आप 298 रन पर पहुंच जाएं। 19 साल की उम्र में ये मार का सर अंजाम देना, ये कमाल की बात है। थोड़ी एक्टिविटी और हलचल नज़र आ रही है आज कम से कम बलोचिस्तान के कैंप में। इस एंड से अच्छी गेंदें की थी इससे पहले चुगजई ने, और अब ताज वली एक्शन में। ऐसे खेल दिया है, ये फील्डर्स के दरमियान जा रहा है बॉलर्स के साथ ही। जी हाँ, अपने 300 रन मुकम्मल कर लिए यंग हुरैरा ने, सेकंड यंगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जिन्होंने इस मार का असर अंजाम दिया है। 302 रन, सिर्फ 327 रन 327 बॉलों पर ये मुकम्मल किए। बहुत ही कमाल की इनिंग, 19 साल की उम्र में ये सर कारनामा असर अंजाम दिया है। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है इस इनिंग की, बहुत ही शानदार इनिंग खेले। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, सियालकोट के नौजवान हुरैरा का यह शानदार कारनामा अपने अवलीन सीजन में अब तक 20 साल की उम्र को बिना पहुंचे हमारे हुरैरा ने 300 रन मुकम्मल किए हैं। 2 सेंचुरी इससे पहले दाग चुके हैं, अपनी आमद का ऐलान कर दिया है, और मुझे उम्मीद है, आई होप द वर्ल्ड इज वॉचिंग, जो टैलेंट, जो कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, बैलेंस, सब कुछ उन्होंने आज एसपीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिखाया है। और सबसे अच्छी बात कि थैंकफुली ये वाला मैच भी, उससे पिछली ट्रिपल सेंचुरी भी ब्रॉडकास्ट हो रही थी, लाइव स्ट्रीम के ज़रिए से ये रिकॉर्ड हुआ, सारी दुनिया तक पहुंचा और अमर हो गया है। ये मौका हुरैरा के लिए बहुत मुबारक हो, उनकी इस एफर्ट को, उनकी फैमिली को, जिसका किरदार अब तक रहा है। लेकिन ये आई एम श्योर कि इनके जहन में मौजूद होगा कि सिर्फ और सिर्फ आगाज़ है, दुनिया उनके सामने फतह कर लेने को मौजूद होगी। शाबाश हुरैरा। जहां पहले सीजन में ये ऐसा कारनामा सर अंजाम देना, ये ज़्यादा कमाल की बात है। सिर्फ 19 साल की उम्र में 300 रन की बड़ी इनिंग खेलना, ये आसान काम नहीं होता है। बहुत ही शानदार तरीके से, ये सबसे शानदार बात रही है कि रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कमाल का रहा है हुरैरा की जानिब से। जब भी मौका मिला है सॉफ्ट हैंड से खेलें, गैप में डिफेंस भी किया है तो रन हासिल किए हैं, और ये वो मौका था जिस तरीके से उन्होंने अपने 300 रन मुकम्मल किए, गैप में खेले शानदार तरीके से। देखने की चीज़ है, बार बार देखिए ये मौका है ही ऐसा। और ना सिर्फ ये कि ये मैच, बल्कि इस तरह के कई यादगार मौके हैं जो कि इससे पहले भी आए होंगे, लेकिन इस जवां उम्री में करना और इसका लाइव स्ट्रीम होना, रिकॉर्ड होना, ज़बरदस्त। अब ये इस रन के साथ जॉइंट हाईएस्ट स्कोरर भी बन गए हैं इस सीज़न के भी, और जो नया फॉर्मेट है कायद आज़म ट्रॉफी का, उसके भी, और उससे आगे निकलने के ये करीब हैं। उम्र देखिए और कारनामा
जावेद मियादाद के बाद जैसा आपने बताया कि ये सबसे यंग हैं और एक बड़े अरसे के बाद ये कारनामा असल अंजाम दिया। इस दुनिया से जा चुके हैं आफ्ताब बलोच, उनकी इससे पहले ट्रिपल सेंचुरी मौजूद थी। वहीद मिर्ज़ा फ्रॉम कराची एक और नौजवान खिलाड़ी, लेकिन सेकंड यंगेस्ट जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने का कारनामा असल अंजाम दिया बड़े अरसे के बाद। तो बार बार ये उम्मीद, और इसमें हमारे दोस्त बाज़ेद भी मौजूद हैं, वो तो अभी भी 23 साल के लगते हैं। ये बात कब की है? 2004 की। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मौका और उम्मीद है कि इस तरह की कई वो कामयाबियां समेट लेने के लिए आगे ज़िंदगी में और ऐसे कई माइलस्टोन ज़रूर करेंगे। शानदार लिस्ट है अपने आप को शामिल करने को। जहां बहुत बड़े बड़े नाम उस लिस्ट में शामिल थे। अच्छी एलीट लिस्ट है जिसके अंदर बहुत जल्दी अपने करियर में अपने आप को शामिल कर लिया। बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा आई एम श्योर, फैमिली के लिए भी, कोचेस के लिए भी, सियालकोट के लोगों के लिए भी, एक यंगस्टर ने वहां से आके इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। क्रेडिट देना होगा नॉर्दर्न को भी जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है इस यंग प्लेयर को। पहले मैच में ही यहाँ पे मौका नहीं जाने दे रहे हैं, मैक्सिमम रन्स करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए। एक और बाउंड्री हासिल की हुरैरा ने। इतना वक्त गुजार चुके हैं और ऐसी गेंद जो कि शायद बहुत ज़्यादा उनको विट नहीं भी मिली थी, लेकिन उन्होंने डीप जाकर क्रीज में करीब पहुंच के जितने करीब से अपने जिस्म के खेला है, बस बात का आमाज है कि टेक्निकली हर लिहाज से ये बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं। और आप जो माइलस्टोन्स आगे बात करें, अभी तो PSL की फ्रेंचाइजीज में दौड़ लगी होनी चाहिए। अगर वो कोई और एंगल के साथ नहीं देख रहे हैं, किसी और अपने वो मैचअप्स को या बैलेंस को पूरा नहीं करना चाहते कि कौन पहले लेकर जाएगा, जो आगे 2 ड्राफ्ट्स के खिलाड़ी आपको जनवरी के पहले हफ्ते में देखने को मिलेंगे। शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है हुरैरा के, 559 की बढ़तरी, और अब ये टॉप स्कोरर बन गए हैं इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, और पिछले 3 साल से इस न्यू लुक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के वो टॉप स्कोरर। जहाँ फिटनेस लेवल भी शानदार रहा है कि सिंगल जो सर्कल के अंदर इन्होंने लिए हैं वो भी कमाल के रहे हैं। 114 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 560 पे 3 नॉर्दर्न। नॉर्दर्न की लीड 255 रन की। आपने आगे सवाल किया था कि यहाँ से नॉर्दर्न अब क्या कर सकता है, क्योंकि और अचीवमेंट क्या हो सकती है। एक हमें पहले ख्याल था कि शायद हुरैरा के 300 रन तक वेट किया जाए, 250 रन की लीड का भी एक पॉइंट था कि शायद जब तक 250 रन की लीड हो तब डिक्लेयर कर दें, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड टीम को मजीद फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं वो। एक और शानदार रन, ये क्वालिटी रही है इस नॉर्दर्न साइड की। एग्रेशन नजर आया इनकी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में बहुत एग्रेशन नजर आया। वो बात तो ठीक है, मरे को मारे 100 दुरे वाली बात आप उनको और दीवार के साथ लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी कुछ वक्त छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब बलोचिस्तान के ये जीतने की इक्वेशन तो ऑब्वियसली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ के लिए खेल सकते हैं, तो वो उतार सकते हैं। कोई एक आधा रन आगे चढ़ भी गया तो वो उसको उतारने का कम से कम अपने पास वक्त रखेंगे। ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है, लेकिन बहरहाल ये वाला सेशन अपने अख्तिताम की जानिब है। हल्का अबर आया इस वक्त, आज सुबह से ये हल्की सी लहर बादलों की मौजूद है, जो कि अब जो सूरज पिछले 2 दिनों के दौरान तेज़ी से मौजूद था उसको कवर कर रही है। उमर अकमल, कमिटमेंट लेवल शानदार रहा है। अनफिट होने के बावजूद भी आगे हमने देखा ड्रिंक्स कैरी कर रहे थे टीम के लिए। उंगली पे बॉल लगा था कल विकेट कीपिंग करते हुए, और न्यूज़ ये है कि शायद बैटिंग भी नहीं कर पाएंगे। ये भी एक धचका है बलोचिस्तान के लिए। आपका फेवरेट टॉपिक? जी हाँ, ये वो बादल नहीं है जो कि शायद आप जान सकें, हल्के आते जाते नजर आ रहे हैं, धूप में वो गायब से हो गए। फैजान रियाज जो कि खुद डबल सेंचुरी बना चुके हैं, वो कुछ मुताद अंदाज से चल रहे हैं इस वक्त इस पिच पे। अब तक उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाया, कोई चौका उनकी बैटिंग के दौरान नहीं लगा, सिर्फ 1 विकेट हासिल हुई है आज के दिन उमर अमीन की, जो कि खुद एक अच्छी इनिंग्स खेल कर आउट हुए, और उसके बाद से हुरैरा की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। देखना ये कि कब डिक्लेरेशन आती है और उसके बाद बलोचिस्तान की मुज़ाहमत कैसी रहती है, जो कि एक दिलचस्पी का अमर रहेगा इस मैच में। एक और तेजी से रन मुकम्मल किया है, बहुत शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। और रेगुलर विकेट कीपर ना होने का नुकसान ये भी होता है कि
जो फील्डर है वो थ्रो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि रजा उल हसन लिए बहुत मुश्किलात रही हैं विकेट कीपिंग करना। वो खड़े रह गए हैं अपनी पोजीशन पे। हल्की सी कोशिश ज़रूर की थी लेकिन सिर्फ कैमरा के लिए। 563 पर 3 नॉर्दर्न। और अब लंच में लगभग 12 मिनट है अकील, तो लंच तक तो आप बैटिंग करेंगे, क्या घंटा और बैटिंग कर सकते हैं। कल भी जब 200 रन इन्होंने मुकम्मल किए थे तब मैंने बात की थी कि क्या 300 रन को देख सकते हैं, और क्या 300 रन के बाद अब 400 रन को देख सकते हैं यहाँ से हुरैरा। मेरी वैसे मालूमात तो बड़ी नाकस है, लेकिन अगर ये इस तरह से मैच चलता रहा तो करने को तो अगली कायद आज़म ट्रॉफी तक भी बैटिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब बेहतरीन वक्त है कि आप डिसीजन लें और अगली टीम को ऑब्वियसली इस सेशन के अख्ताम पर उतारें। ये है हुरैरा। हर तरफ वो मंजर आम पर हेडलाइट्स में आए थे जब सूरत इतनी आसान नहीं थी, अब हाईलाइट्स में आ चुके हैं हेडलाइन बनाते हुए। 309 रन की इनिंग्स एहसान अली से वो आगे निकले हैं, जो कि ख़ुद एक बड़ी मार्कतलारा इनिंग्स खेल कर पहुँचे थे। इससे पहले जो पिछला सीज़न था उसमें यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुसैन तलत ने 250 रन से ज़ायद बनाए थे, और इन सबसे बहुत आगे निकलते नज़र आ रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि हमें 4-डे क्रिकेट में फाइनल एक सर्कल के अंदर देखने को मिल रही है। यूजुअली हम देखते हैं कि फील्डर दोनों सर्कल पीछे होते हैं बाउंड्री पे, लेकिन यहाँ पे कुछ हालात ऐसे हैं बलोचिस्तान के कि अब कुछ हो नहीं रहा है। चले एंजॉय कीजिए, हुरैरा की इनिंग को एंजॉय कीजिए, मैक्सिमम ये कर सकते हैं आप। 115 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 563 पर 3 नॉर्दर्न। कैसा देखते हैं अकील आप इस बलोचिस्तान की परफॉर्मेंस को? सिर्फ ना सिर्फ परफॉर्मेंस, बैट और बॉल के अलावा एक अप्रोच बहुत ख़राब रही है। प्लेइंग 11 से अगर जिक्र करें हम, कैप्टनसी का जिक्र करें, फील्डिंग का जिक्र करें, फिटनेस का इशू करें, कुछ भी इनकी फेवर में नहीं गया है। इनफरादी गोल्स कम से कम लेके चल सकते थे। यासिर शाह बड़े अरसे के बाद कमबैक कर रहे हैं, उनकी तो विकेट्स आपको पता ही है कि 1.5 साल हो चुका है जब से विकेट उन्होंने हासिल नहीं की। गो के ऐसा नहीं है कि उस दौरान मुसलसल खेले हों, लेकिन फिर भी जब आप रिदम में आते हैं, जो कि लेग स्पिनर के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते थे, कोशिश करते, वो नज़र नहीं आई। और मेरे ख्याल से शान मसूद के अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान के लिए नहीं था जो कि किसी भी लम्हे पर एफर्ट दिखाता नज़र आ रहा हो। और अभी भी ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि वो ख़ुद कितनी मज़ाहमत देते हैं और बाकी खिलाड़ियों को ऐसे खिलाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ बैटिंग में परफॉर्मेंस दिखाना होगी। इमरान बट इनके पास हैं जो कि टॉप स्कोरर रहे हैं पिछले सीजन्स में, वो क्या खेल पाते हैं, फील्ड में मौजूद हैं, वैसे बड़े शानदार प्लेयर हैं, वो भी कम बैक करने की कहीं ना कहीं सोच रखते होंगे। अजीम घुम्मन है, तो बैटिंग के ज़रिए से शायद कुछ जवाब मिल सके जो कि माहौल बनाए, क्योंकि ये एसपीबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई मरतबा हमने टीम्स को कम बैक करते हुए देखा है, लेकिन उसमें कम से कम वो एक लहर, वो स्पार्क नज़र आ रहा था जो कि ऐसा कर सके। देखना है कि क्या कुछ कर पाएंगे इस लंच ब्रेक के दौरान इनके कोचेस इनके साथ, या फिर ऐसे ही चीज़ें जारी रहेंगी। जी, अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना होगा यहाँ से इन बड़े प्लेयर्स को, जिनका आपने जिक्र किया। इमरान बट उसमें शामिल हैं, शान मसूद ने पहली इनिंग में बहुत शानदार इनिंग खेली थी, वाहिद पॉजिटिव रहा है जो इस मैच में उनके लिए। तो अब देखना होगा कि सेकेंड इनिंग में वो क्या कर सकते हैं। उमर अकमल की शायद उनको खिदमात मौसूल नहीं होंगी। शान मसूद बहुत शानदार इनिंग खेले, 200 रन नहीं मुकम्मल कर सके, लेकिन इनिंग बहुत कमाल की थी। इसको कट कर दिया, ये बॉल चला जाएगा। फील्डर पीछे जरूर भाग रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रन हासिल कर रहे हैं फैजान रियाज ने इस बार। फैजान का पहला चौका, बड़ा इंतज़ार करवाया उन्होंने, हालांकि उम्मीद थी कि आते ही वो हलचल मचा देंगे एसबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, लेकिन उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। क्रीज का बड़ा उन्होंने इस्तेमाल किया है और अपने पूरे वेट को बैकफुट पे धकेल के ऑलमोस्ट स्टंप्स की लाइन से वो निकालने के लिए चले गए। 17वां उन्होंने ये इस वक्त गेंद खेली थी और उसके बाद जाके पहला चौका हासिल किया। अब डबल फिगर्स में पहुंचे हैं फैजान। 567 पे 3 और बर्तरी 262 रन की नॉर्दर्न की। हफ्ते का पहला काम वाला दिन कराची में, ये तो खैर छुट्टी के दिन भी काम कर रहे होते हैं, और ये आखिरी चंद लम्हात हैं इस पहले सेशन के। 2 या बहुत ज़्यादा हुए तो 3 ओवर मुमकिन हो सकेंगे, और उसके बाद देखना है कि क्या वो डिक्लेयर करते हैं नहीं। अली
छुट्टी के दिन काम कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं तो हमारी बात मुझे लगा शायद आप कर रहे हैं। हम लोग तो इतवार को भी काम कर रहे हैं। आप तो वो हैं जो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अपडेटेड पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें 135 पॉइंट्स पे पहुंच गए नॉर्दर्न, 134 पर केपी हैं। अब तो कह लेने दीजिएगा मुझे एक कि केपी और नॉर्दर्न जो है वो फेवरेट हो गए हैं यहाँ से फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही और यही शायद दो टीमें जो डिजर्व भी करती हैं। सिंध ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आखिरी कुछ मैचेस में, लेकिन अगर बेहतरीन क्रिकेट की बात करें तो वो नॉर्दर्न और केपी हैं। देखिए टॉप ऑफ द लिस्ट नॉर्दर्न ने 3 मैचेस जीते हैं और लगातार 3 मैचेस जीते हैं 127 पॉइंट्स पे। लेकिन अब अगर हम इसको मजीद अपडेट करें तो 135 रन पर 135 पॉइंट्स उनके हो गए हैं। केपी की अगर बात करें तो अपडेटेड पॉइंट्स जो हैं वो 134 हैं उनके। सिंध जो है वो 127 में अपडेटेड पॉइंट्स के मुताबिक। तो मुकाबला इन 3 टीम्स के माबैन था जो फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो करंट सिचुएशन जो डेवलप हो रही है अकील, वो ऐसा ही लग रहा है कि केपी और नॉर्दर्न शायद वो 2 टीमें होंगी जो हमें 25 दिसंबर से फाइनल खेलती हुई नजर आएंगी नेशनल स्टेडियम कराची में। डे एंड नाइट फाइनल होगा, वो 5 दिन का फाइनल लाइव टेलीकास्ट होगा पीटीवी स्पोर्ट्स में। बहुत ही शानदार मुकाबला होगा वो दोनों बेहतरीन टीमों के दरमियान। और मेरे लिए ज़ाती तौर पर एक और जो दिलचस्पी का मामला होगा कि क्या ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की टीम वैसे भी बड़ी अच्छी है, लेकिन इनके जो अदरवाइज़ मेन कप्तान है वो रिजवान है, क्या वो टीम को ज्वाइन करेंगे? शाहीन शाह अफरीदी जो कि जब से नेशनल T20 की शुरुआत हुई थी उस वक्त से वो बबल में थे, पहले नेशनल T20 फिर वर्ल्ड T20 फिर बांग्लादेश का दौरा। तो वैसे तो वो रेस्ट डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन चूँकि एक बड़ा मौका होगा और फुली कमिटेड क्रिकेटर्स भी हैं तो हो सकता है कि ये फ़ैसला हो। लेकिन ये सब चीज़ें आने वाले इस एक दिन के बाद क्लियर हो सकेंगी, कौन कौन अवेलेबल होगा इस फाइनल मैच के लिए। ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स का आज़म ट्रॉफी की तारीख में और अब इस शानदार फहरस्त में भी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं हुरैरा। ये वैसे ही दिलों को गरमा देने वाली फहरस्त है जो कि अनीम मोहम्मद, आफ्ताब बलोच जैसे प्लेयर्स पे मुश्तमिल। ये शानदार लिस्ट है, इसके अंदर इतनी कम उम्र में आ जाना वो कमाल की बात है। इमेजिन कीजिए आप 19 साल के हैं और आप उसी लिस्ट में शामिल है जिसमें हनीफ मोहम्मद, द ग्रेट हनीफ मोहम्मद शामिल है। ये बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है यंग हुरैरा के लिए। अगर हम दोबारा से देख सकें वो लिस्ट और कितने शानदार नाम उस लिस्ट में शामिल हैं। हनीफ मोहम्मद टॉप्स द लिस्ट, 499 रन की इनिंग खेली 1958 में। नवीद लतीफ़ एक और शानदार प्लेयर, सरगोदा से उनका ताल्लुक। इमरान फरद 308 रन की इनिंग खेल के इस लिस्ट में शामिल है। एहसान अली भी इस लिस्ट में शामिल हुए थे जब लाहौर में उन्होंने 303 रन बनाए थे। लेकिन 19 साल की उम्र में अकील इस लिस्ट में शामिल हो जाना एक कमाल की बात है। बिलाशुबह शानदार एफर्ट, चांसलेस इनिंग्स और बड़े ज़बरदस्त पेस के साथ ये इनिंग्स बनाई गई है। सिर्फ एक विकेट हासिल हुई आज उमर अमीन की और एक चांस उन्हीं की बैटिंग के दौरान निकला था। लेकिन अभी पूरा सेशन मुकम्मल होने जा रहा है जो कि आपको इतना बताता है कि अगर ठहर के खेला जाए तो कोई ऐसे लम्हात मौजूद नहीं है जो कि इस पिच में ट्रबल दे सके। हाँ, ये एक शानदार लिस्ट है जिसमें ये बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स को पीछे छोड़ गए हैं। इवन हनीफ मोहम्मद को भी पीछे छोड़ गए हैं, दूसरे नंबर पर आ गए हैं। यंगेस्ट पाकिस्तानी है जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, उस पर दूसरी पोजीशन पे आ गए हैं। उनके बाद देखिए कितने बड़े नाम हैं, आफ्ताब बलोच, वहीद मिर्ज़ा, हमजा गांची, शानदार प्लेयर। हनीफ मोहम्मद को भी पीछे छोड़ दिया। ये प्राउड मोमेंट, असल प्राउड मोमेंट की अगर बात करें तो वो ये है क्योंकि इस कम उम्री में ये कारनामा सर अंजाम देना ये बहुत शानदार बात है। ताजवली का ओवर इस दौरान मुकम्मल, 266 की बढ़तरी, 571 पे 3। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो सकता है कि दुनिया में कितने यंगेस्ट ट्रिपल सेंचुरियंस हैं, उसमें इनका नाम कहाँ पे आएगा ये देखने से ताल्लुक है। बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट हो सकती है वो को ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने कम उम्री में 300 रन का कारनामा सर अंजाम दिया हो, उस पर कितने नंबर पे आएंगे। तो रिकॉर्ड्स बनते चले जा रहे हैं हुरैरा के लिए।
आप कह रहे थे आप तसव्वुर करें कि आप 19 साल के हो और आपने ट्रिपल सेंचुरी बनाई हो। मुझे तो 19 साल का सोच के इतना मज़ा आ रहा है। ट्रिपल सेंचुरी तो खैर आप ना ही पूछें। तो बहरहाल ज़्यादा फ़र्क नहीं है आपकी उम्र और 19 साल में। सो उम्मीद करते हैं कि मज़ीद ऐसे कारनामे आते रहेंगे पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ से। नया सिस्टम ही है जिसके ज़रिए से ना सिर्फ ये कि ये एक्शन है, नौजवानों को मौके मिल रहे हैं, बल्कि मुकम्मल प्रोजेक्शन उनको हासिल हो रही है दुनिया भर में मनाज़र जाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पे। या यहाँ पे क्रेडिट डेफिनेटली पीसीबी को जाता है कि आप आज से पहले, इन 2 सालों से पहले कब हमने देखा था कि फर्स्ट क्लास की गेम्स टेलीवाइज हो रही थी या यूट्यूब चैनल पे इनफैक्ट आ रहे थे। तो ये जो इनिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। आज से पहले हमने देखा जो भी लिस्ट हमने देखी जिसमें बड़े बड़े रन हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, किन कंडीशंस में हुए, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सामने है। जिस तरीके से हुरैरा ने इनिंग खेली, एहसान अली ने 300 रन की इनिंग खेली, ये शायद आज से पहले कभी हुआ होता तो गुमनामी में रहती है इनिंग। लेकिन इस इनिशिएटिव का जो पीसीबी ने लिया है उससे ही हाईलाइट हो रहे हैं। ये क्रेडिट डेफिनेटली जाता है पीसीबी को। और इस फॉर्मेट की आप बात कर रहे थे, जो परफॉर्मेंस इस फॉर्मेट में रन्स कर रहे हैं शायद उनको मैं क्रेडिट ज़्यादा दूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के बेस्ट हैं जो बेस्ट के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है आपके पास। आपको अपनी ए गेम लानी है हर बार जब आपने मैदान में उतरना है, क्योंकि दूसरी जानिब आपके ओपोनेंट्स भी टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, और उनके अगेंस्ट ऐसी इनिंग खेली, ये एक डिफरेंट अचीवमेंट है। बिल्कुल, गो के बलोचिस्तान मुकम्मल तौर पर अब ये एक शिकस्त और रेत की दीवार बना हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इनके पास जो भी बॉलर हैं, काशिफ भट्टी इस सीज़न में भी टॉप 5 विकेट गेटर्स में मौजूद हैं, यासिर शाह, दैन ताज वली का एक्सपीरियंस, ये सब इनके होने के बावजूद उन्होंने बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली है। अब घड़ियाँ लगभग 12 बजे चाहती हैं, तो उसके साथ ये देखना होगा कि क्या ऐलान होता है, या ये हमें पता चलेगा ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, या फिर वो कंटिन्यू करेंगे इस अपनी एफर्ट को। वैसे ही रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया, 267 रन की बढ़तरी किसी भी सूरत में उतार के मैच को वो अपने लिए फतह की जानिब तो नहीं ले जा सकते। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मौजूद नहीं था, बड़ी तेज़ी के साथ लपके हैं कुछ। मुझे लगता है कि लंच की मोटिवेशन है। इमामुल हक ने हलचल मचा दी आखिरी लम्हात में। यहाँ थोड़ी देर ज़रूर कर दी इस हलचल में, क्योंकि काम तमाम हो गया। बलोचिस्तान बहुत पीछे मुस्कुराते हुए उमर अकमल, शानदार तरीके से डिफेंड किया। और यहाँ पे अंपायर का डिसीजन हमें देखना होगा कि क्या वो लंच का इशारा करेंगे। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स ने अपने अपने डगआउट की जानिब चलना शुरू कर दिया है। अंपायर ने ये डिसीजन दिया है कि हम यहाँ पे लंच का वक्त हो जाएगा तीसरे दिन, यहाँ पे आखिरी राउंड गेम मैच। और ये सेशन जैसे कि बाकी सारे सेशन कल के रहे, ये हुरैरा के नाम रहेगा। अपने करियर की पहली ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है, 311 रन, सेकेंड यंगेस्ट पाकिस्तानी बने हैं जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। बहुत ही शानदार इनिंग रही है, कोई मौका नहीं दिया है बलूचिस्तान को उनको आउट करने का। चांसलेस इनिंग हम कहेंगे, मैंने नहीं देखा है कि पूरी इनिंग में कोई भी अपील इनके अगेंस्ट हुई हो। एक बहुत ही शानदार कॉम्पैक्ट इनिंग, 26 ओवर्स इस सेशन में हुए, 124 रन बनाए, 1 विकेट गिरी। और रन रेट भी शानदार है, जैसे कि हम पहले देखते हुए आ रहे हैं कि रन रेट कमाल का रहा है नॉर्दर्न का, 4.62। और मिजरी यहाँ पे कंटिन्यू है बलूचिस्तान के लिए। ये सिर्फ सियालकोट और नॉर्दर्न के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट और बैटिंग का मुस्तकबिल ताबनाक होने का एक बड़ा मज़हर है। शानदार बैटिंग नौजवान हुरैरा ने, जिन्होंने चांसलेस इनिंग्स के लिए अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की। नॉर्दर्न की टीम के ये सीनियर खिलाड़ी, कप्तान, नुमान, कोचिंग स्टाफ, सब इस शानदार एफर्ट पर मुबारकबाद देने के लिए। और उमर अकमल बलोचिस्तान के कैंप से यहाँ तक पहुँचे हैं। हुरैरा जिनके नौजवान कंधों पर यह भारी जिम्मेदारी आई थी नॉर्दर्न के लिए एक शानदार बुनियाद फराहम करने की, और उससे बहुत बढ़ के किया है उन्होंने आज, और उससे आगे की कई कामयाबियाँ उनकी मुंतज़िर होंगी। उमर अमीन और इनके साथी खिलाड़ी और नुमान के हम इशारे के मुंतज़िर होंगे अभी या फिर लंच के फ़ौरन बाद या कुछ देर में। लेकिन इस वक्त ये मोमेंट है हुरैरा का और इन्हीं के नाम जाएगा मुकम्मल तौर पर। आप लंच पे ही उनके इशारे के मुंतज़िर हैं, लगता है आपको लंच पे उन्होंने कहीं इनवाइट किया। आज तो नहीं हो सकेगा, कल देखते हैं क्या होता है। तो ये है
इस वक्त के पहले सेशन का अहवाल, जो कि मुकम्मल तौर पर नाम रहा नौजवान मोहम्मद हुरैरा के, जिन्होंने आज एक मरतबा फिर ना सिर्फ ये कि ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की, बल्कि इब्तदा से उन्होंने अपनी पूरी रेंज का मुजाहरा किया है। कवर ड्राइव्स उनके हम पहले दिन से ही देख रहे हैं कि बड़े शानदार थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये हवा में खेलने का भी और फिर अपर कट करने का सिलसिला शुरू किया, जो कि अपनी हरीफ टीम को मुकम्मल तौर पर बैकफुट पे ले गया। ऑलरेडी उनके हौसले पस्त थे और दोबारा उनको उठने का मौका ना दिया। ये जानदार और शानदार मौका हुरैरा के लिए, जब उन्होंने 300 रन मुकम्मल किए पहले सीजन में खेलते हुए, शानदार इनिंग्स को उन्होंने मुकम्मल किया। बैटिंग कार्ड नॉर्दर्न की, सरमद भट्टी ने शानदार साथ दिया हुरैरा का, 135 रन बनाए, 122 रन बना सके हैदर अली। उमर अमीन ने भी शानदार 51 रन बनाए। फैजान रियाज नॉट आउट 13 रन पर, लेकिन सबसे जो बेहतरीन इनिंग रही है वो मोहम्मद हुरैरा की है, जो कि नॉट आउट 311 रन बनाकर 341 बॉलों का उन्होंने सामना किया है और इस नॉर्दर्न को बहुत कमांडिंग पोजीशन में ले आए इस मैच पे, 573 पर 3। एक विकेट मिली है नजीब बलोच, अगजई, आकिफ जावेद और काशिफ भट्टी को, लेकिन जो रन्स का अंबार इनके खिलाफ लगा है, सेंचुरी के रन्स दे दिए हैं। 143 दिए काशिफ भट्टी ने और ताज वली 142 रन दे गए। इमरान बट और शान मसूद ने एक ओवर किया, लेकिन वो भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब ना हो सके। पहली विकेट 365 पे गिरी थी, जिसके बाद विकेट्स गिरी ज़रूर हैं, लेकिन वो कोई फ़र्क कायम नहीं कर सकें बलोचिस्तान की जानिब से नॉर्दर्न के खिलाफ। खाने के वक्फे का वक्त है, हम एंजॉय करते हैं अपने लंच को। आपके साथ हम एक बार फिर मौजूद होंगे अब से 35 मिनट के बाद, इस फैसले या फिर इस इनिंग्स के रिज्यूमशन के साथ कि क्या हुरैरा और नॉर्दर्न दोबारा अपनी इनिंग्स को जारी रखेगा इस बीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। To the next level. Exactly, and the 19 World Cup helped me a lot. It boosted my confidence as well, and as you know, it's the international exposure gives you a lot of confidence in yourself, so it helped me a lot. Okay, and you're obviously nephew of Shoaib Malik. How much of inspiration he has been, and you're coming from Sialkot where a lot of talent is coming from. Just tell us about that. Yeah, exactly. As you know, he's a star player from Pakistan as well as a world icon player. So, yeah, it influences you also when he comes into the club and when you practice along with him. So he tells you around what he has told me a lot about game awareness as well. So I feel blessed to have him as well. Okay, and this is your debut first class season. How impactful you have been. It's just wonderful to see. Tell us about that progression from that boys to men's cricket. Yeah, it's a bit difficult, you know. Under 19 cricket is among young children, and here it is the big boys. So you got to change your mindset. You got to change some. Basically, it's all about mindset. So that's what I changed, and hopeful and thankful to Almighty that it helped me. And did you know that by scoring a 100, being so young, you're going to be in the same bracket as the great legend Javed Miadad?
Yeah, it's an honor for me. You just told me I didn't know that. Alhamdulillah, I'll just say Well, Alhamdulillah. obviously, it's a wonderful start for you. But let me ask you this: what are your goals and inspirations and your ambitions for your future? Yeah, it's the ambition of every young cricketer to represent Pakistan at the highest international level. So I also want to represent Pakistan at all three formats. And the remarkable thing is, like you just mentioned, at such a young age, the inclination is to be more favored towards the white ball cricket. But you're showing your prowess in the first class game, the longer version. How do you love this format compared to the white ball cricket? Yeah, white ball cricket is just like it's. I think it's a lot easier than red ball cricket. In red ball cricket, you have to be focused. You have to be concentrated on every each and single ball because wherever you get loose, you get out. So, yeah, I would prefer that when you play red ball cricket, you get a lot of confidence, you get a lot of temperament, and it helps you also in white ball. So I think we should prioritize first red ball cricket. It has been an absolute pleasure watching you bat. Well batted, and thank you. Jazakallah.
A very warm welcome back to the State Bank Sports Complex. Day 3 afternoon session, and this is how things look. Northern are leading by 268 runs. What a historic day it is turned out to be. Young Herrera getting to his triple hundred, still unbeaten on 311. The highest run score, individual score by any batter since the revamp of the structure. Second double hundred. Morning session, once again, the runs were plenty and Balochistan were chasing leather. Umpires have taken to the field and settled in very nicely. Alongside me is Amar Saeed, Pakistan's former under-19 skipper. Good afternoon, Amar. Thank you very much, and a very good afternoon to all the viewers in this post-lunch session here at State Bank ground. With the feature has been, of course, brilliant 300 by Herrera. It's been the star of the day, and what an innings it has been. Punctuated with beautiful shots, good defense, innovative strokes, and he has managed to play shots in each and every corner of this ground so far. Exceptional batting, and he is now nearly ready to continue. Any thoughts of Northern declaring their innings closed after his triple hundred? There's no signs of that. They're very relaxed in their changing room. Young Mubassir in the background was getting ready as well, as Faizan Riaz and Herrera will take to the field. A little bit more time in the field. The agony will be prolonged for Balochistan, it seems like. Yeah, I'm sure Northern would be looking for a lead of at least 300 plus. That seems to be the plan at the moment, as their not out batters walk in. We were expecting a declaration at lunch. It did not happen. Most probably another hour before they ask Balochistan to bat again. The only question in everyone's mind, looking at that batting of Balochistan, will that be enough time to dismiss them? Let's see. It's the question that Northern will be asking themselves. Shan Masood showed in the first innings, they're really determined. It's very hard to dislodge the batters on this wicket now, especially looking at Northern. They're very potent with the new ball, but they showed their vulnerability with the older ball in that first innings. The likes of Imam ul Haq, Imran Butt, if they really dig in and put their mind to the task, they can really score runs on this wicket. So, and they can take time out of the game as well. Northern will have to be mindful of that. Herrera 311 of 341. Faizan Riaz 13 of 25 deliveries. Looking to continue. What would you do if you were the skipper of Northern and you had to make the decision? Well, I can understand where they are coming from. A lead of 350 might just bat them out, Balochistan, once again. Looking at the situation in their team and the kind of mindset they are in, I think 350 should be good enough. Time, as you mentioned, they do have the quality to bat for a day and a half. And the pattern continues. Balochistan bowling and finding the middle of Herrera's bat. That has been the story since late on that first evening, all day long yesterday and throughout that first session. What a marathon knock this has been from the youngster. He suffered with bout of cramps towards the end of yesterday. No signs of them today. Helped it on its way in the air and carried. Najibullah takes the catch, and Akif deserves that wicket for his perseverance and persistence. And Herrera walks back
after playing a wonderful knock. And look at that, very sportingly, Shan Masood got to him a big pat on the back and acknowledgement of the feat that he has achieved. Take a bow, Herrera. You played a wonderful knock. Yes, the break hasn't proved to be very fruitful for Herrera, but as you said, what a tremendous knock by the youngster, stamping his authority on this screen and on the stage. This triple hundred will certainly take him a long way in his career, in building that career up. Certainly a brilliant base for that. The replay shot on the body, just helped it on its way. It was only one man and he couldn't have found him perfectly, as Najibullah gleefully accepts the opportunity. Going into the dressing room, standing ovation from his teammate and the management. This will be a memorable day in his life. That's what I'm sure of. Basir Khan, the new man in. 13 matches, 722 runs. Look at that average, 40 plus already. 450s, 200s, 164 is his best, the 19-year-old Basir. Another of the crop of youngsters that Northern are bringing along. Mubassir had his debut season last year. He announced his arrival with the bang in a magnificent 100. Also got 100 this year as well. 18 wickets to go with that as well this year. A very important member of this Northern team now. And another of those youngsters to very much look forward to. Off the mark immediately. Professor, if I remember correctly, it was National Stadium where he made his debut last year and got that 100. 163, if I'm not wrong. There's somebody did mention to have a look at him carefully, and I was lucky to go and watch at the National Stadium, and of course he did impress with that big 100. And since he's consolidated his position in that Northern lineup, he's in the middle because of this. Got cramped for space a little bit. In the end, he has to just swat at it, but found that man perfectly. Still disappointed. He was eyeing some more runs. Young Herrera not happy at all. The hunger. Faizan Riaz is unorthodox, and he will try to play his strokes. Another top edge, not entirely in control. He'll pick up the boundary. Yeah, in a weird position to pull that one. Good bouncer. The height was perfect, not in control, got the top edge. 4 runs nevertheless. Before that dismissal, we got caught up into that. I was asking, if you were the Northern skipper, what call would you make for declaration? Would you think about the runs, or would you think about the time remaining to dismiss them? Having a look at the wicket, yes, time would be a concern, definitely. But I will also make sure that we won't have to bat in the 4th innings. So I think anything above 300 or 350 maybe would serve that purpose.
like we were discussing before lunch, if anyone is expecting that declaration desperately, and that's the Balochistan camp at the moment. Every possible opportunity, they cast their eye onto the dressing rooms of Northern to see if that signal is coming. Really have toiled in the sun without much inspiration. And for me, the most disappointing aspect of Balochistan's fielding and bowling has been, look at that run rate, 4.85. At no point did they try to stem the flow of runs. Taking nothing away from Herrera, he played a brilliant innings. Was quite dismissive at times. But again, I would have to say that lack of imagination on the part of Balochistan team also helped him a lot. In the air off the thick outside half of the bat, Mubassir will get his first boundary. It was short and wide. He didn't want to hit it that fine, but he will take the result. First boundary for Mubassir. It was not that short, but went for that cut shot, got an edge. And I won't say luckily, but that edge helped it to go in the gap. 584 for 4. Coming back to the tactics of Balochistan, you know, even the most basic of things, to just pack one side and bowl one side and get hit in a certain area rather than all parts of the ground. They didn't even do that, let alone anything out of the box. No ball from Akif. And I like the word you used, unimaginative. That's what they have been throughout that 120 overs. And dare I say, they continue to be the same. There's that no ball, big no ball. Something that needs to be addressed in the nets. Both the sides bowling quite a few no balls. Easy singles on offer everywhere. Even with two new batters in, there's no intensity from Balochistan. This really has been a poor display by them. Well, Amar, this has been a very long season. We're into the second last day of the group stages. Match day number 39. You've been a part of this broadcast since round 6, but if you cast your mind back, is there any points of interest that you noted in this domestic cricket? We've seen a fantastic season overall. Can't deny that. This last game has been a dampener, but this has been a fantastic season. The competition has been so intense. Going into day 3 of this last league match, we still didn't know the finalists. I mean, there is a good chance that Northern and KP will get there, but mathematically 3 teams are still in it. I was just wondering to ask your experience of being a part of this, and how did you like, or what would you want to see going forward? It was amazing to see the young talent and the way these youngsters adapt very quickly to conditions is a very encouraging thing for me. Of course, with all the exposure to these leagues and playing around the world, it does help.
Look at that from Akif. Mubassir all at sea. Pace, bounce and carry. And the movement. Oh, beautiful delivery that. Round the wicket. That angle that brought the ball in and it moved off the wicket. Nothing the batsman could have done about that. In fact, proved to be too good for him. Nowhere near it. Well, the most encouraging aspect, as I said, are these youngsters coming up and the confidence they are showing and the attitude that they are showing. And because that Pakistan team is in reach nowadays, it's much easier to get there. Of course, I'm not saying that anyone could get there, but there are quite a few platforms. Lucky boundary. Mubassir is not found his feet just yet. Very lucky. He was just poking at that one. Got the inside edge. On another day, could easily have gone in on to hit his stumps. Not to be the case. Lucky boundary to finish off. Wide of the crease. This time the ball seemed inside edge. Very lucky. 590 for 4. Well, that would be encouraging for the northern bowlers to see. Still a bit of movement off the wicket. Still in no mood to declare. I think these two gentlemen are out there. Samiullah Niazi and Ejaz Ahmed Jr. If they're there to make that final announcement, looking at the watch, looking at the scoreboard, probably that psychological target of 300 ahead. Another 15 runs will take him there. Yeah, but going back to that point about this whole season, if you look at it from the beginning, it's very fortunate to be a part of it from the beginning. There's many highlights throughout the season. I have to congratulate the Pakistan Cricket Board. They really were in. The intent was really there to promote this first-class game and stage a competition that's worthy of the premier first-class tournament, and it has proven to be the case. At times in Lahore we felt the wickets were too batting friendly, but looking at overall season, we've come to Karachi. Bowlers came into it, and we watch a couple from Faizan Riaz. That meant that as an overall season, the balance between bat and ball is pretty even, and it had opportunities for everyone to show their skills. If they have the right kind of discipline and attitude, the platform was there, like you said, for them to shine and showcase their talent. For me, the most promising thing is the kind of batting the batting culture, the change in batting culture. We're seeing it in front of our very own eyes. And at the forefront of that are many talented youngsters. Listen, unlike yesteryears, as I said, there are so many platforms for these youngsters to perform and come to the fore. Has he hit it cleanly enough? Yeah, that short boundary will help him out. I didn't think it come off the middle of the bat, but Mubassir Khan showing his intent and taking Kashif Bhatti on. He would like the result, definitely. Yeah, look at that. Used his feet and did not time it very well, but cleared that boundary. So yes, there are so many platforms available to these youngsters, and it is very encouraging and nice to see that because of all that international exposure they get playing all those leagues all around the world nearly now. They adapt to conditions very quickly, and once again edgy from Mubassir. That will bring about the 600 for Northern.
marathon innings and that daunting figure of 600 on the board for just 4 wickets. And also, we're looking back at the whole season. This is Amir Saeed with the mask on. There you go. And also we have to congratulate our production team. We've been there since day one. And there's a huge team downstairs as well, looking after the technical sides of it. Not easy, but everyone has done a fabulous job to bring about this production to the viewers at home through that platform of PCB YouTube channel. As all of a sudden we've started to see plenty happening off the pitch for the bowlers. Not good for Balochistan. But it has been an absolute privilege to bring the first class game to you at your home, wherever you've been watching. I do hope you enjoyed this PCB production. We certainly did, bringing it to you. Absolute wonderful experience. And Amar, like I always do, put you on the spot. Would you be able to pick a highlight moment from this season so far? Anything that stands out in your mind that you would call it the highlight of the season? Well, that's an easy question this time from you. Being a part of the commentary team of this match, of course, it's 100 from Herrera. Absolutely magnificent. That is an absolute highlight for me. This youngster is so impressive. And it's not only the 300, but the way he has approached this innings, the way he dominated. And it can be proved by the fact that even now, the ball is doing something. The new batters, it's not very easy for them to play. But when he was on the crease, it seemed like he was playing on a clear wicket. Absolutely, that was the quality of the youngster. Throughout these 5 rounds here at State Bank, we've never found batting as easy as Herrera made it look. And that's his quality. Another name that comes to mind was Rizwan Hussain. He also profited here and scored a magnificent 253. Me, the highlight of the season certainly was these 2 knocks in terms of batting. And in terms of bowling, we've seen some very, very skillful bowling. None better than the bowlers of Sindh on that. Another no ball in the last round, where they really bundled Central Punjab on that 3rd evening. That bowling was some of the very highest order. Really enjoyable to watch. Look at that no ball. Big no ball. It's getting bigger. Well, that is what 4-day cricket is all about. The learning process. The bowlers, they've learned how to bowl on placid wickets in the Punjab leg. And when they come here, Sindh, find different tracks, adapt to it. Not only the batters, but the bowlers as well. They need to change their lengths. And not many teams did it early on. It was most probably Sindh who actually made that adjustment very quickly, of course being the home team. And slowly but gradually the other teams caught up. And that is the beauty of the longer version. Keep learning, keep improving. Getting on to that pull shot, Mubassir. Look at that.
we can show that fielder on the top of your screen. Not a regular wicketkeeper, Razaul Hassan. Is a fly slip that you normally see in street cricket just to protect the wicketkeeper. There you go, in your frame, right behind the wicketkeeper. I don't think he's there for that ramp shot. He's just there to save the byes. 31 byes in the innings so far and 4 different wicket keepers. And that's the skipper has come up with a protection for him. I feel sorry for this lad, Raza Hassan. He's an off spinner. He's never even been in the slip cordon, leave alone keeping for a club side. And all of a sudden he finds himself in this situation that he's been asked to keep in a first class match. Nasty. More evidence of what Amar was saying just a while ago. Batting is not that easy. It looked like it when Herrera was batting, but look at Faizan Riaz. That really kept climbing at him, got big on him. In the end, had no idea where it went. Very well directed, that short delivery. Had him in tangles. Not a very good puller. Faizan Riaz, not really known to play those short balls well, but this time it was very, very well directed. Well, that lead that we were talking about is right at 300 now, but that signal isn't forthcoming. And now I think if we can see the northern dugout, I saw Rohail Nazir just climbing up the stairs. Probably he has been given a signal that just in case if a wicket falls, he may not be needed. I think he's been asked to change his pads from batting to keeping. Seem to be ready to take on the field. Northern with their 1 foot firmly in that final. All these youngsters will be really relishing the opportunity to perform on that big stage. Talking about that final, Sindh was another contender at the beginning of this round. They conceded a lead of 75, are now 45 for 1 in the second innings, still trailing by 30 runs. That game, the afternoon session on in day 3, Sindh will have to wipe out the deficit, get something substantial on the board, and then dismiss the opposition. Looks like time is running out for them. All eyes were on that Sindh game. Mubassir Khan charging down the wicket once again, hitting it over the top of that long off fielder. Shan Masood was lurking over there, but he took him on and cleared him with ease. Using the feet. Bit away from him, but he went through that shot and did it well. Yes, another one. Back-to-back sixes from Mubassir Khan, and probably that will hasten Northern's decision to come out of the park and end Balochistan's misery. And the first one off the park. These two batters really pushed the scoring along after that little session after lunch as we watch this latest blow from Mubassir. Looks like he got beaten in flight
went through with the shot. Well, Mubassir and Faizan Riaz, 31 and 26 respectively, undefeated, are walking off, and this is the depleted Balochistan side. They're coming off the park. They will be happy for that. A really miserable stint from them with the ball has come to an end. Now all eyes will shift on their batting. But that lead finally 316 runs for Northern. Is the batting card, and on top you see that mammoth innings, 311 from Mohammad Herrera. Brilliant batting by him. Sarmad Bhatti, 135. Equally good knock by him, but overshadowed by, of course, that triple hundred by Herrera. Haider Ali missed out, was out for 22. 51 for Umar Amin. Faizan Riaz and Mubashir Khan, the two not out batsmen, 26 and 31. 621 for 4 declared. These are the dismissals. First to go was Umar Amin today. Mistiming that lofted drive. Shan Masood finally took a catch after an earlier miss by Imam ul Haq, and this is after lunch. Herrera, after scoring that memorable 300, was dismissed, and that was all that Balochistan can cheer about. This bowling card is a nightmare. 3 centuries in there, and the most disappointing aspect was skipper Yasir Shah bowled only 14 overs of those 124 overs. He led the side unimaginatively, and his bowling was lackluster and lacked any penetration. Like I said, they were put out of their misery after 124 overs. Well,
एक बार फिर आपको स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुशामदीद कहते हैं, जहां पे खबर यह है कि नॉर्दर्न ने अपनी इनिंग 621 रन 4 विकेट्स पर डिक्लेयर कर दिए और जो ट्रेल है बलूचिस्तान को 317 रन की है। मैच समरी आपके सामने। बलूचिस्तान ने पहली इनिंग में 305 रन बनाए, शान मसूद की शानदार 190 रन, काशिफ भट्टी ने 68 रन बनाए और जवाब में नॉर्दर्न ने 621 रन बनाए 4 विकेट्स गवाकर। और सबसे हाईलाइट रही 311 रन की शानदार इनिंग 19 साला मोहम्मद हुरैरा की जानिब से। उनका अच्छा साथ निभाया सरमद भट्टी ने। अब बलूचिस्तान की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू करने को तैयार है और ये जो अब से कुछ देर पहले हमने बलूचिस्तान की बॉलिंग ख़त्म होते देखी है, जिसको हमारे साथियों शाह फैसल और अहमद सईद ने बिल्कुल ठीक बताया कि उनकी मुसीबत थी जो कि ख़त्म की। वो शायद आखिरी मरतबा था जब वो बॉलिंग करने के लिए उतरे थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो आखिरी मरतबा बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं। इसके बाद इनका सीज़न यहीं ख़त्म नहीं होगा। ये सड़क अब उनको लेके जाएगी पाकिस्तान कब तक, और वो गो के एक मुख्तलिफ फॉर्मेट है, लेकिन उससे पहले एक हाई पे इस टूर्नामेंट को फिनिश करना ज़रूरी है। इमरान भट्ट ख़ास तौर पर एक इनफरादी माइलस्टोन हासिल करना चाहते हैं। अपने टैलेंट का उन्होंने सबूत पेश किया अपनी फील्डिंग से ज़्यादा अपनी बैटिंग के मुकाबले में, लेकिन अब इन्होंने कम बैक करना है। और चूँकि ये सीज़न का इनके लिए अख्तिताम हो रहा है अली, और इनका शायद हम नहीं देख सकते कि वो जो कुछ खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट के लिए जा रहे हैं, तो ये आखिरी मौका होगा मुतासर करने का किसी को भी। शायद बहुत कम वक्त है इसमें किसी को आप इम्प्रेस कर सकें, क्योंकि जो अब्दुल्ला शफीक और आबिद कर रहे हैं, फिर साथ इनके साथी शान मसूद खुद बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक बड़ी मुस्बत रेस है जो कि पाकिस्तान में जगह बनाने के लिए आपस में लगी हुई है। बल्कि इसमें तो अभी हुरैरा ने भी कदम रख दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो थोड़ा मज़ीद मैच्योर होकर इंशाल्लाह आगे आएँ। सो शान मसूद और इमरान भट्ट दो ऐसे ओपनर्स क्रीज पर मौजूद हैं जो कि इनफरादी तौर पर पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, और शायद ये कुछ यहाँ पर दिलचस्पी रखें इस सेशन में। मगर दूसरी तरफ देखें तो बिल्कुल नवश्ते दीवार नज़र आ रहा है जो फैसला है इस मैच का भी। और बलूचिस्तान की एंड तो बिल्कुल हो ही चुकी है, चूँकि वो इधर से कुछ बोनस पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं, कुछ कंसोलेशन का ड्रॉ खेल सकते हैं, लेकिन आगे कहीं नहीं जा सकते। जी हाँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत मैटर करेंगी यहाँ पे, क्योंकि जो हालात हमने फील्डिंग में और बॉलिंग में देखे हैं बलूचिस्तान की, वो चाहेंगे कि यहाँ पे एक मार्क डेफिनेटली बना सकें। हैदर अली तो नहीं है ये। काशिफ अली पहला बॉल करेंगे इमरान भट्ट को। पहली इनिंग में बहुत ही शानदार तरीके से बोल्ड किया था इमरान भट्ट को, एक इन स्विंग डिलीवरी, कोई मौका नहीं, लेट हो गए थे इमरान भट्ट उस डिलीवरी पर, बोल्ड हुए। यहाँ पे जैसे हमने जिक्र किया कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत मैटर करेंगी। 6 मैचेस 21 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, 5 विकेट्स हासिल करने वाले प्लेयर हैं ये। पहली इनिंग में अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छे एरियाज में बॉल किए थे, लेकिन यहाँ पे इनके पास बहुत बड़ा मौका है अकील, बहुत टाइम बाकी है, इनको विकेट्स हासिल करनी है, मैच में बहुत आगे हैं। 316 रन ट्रेल है बलूचिस्तान की, तो मौका बहुत बड़ा है यहाँ पे नॉर्दर्न को ये मैच जीत सकें और फाइनल में जो अपनी पोजीशन है वो कंफर्म कर सकें। एक बार फिर स्विंग से शुरू किया है, नए बॉल से हमेशा ही मुश्किलात रही हैं ओपनर्स को, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं अगर आप अच्छे एरियाज में बॉल करते हैं तो ओपनर्स को मुश्किलात होती हैं। इमरान कुछ अपने खजालत को मिटाने के लिए अपने हरीफ खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ में मसरूफ़ थे। हमने ये कुछ उनकी एरियाज़ ऐसे देखे हैं जो कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इमरान भट्ट जब आखिरी मरतबा उन्होंने दौरा किया था जिम्बाब्वे का, उससे पहले एक बड़ा तवील कैंप लगाया था मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर निगरानी, जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के तरीक़ों के ज़रिए से प्रैक्टिस करवाई गई थी, जहाँ पर हार्ड सर्विस भी थी और एक तख्ता लगा के भी इनको प्रैक्टिस कराई जाती थी, जिसके ज़रिए से वो बाउंसी डिलीवरीज़ का सामना कर सकें और जो गेंदें आगे पड़ी हैं, ये अच्छा मुकाबला किया उन्होंने, उसको वो अपने लिए बेहतर अंदाज से जान सकें। और मेरे ख्याल से कुछ मोहतात हो जाते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट को जाकर जब आप टेस्ट क्रिकेट में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव इंटेंट का भी किरदार बड़ा ज़रूरी होता है, उसका अपना प्रेशर होता है, सारी दुनिया वहाँ पर देख रही होती है। ये मेरे ख्याल से इनके लिए एक एरिया ज़रूर है, अभी भी नौजवान है, कम बैक कर सकते हैं और यहाँ पर इनके पास ये प्रूव करने का एक बड़ा अच्छा मौका भी मौजूद है, क्योंकि पूरा स्ट्रेच इनके पास, या आज का दिन है, कल का दिन है, अगर सर्वाइव कर सकें तो ये भी एक छोटी मोटी हेडलाइट बना सकते हैं। अच्छा आगाज़ है काशिफ की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इमरान भट्ट ने बहुत प्रॉमिस शो किया था शुरू में जब पाकिस्तान टीम के लिए आए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अपनी फॉर्म को कैरी नहीं कर सके।
यहाँ पे जैसे आपने कहा एक अच्छा मौका है अब इस सीज़न को अच्छे तरीके से फिनिश करने का। ये आखिरी इनिंग होगी इस 4 डे टूर्नामेंट की, और जिस तरह की परफॉर्मेंस बलूचिस्तान ने दिखाई है तो कुछ इज्जत तो रखनी होगी, क्योंकि बैटिंग लाइन काफ़ी अच्छी है। इमरान बट, शान मसूद, इमामुल हक, और अच्छी खबर ये कि अजीम घुमन भी अभी हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। उमर अकमल शायद हमें ना देख सकें, लेकिन स्टिल काफ़ी फॉर्मेडेबल साइड है ये। रन्स मिल जाएंगे यहाँ पे, कलाइयों की मदद से अच्छी तरह खेला है ऑन साइड पे, 2 रन यकीनी हो जाएंगे। ऑफ द मार्क बलूचिस्तान, और इमरान बट इस एफर्ट के साथ दूसरी तरफ मौजूद हैं शान, जो कि बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेलकर पेविलियन में वापस गए थे। बैक टू बैक सेंचुरीज इन्होंने स्कोर किए हैं आज़म ट्रॉफी की पिछली दोनों इनिंग्स में, और गो के ये अपनी पर्सनल ट्रेजेडी के बायस दूर रहे इस पूरे टूर्नामेंट में फीचर ना कर सके, लेकिन जहाँ जहाँ आए हैं तो उन्होंने अपनी इस एहलियत का भरपूर सबूत दिया। और आमतौर पर आप इस गुंजाइश को देखते हैं कि 2 ओपनर्स आपके हैं अगर एक स्क्वाड में, तो आप तीसरे को साथ रख सकते हैं, तो उस दौड़ में भी ये मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर आप प्लेइंग 11 में जगह ना भी बना सकें, कम से कम स्क्वाड में मौजूद रहें, तो ये खुद एक कामयाबी। पहला ओवर मुकम्मल हुआ है बलूचिस्तान का, 2 बिना किसी नुकसान के। सौ 14 रन ट्रेल बलूचिस्तान की। और आज की हाईलाइट आज के दिन की रही एक सुपरस्टार इन मेकिंग, एक स्टार जिसे कहते हैं, स्टार इज बोर्न टुडे। मोहम्मद हुरैरा 311 रन की इनिंग के लिए, बहुत शानदार इनिंग के लिए, एक यंगस्टर के लिए 19 साल के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है अपने पहले फर्स्ट क्लास के करियर में इतनी बड़ी इनिंग खेलना। अतर महमूद अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने पहली इनिंग में, चाहेंगे कि रिपीट करें वैसी परफॉर्मेंस। 23 विकेट्स हासिल कर चुके हैं 9 मैचेस में अपने। नॉर्दर्न के नए बॉलर्स शानदार एरियाज में बॉल करते हैं, लेकिन लास्ट इनिंग में थोड़ा चूक गए थे, क्योंकि जब हमने देखा काशिफ भट्टी ने आके रन्स करना शुरू किए तो उनकी लेंथ बहुत जल्दी पीछे हो गई थी। यहाँ पे अच्छा मौका एक बार फिर से इस बलूचिस्तान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है इसको तोड़ा जा सके, क्योंकि ये बहुत फॉर्मेडेबल है। इसके बाद हम देखते हैं इमामुल हक को आना है, और उसके बाद हमें बैटिंग में इतना कुछ दिखाई नहीं देता है। स्विंग है लेकिन शानदार तरीके से गाइड किया है फाइनली की जाने, पहला रन शान मसूद के नाम। ऑब्वियसली इनको इमरान बट के साथ खेलकर उनको सिखाने का भी और लेकर चलने का बड़ा मौका हासिल होगा, मगर दूसरी तरफ नॉर्दर्न की टीम अपना अब पहला कदम तो रख ही चुकी है, दूसरा भी लगता है कि आधा जा चुका है फाइनल के लिए। और इनकी जो टीम की ख़ास बात यह है कि इनका अगर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं भी आता जो कि पाकिस्तान की जो लिमिटेड ओवर्स का स्क्वाड है उससे आए, तो भी एक बिल्कुल फॉर्मेडेबल एक जेल हुई टीम नज़र आती है। ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हैं, वैसे तो नुमान भी नौजवान लग रहे हैं, लेकिन ये जो लीडरशिप के अलावा कि आपको बहुत नज़र आती है, चाहे वो हुरैरा हो, विकेट कीपर रोहेल हो, उसके साथ साथ आपको एक बड़ी बहुत मुबस्सिर खान की सूरत नज़र आती है। ये बॉलर्स दोनों जो दोनों एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी शानदार इन्होंने बॉलिंग की है। बैकफुट पे शानदार तरीके से खेले, प्लेसमेंट शानदार है इमरान बट की जानिब से, 4 रन हासिल किया। अच्छी एफर्ट थी यहाँ पे उमर अमीन की जानिब से, लेकिन बहुत ही कमाल की टाइमिंग इमरान बट की जानिब से। ये खासियत है इमरान बट की, टाइमर बहुत शानदार है, प्लेसमेंट भी कमाल की करते हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान चाहेंगे कि एक अच्छा आगाज उनको दिया जाए इन ओपनर्स की जानिब से। देखिए बहुत जल्दी बैकफुट पे गए, पंच किया, प्लेसमेंट भी शानदार रही। जी हाँ, कवर्स का रीजन तो यूँ भी इनका फेवरेट है, बड़ी जल्दी इन्होंने पिक किया, बैकफुट पे जाकर उनको जो इत्मीनान हासिल हुआ होगा वो बड़ा फ़र्क तब्दील लेकर आ सकता है इस मैच में। अच्छा स्विंग हासिल किया, ये अच्छा एरिया है। अकील हम 5 मैचेस से बात कर रहे हैं कि इस पिच के ऊपर जो 5 मीटर का एरिया है वो बहुत ज़रूरी है बॉलर्स को हिट करना, बार बार कंसिस्टेंसी से। 1-2 बार करने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से अगर आप इस एरिया पे बॉल करते हैं तो आपको विकेट ज़रूर हासिल होती हैं। जैसा आपने अभी जिक्र किया कि नॉर्दर्न की बहुत यंग साइड है, और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मोहम्मद वसीम को जाता है, क्योंकि पहले साल कोच थे, उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी यंगस्टर्स को, और उनकी झलक नज़र आती है अभी भी। कैरी किया है एजाज अहमद जूनियर ने भी, 6 डेब्यूटेंट्स हमने देखे पहले नॉर्दर्न के लिए खेले इस टूर्नामेंट में। ओह ये शानदार डिलीवरी थी, उसी एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर कंसिस्टेंटली बॉलिंग करना होगी अकील।
यस, पहली इनिंग्स की ये बड़ी कारकर्दगी के बीमार थे अथर, और वैसे ही इन्होंने शुरुआत हासिल की है। खूबसूरत गेंद जिसमें पड़ने के बाद ये मूवमेंट हासिल की, किसी भी लम्हे पर इसकी लाइन में नहीं थे खेलने के लिए, ना प्रॉपर छोड़ सके और ना मुकम्मल खेल सके, जो कि शायद उनकी अब तक की टेस्ट परफॉर्मेंस को जो कि ज़्यादा हाईलाइट होती है उसकी कहानी रही है। और ये वो तमाम चीज़ें जो कि इस कॉम्पिटेटिव लेवल पे उनको ठीक करने का मौका भी मिलेगा। एक बार फिर शानदार डिलीवरी, ये बहुत बेहतरीन आगाज है अतर की जानिब से। कोई मौका नहीं इमरान बट के लिए इस बॉल को कैसे खेला जाए, क्योंकि ये वो लेंथ है जिसपे बैटर को लगता है कि वो फ्रंट फुट पे जा सकता है, लेकिन वहां से पढ़ने के बाद अगर आप बाहर निकाल सकते हैं इस शानदार तरीके से। देखिए ये पहले वाला जो कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, ये अच्छा आगाज है। बार बार इन्हीं एरियाज को हिट करना होगा अतर को। और ये आखिरी डिलीवरी, इसको किस तरह खेला जाए ये क्वेश्चन मार्क है। हर गुजरती गेंद के साथ बेहतर हो रहे हैं पहले ओवर में अथर, आखिरी गेंद करने के लिए। लाइन इस बार सही नहीं थी। फाइनल की जानिब खेल के 1 रन हासिल किया। 2 ओवर्स का इख्तिताम हुआ है, 7 बगैर किसी नुकसान के बलोचिस्तान। बलोचिस्तान की साइड की अगर हम बात करें, इमरान बट, शान मसूद, इमाम उल हक, अजीम घुम्मन, उमर अकमल, काफ़ी फॉर्मेडेबल बैटिंग साइड है। काशी भट्टी भी हमने देखा बहुत शानदार फॉर्म में, 50 रन की शानदार इनिंग खेली पहली इनिंग में। यासिर शाह भी सेंचुरी कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शामिल है। 88 मैचेस इमरान बट के लिए, 136 शान मसूद के लिए, 54 इमाम उल हक के। अजीम घुम्मन भी बहुत अरसे से टीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 102 मैचेस खेला, तो उमर अकमल ने 107 मैचेस खेल चुके हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस शामिल है। तो ये चाहेंगे कि एटलीस्ट अपनी रिस्पेक्ट के लिए इसको एटलीस्ट मैच को कल तक तो लेके जाया जाए। इमरान बट को तो यूं भी बलूचिस्तान से अब उनसियत सी हो जानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की टीम के लिए उन्होंने परफॉर्म किया था आपसे जो 2 सीज़न पहले इस नए फॉर्मेट के तहत ये पहला टूर्नामेंट खेला गया था, और उसमें उन्होंने टॉप स्कोर किया, जिसकी वजह से इनको ये रसाई हासिल हुई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरुआत, और फिर इनको जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेलने का मौका मिला, और जहाँ पर उन्होंने एक बड़े टेम्परामेंट और पेशेंस का मुजाहरा किया, लेकिन आपको फिर जाकर वो क्वेश्चन मार्क जो कि आज हुरैरा की इनिंग्स में नजर आया कि एक पॉजिटिविटी के साथ आपको रन स्कोर करते रहने चाहिए, और अगर नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं एक अच्छी गेंद पड़ जाती है जो कि आपकी विकेट का बायस बन सकती है। नहीं, ये लेंथ आसान है बैटर्स के लिए। अगर आप दूर बॉल करते रहेंगे तो बैकफुट पे आसानी से खेल सकते हैं। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर इस पिच पे अगर बैटर्स को आउट करना है तो आपको आगे बॉल करना होगा, कंसिस्टेंटली करना होगा। इमरान बट ने ये सीज़न बहुत शानदार तरीके से आगाज़ किया था कैप्टनसी के साथ, लेकिन उसके बाद काफ़ी मसाइल हो गए थे इनकी टीम में। टेप बॉल क्रिकेट एक और तरह की क्रिकेट है। मेरे ख्याल से मैं बारी ले आऊँ अपने इस सेशन के बाद वहाँ जाकर। सामान तो आपके पास मौजूद है सारा। गेंद नहीं थी, टेप मेरे पास रखी हुई है। ग्राउंड के बाहर भी क्रिकेट जारी। फिर शॉर्ट ऑफ द लेंथ, ये पार्ट ऑफ द प्लान भी हो सकता है। कभी कभी बॉलर सेटअप करते हैं बैटर्स को, पीछे खिलाते रहते हैं, फिर एकदम 1-2 बॉल आगे करते हैं, ड्राइव करवाते हैं। लेकिन जब ऐसा पिच आपके सामने हो, 600 रन दूसरी टीम ने की हो, तो बॉलर्स थोड़ा बैकफुट पे जरूर होते हैं, क्योंकि रन्स अवेलेबल हैं। अगर आप लेंथ पे चुकेंगे तो बैटर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है रन्स करने की। कप्तानी से आगाज किया था इस टूर्नामेंट का इमरान बट ने, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, मसाइल बढ़ते गए, ना कोच रहे ना कप्तान रहे, ना विकेट कीपर रहा, तो काफी कुछ मसाइल से दो चार रही है बलूचिस्तान की टीम। लेकिन वो नहीं हो सका कि मुश्किलात मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई, और आज के बाद आसान हो जाएंगी क्योंकि आखिरी मैच है, आखिरी इनिंग है। इसके बाद मेरा ख्याल है घरों को जाएंगे, रिलैक्स होके वापस दोबारा रीग्रुप करेंगे अपने आप को कि कैसा रहा सीजन, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। आई एम श्योर प्रोफेशनल है, मूव ऑन करेंगे टाइम के साथ। जी हाँ, और सीज़न में ये आपके जो फर्स्ट क्लास फॉर्मेट है वो तो ख़त्म होगा, लेकिन वनडे का बाकी है, जिसके लिए ऑब्वियसली कोचेस और लीडरशिप का किरदार मौजूद रहेगा। फिर लेंथ सही नहीं है, आसानी से खेल दिया है फाइनल की जानिब। एक और रन हासिल किया इमरान बट ने। यहाँ पे नॉर्दर्न को ये मैच जीतना होगा, क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ भी करते हैं और सिंध वहाँ से मैच जीत जाता है, तभी टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसीलिए शायद काफ़ी वक्त दिया है नोमान ने अपनी टीम को, अपने बॉलर्स को, कि बलूचिस्तान को आउट किया जाए। लेकिन जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बैटिंग बहुत शानदार है
बलूचिस्तान के जब भी अगर अप्लाई करने पे आ गए ये लोग तो कुछ भी हो सकता है। स्लिप कॉर्डन अभी भी एक दीवार बना हुआ है और काशिफ जो कि राइट हैंडर के लिए गेंद स्टंप्स की जानिब लेकर आते हैं, वो शान मसूद से गेंद बाहर की जानिब ले जाएंगे और अब चांसेस तो निकलेंगे। ये बात आप आंखें बंद करके भी कह सकते हैं जिस अंदाज की गेंदें करते हैं, लेकिन अगर इन चांसेस को ग्रैब ना कर सके तो फिर मसाइल पैदा हो भी सकते हैं। अदरवाइज एक बड़ा सफ़र है जो कि तय करना है बलोचिस्तान को। तो ये कैच के मुंतज़िर स्लिप कॉर्डन एक मरतबा फिर काशिफ गेंद करने के लिए। अच्छा बॉल था ये, बैक ऑफ द लाइन जरूर गिरा था लेकिन शान मसूद कवर नहीं कर सके लाइन को। 3 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 9 बगैर किसी नुकसान के बलूचिस्तान। तो खबरें आना शुरू हुई हैं एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, जहां पर अब मजमूई तौर पर 6 रन की बढ़तरी मिल गई है सिंध को जनूबी पंजाब के खिलाफ। पहले जो 75 रन की उनकी ओरिजिनल लीड थी उसको उन्होंने वाइप आउट कर लिया है, लेकिन एक बड़ा सफ़र और बहुत कम वक्त उनके लिए इसमें बाकी है जिसमें वो टारगेट सेट कर सकें और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंद करके वो विकेट्स हासिल करें। तो वहाँ पर उनके चांसेस मादूम है, यहाँ पर नॉर्दर्न के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन चीज़ें होते हुए देखी हमने खासतौर पहले सीज़न में बड़े ड्रामाई मुकाबले के बाद क्वालिफाई किया था नॉर्दर्न ने फाइनल तक पहुंचने के लिए यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और साइड बाय साइड ये तीनों मैचेस एक साथ खेले जाते हैं हर राउंड के, जो कि आपको ऑन योर टोस रखते हैं। कुछ रिलैक्स होने का मौका भी मिलता है, जैसे कि बलोचिस्तान के कोच हैं जो कि इस वक्त शायद कुछ कर नहीं सकते। जहाँ टफ मैच रहा है, पूरी बलोचिस्तान साइड के लिए टफ मैच रहा है, लेकिन किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, 4 डे मैचेस होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा विकेट कीपर तो कैरी करना है। अकील, आप मेक शिफ्ट विकेट कीपर्स के साथ 4 डे मैच नहीं खेल सकते। हमने देखा उमर अकमल ने किस्मत आजमाई विकेट कीपिंग में, अजीम घुम्मन ने आजमाई, जल्लाद खान ने आजमाई, और बेचारा रज़ाउल हसन ऑफ स्पिनर है, एज और आसानी से कैच ले लिया। पहली विकेट, पहली कामयाबी हासिल हुई यहाँ पे शान मसूद की सूरत में। उसी लाइन और उसी लेंथ की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, गिरा हुआ बॉल अतर ने कामयाबी हासिल की और इस तरीके से शान ने अपना कायद आज़म ट्रॉफी का सफ़र यहाँ पे इख्तिताम पसीर हुआ। उनका सिर्फ 1 रन बना सके, काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड था उनके इस इनिंग से, लेकिन अगले बॉल को ड्राइव मारने चले गए और अपनी विकेट गवा बैठे। कहने को तो 1 विकेट है, लेकिन उनको ये महसूस होगी 3-4 कामयाबियों के बराबर, चूंकि शान मसूद बैक टू बैक सेंचुरीज बनाने वाले और इसी ग्राउंड पर इसे पिछली इनिंग्स में शानदार इनिंग्स खेल कर गए थे, लेकिन अब ड्राइव करने की कोशिश में गए जो कि गेंद छोड़ी भी जा सकती थी, वो तैयार नहीं थे शॉट को खेलने के लिए। और दूसरी तरफ शानदार कैच लेकर जो बड़ी तेज़ी के साथ ट्रैवल करता हुआ पहुंच रहा था, इसको लेकर शान मसूद की अहम विकेट को हासिल कर लिया है। बलोचिस्तान का पहला नुकसान, शान मसूद आउट। इमामुल हक मैं आने वाले खिलाड़ी, बड़ी इनिंग की तवक्को है इससे, क्या बलूचिस्तान को जाते जाते कुछ इज्जत दिला सकेंगे, ये सवाल है। 3000 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं इस लेवल पे, 40 की अच्छी एवरेज है, 7 सेंचुरीज और 16 नेस्ट सेंचुरीज कर चुके हैं, 202 इनका हाईएस्ट है। बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किलफुल है। अप्लाई करना होगा अपने आप को, ठहर के खेलना होगा, अपनी बारी लेनी होगी, वेट करना होगा बुरे बॉल का, तभी रन्स मिलेंगे। और अब यहाँ से तो अकील मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मिशन ये होना चाहिए कि मैच को कल तक लेके जाया जाए, क्योंकि काफ़ी वक्त मौजूद है आज के दिन में भी, और जो अप्रोच हमें देखने को मिली है शान मसूद की जानिब से, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी में है। दोबारा बिस्मिल्लाह की शर्ट पहन के आए हैं, तो ये भांत की शर्ट्स को इस वक्त ज़ेबतन करते हुए इमामुल हक, इनका सीज़न बड़ा शानदार अंदाज से शुरू हुआ था इमामुल हक का, जिसके बाद उन्होंने रसाई भी हासिल की पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में, जो कि कुछ ख्याल के मुताबिक एक बड़ी उनके लिए कुछ खुशकिस्मती वाली कॉल थी, लेकिन बहरहाल वो टूर करके वापस आए हैं और उसके बाद अब अपनी आखिरी इनिंग्स को शुरू करने के लिए। ये बेहतर अप्रोच है। अगर बॉलर्स को यहाँ कंसिस्टेंट रहना है तो बैटर्स को कंसिस्टेंटली इन बॉलों को छोड़ना है, स्पेशली नए बॉल के साथ। अच्छी लाइन और लेंथ पे गिरा हुआ बॉल था, ऐसा ही कुछ बॉल था जो शान मसूद का हुआ था,
लेकिन उन्होंने सोचा कि ड्राइव मारा जाए और अपनी विकेट गंवाई जाए। इमामुल हक काफ़ी मैच्योर और काफ़ी सेंसिबल प्लेयर हैं। बैटिंग करनी आती है इनको, लंबी बैटिंग करनी आती है। देखिए उसी लाइन पे गिरा हुआ बॉल था, उसी लेंथ पे गिरा हुआ बॉल था, लेकिन शान ने डिसाइड किया कि वो ड्राइव मारेंगे। उसके बरक्स इमामुल हक ने सोचा कि उसको छोड़ दिया जाए। यही सही अप्रोच है। एक बार फिर अच्छी अप्रोच है, अच्छा आगाज है इमामुल हक के लिए। पहली इनिंग में अनलकी रहे थे जब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल लगा था, LBW करार दिया गया था उन्हें। यहाँ पे वो चाहेंगे कि एक बड़ी इनिंग से अख्तिताम किया जाए इस सीजन का। सब्स्टिट्यूट ज़ियाद खान ने कैच लिया और बड़ी तेज़ी के साथ गेंद ट्रैवल करती हुई पहुंच रही थी, लेकिन क्रेडिट देना होगा क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि ये ज़रूर एक इस वक्त चूंकि दोपहर के वक्त में मैच हो रहा है, फील्डर आए हैं अचानक से कोई 1.5 दिन के तातुल के बाद, तो तैयार रहना होगा तमाम कैचेस के लिए। ओह स्विंग हुआ ये इन स्विंग, ये बेहतरीन सेटअप है अतर की जानिब से। 3 बॉलें बाहर निकालने के बाद एक बॉल अंदर लेके आए हैं तेजी से। अच्छी क्रिकेट है, ये एक्सपेक्ट करेंगे आप नॉर्दर्न से। बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है उनके, क्योंकि बहुत अरसे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं नुमान अली। ये सेटअप अच्छा था, ये विद इन द लाइन पे हुआ बॉल, इनसाइड एज लगा, लकी रहे, क्योंकि इस लाइन और लेंथ पे अगर आपके पैड पे बॉल लगता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बचना आपका। चार स्लिप्स के साथ बॉलिंग कर रहे हैं अतर। गली में भी फील्डर मौजूद हैं, 3 स्लिप्स हैं गली है इनफैक्ट। चार ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 10 पर 1 बलोचिस्तान। That fuller length that got rid of Imran on that occasion. He got onto it very nicely. Just a solid punch, not much of a flourish with that follow through, but really nicely timed. This will give him plenty of confidence. Amir Saeed. That's a beautiful shot, that one. Excellent shape, balance and timing. Showing what Imran is capable of. Very positive at the top of the order usually. Goes for his shots. Finally, it's nice to see a regular wicketkeeper behind the stumps. That regulation collection that we take for granted. We just didn't see it in the Balochistan innings. Rohel Nazir enjoying himself, the northern lads. Shan Masood back in the pavilion. Balochistan 14 for 1 in the second innings. A century maker in the previous innings. Northern were able to get rid of him early. No ball from Kashif. Yeah, Shan Masood went for that expensive drive a little bit too early with that new ball. The no ball. Only wicket to fall, Shan Masood. Like I said, went for that expensive drive very earlier on in his innings. Took his time in the first innings before he could unleash those drives. But on the other hand, is very compact. Not going with that big flourish early doors in his innings. And that's how Shan Masood got himself out.
Nicely taken in the slips by Ziad Khan there. And one thing that we have been emphasizing throughout, you cannot play these expensive drives on this track, even on day 3 with the new ball, and Shan Masood paying the price for doing that. Looking to play it onto the onside of the leading edge. Imam Ul Haq losing his balance. And looking around the other grounds around the city as we watch this replay, Imam Ul Haq playing across the line, losing his balance. KP, who took a lead of 245 on the first innings, 249 for 4 declared, giving a target of 495 to Central Punjab. Like Northern here, probably they got their 1 foot firmly into that big final. Now the fuller delivery, almost an action replay of the previous ball. He's finding a bit of movement away from Imam, and he's unable to play those deliveries. They're swinging a bit late into the shot too early on both occasions. Imam getting that leading edge, lucky it didn't go in the air. Another common factor in the last 2 deliveries, his head way outside the line of that ball. Invariably he has to play around that front pad, the bat not coming down in a straight line. That's better. Got his head right on top of that one. Covered the bounce and the line of the ball very nicely. 16 for 1. And coming back to the scores, the other game between Sindh and Southern Punjab, Sindh conceding a lead of 75 have wiped that deficit off. They're 86 for 1 now with 9 runs ahead. They can seriously challenge the top 2 and spoil their party, but time is running out for them. They have to be really attacking and aggressive for the remaining part of this day and a half on the final, in the final round of this Quaid Azam Trophy season, the league stages. But watched it very nicely. It did seem away, but covered the line once again very nicely, and a single. Amir Saeed, looking at those scores, what do you make of the 2 favourites to go to the final? Well, first of all, if KP and Northern are to be challenged, Sindh needs to win that game outright. It would be a difficult job from this situation, but Northern, on the other hand, even though if they draw this game from here, they will be in the driving seat. If Sindh is unable to win their match, they will be through to the final. But I think Northern would like to keep that momentum going and go into that final with a win. Absolutely, that's ideal. But for Sindh to get into that final, they would either have to hope that Northern or KP either lose their matches or end up in a draw, one of them at least, and that will give Sindh an opportunity to go into the final. Northern and KP losing, very unlikely. The draw, maybe an outside chance, but not very likely as well. Those teams winning the games are the most probable result at the moment, but as we all know, game is not won or lost till the last ball or last run is scored. 2 full there. Too easy for Imam Ul Haq. Still couldn't find the gap. Yeah, there's 9 deliveries for Imam Ul Haq without getting off the mark. He's really been struggling with his balance. Got this one right out the mid of the bat.
Imam would love to get a score here. Got a failure in the first innings. A drop chance in the field as well. More than that, having toiled for 124 overs in the field, he would like to give some back to these Northern boys who made them chase leather. Once again, too much width on offer. Didn't quite come out the middle of the bat. Mubassir will get to it. Imam Ul Haq off the mark. One important factor when you're batting against a new ball on this track, even on day 3, it is to get these balls away. Score on these opportunities, the half volleys, the balls with width, and that is what Shan Masood showed in the first innings. Imam hasn't got his timing right yet. Erratic over from Athar so far, bowling either side of the wicket. 2 straight. Imam fails to find the gap again. 19 for 1. You make a good point, Amr, because runs will put the pressure back on the Northern bowlers. I know they're way ahead in the game. No bowler likes to get hit for boundaries, and in doing so, if you're able to change their line and lengths to where they're more defensive on this day 3 pitch, you can really profit as a batter. Yes, and also if you do not dismiss those half volleys or those bad balls, then you put extra pressure on yourself, and more times than not we've seen that batsmen play a false shot, just trying to get that scoreboard ticking. So to avoid putting extra pressure on yourself, it's better that you take advantage of any bad balls which are on offer. Another firm push down the ground. Didn't quite come off the middle of the bat, but this short boundary will help it go over it. Imran Butt is really looking good in that second innings. His balance is good. Weight transfer very nice. And if you're not playing expensive or out in front, you can still hit the balls on the up. Just look at that, close to his body, just a push in the end, and timed well. Not as well as he would have liked, but enough to get it to the boundary. He's got off to a very good start, Imran Butt. And like all previous round, we have to give testament and really acknowledge and appreciate. This is a wonderful cricketing pitch here at this SPP Sports Complex. Throughout the season, we've seen it has a little bit of something for everybody. Good spinners have got wickets on it, good fast bowlers, and the batters also. Still a little bit of seam movement. Imran Butt had to really adjust his stroke at the very last minute. Imran Butt has the capability to play long innings, and the thing is, look at that last delivery. That one moved away, and look at that back foot, squaring him up. But this time he managed it well.
And because he plays with that positive frame of mind, always looking for runs, always trying to take advantage of anything which is in his zone. So as long as he's on the wicket, that run rate will be good and it will be getting higher, because he likes to deal in boundaries, Imran. He's been able to put away the bad balls, because remember, Northern can afford to bowl aggressive lengths because they've got plenty of runs on the board. But one thing is very noticeable, like you mentioned in this over, the way he drags his right foot and shoulder across, pivots on it and squares himself up. Remember off air we were talking, he said you're really interested to see the test cricketers who've been playing for Pakistan, to see if their technique is a little different to your day in day out domestic cricketers. See if they have that refined improvement in their technique. At the moment, keep an eye on Imran Butt, and he's defending. If he's able to keep that side on position for most times than not. 7 gone, 23 for 1. And there you go. This match summary from UBL Sports Complex. 355, plays 110, and Khyber Pakhtunkhwa piled on the runs in the second innings as well. 249 for 4. Fakhar Zaman with half centuries in each innings has given them a target of 482. That was 495 at the beginning of their innings. Rizwan Hussain is batting on 8. How do you see this one going, Amar Saeed? I think Khyber Pakhtunkhwa are on top. It's again Imam. Hits at the fielder. A little bit of sloppy effort there in the field. Will not earn a boundary. This is third time in the last over and a half that Imam has faced. He's hit that fielder at extra cover. Omar Amin on that occasion couldn't prevent the runs. Khyber Pakhtunkhwa looks to be in a very good position to win that match. This time he found the gap. That fuller length. Athar is not perturbed, being driven down the ground. This is the first boundary for Imam ul Haq. That was a half volley. Look at that. 2 full. No fielders in front of square. That was easy pickings for Imam ul Haq. Earlier on, talking with Ali Yunus, went through with the list of quality openers around, in and around the setup. As we watch this one left alone, good bounce on that. Abdullah Shafiq and Abid Ali currently the holders of that opening spot in the national side. The likes of Haider Ali. This young man, Herrera, is an opening batter as well. And then Shan Masood, all in the reckoning. Once again, created that gap between bat and pad. Inside edge onto his pads.
Lucky on that occasion, Imam ul Haq. Nearly finding that gap between pad and pad. Driven and inside edge onto those pads. That is the area where Athar would be looking to bowl most of the times. Close to the stumps. This is one of his traits, Athar Mahmood. It's really close to those stumps. That's where if he gets a little bit of movement, he can be very dangerous. Doesn't create a big enough angle. He's not very tall, Athar, but he does get that bounce because he lands most of the deliveries on that seam. End of the 8th over, 29 for 1. Look at those two balls, left alone by Imam. Good length, and again same area, and Imam doing well to let it go. $29 for 1 as players take drinks. Very historic day today here at the State Bank Sports Complex. Young Herrera completing a triple hundred at the age of 19 years and 239 days. Joining Javed Miadad, who still remains the youngest at 17 years and 310 days. The coincidence is both these innings were in Karachi, and the total they ended up getting was 311. Of course, Javed Miadad getting that at the National Stadium in Karachi. The State Bank Sports Complex will also go down in history books because Herrera's knock
came at this venue. "47 years of a gap between these two knocks. And we all know what a fantastic career the great Javed Miandad had after that early success. For a long time he remained the youngest to get a double hundred in Test cricket as well. And he got it in his third test only against New Zealand. Same venue, National Stadium, Karachi. What a start for Herrera. To his pads, clipped away very nicely. Once again straight to the fielders. It looks like Northern have got their angles right. We discussed this when Balochistan were in the field. It was felt like quite a few of these things went unnoticed or unattended by the skipper. Northern is a completely different outfit though. Yes, definitely that is what the bowlers look for. At on a few occasions they do stray, the fielders help them out, and so does the captain with the right fields. Talking about the angles, don't forget the contribution of the wicketkeeper. He's normally the one who gets all these angles right. Balochistan didn't have that luxury either. Well, if you see this innings of Balochistan, Northern have bowled aggressively. They've bowled a fuller length just to get that movement, trying to get that wicket. But even then, they haven't given away too many opportunities to the Balochistan batsmen to score freely. Once again, that fuller length that you were talking about, getting Imran Butt to get onto that front foot. Run rate hovering just around 3 runs per over, which we saw in Northern's batting inning. It was always upwards of 4 after that very early stages. Two slips Ilagari and a short cover catching. It's better from Imran Butt as well. Keeping that nice side-on shape whilst defending. Yeah, it is yet to be seen that what happens when Imran is put under pressure. Usually when I've seen him get runs, even hundreds, he usually dominates from the start. That is how he likes to play. That is what his style is. But when he's put under pressure, let's see how he reacts. That's gorgeous. It's a delightful backward punch. The timing and placement was superb. Tantalizing chase for Mubassir. But he timed it sweetly enough to go over that rope. So that was a beautiful shot. Look at that. Getting on top of that bounce. And played it late again. He let the ball come onto the bat in the gap. 4 more runs for him. Two things to look for: the stroke from Imran Butt and the running from Imamul Haq. And Imran Butt, who on the first run he turned blind, the
then corrected himself on the second run. Imam probably already knew that it was going to go to the boundary. It was sweetly timed. Another thing Ty noticed, Imran is a test player, and look at, if you can see that again, look how he was running between the wickets. That is something you can only learn at a very early age. Look at that, he plays that shot on the offside, and when he finishes that first run, look at that, his back is towards the ball. Now the ideal would be that he would have had that bat in the other hand, facing the ball. So he knew the whole situation. But again, as I said, these things need to be worked on at a very, very early stage, in age cricket most probably. It's one of the very basics. You don't turn blind to the action. And whilst turning the way he did, he wasn't aware where the ball was and what was going to happen. Big shot, he got an edge. I think that saved him. Looked very, very straight. The appeal was aborted immediately. Imam really struggling with his balance once again. Got his head to the wrong side of the ball. He got lucky, he got an edge. That one pitched in line, came back a bit, and that bat, that edge, saved him. Otherwise, he would have been walking towards the pavilion certainly. Clearly struggling with that straighter line, falling over. More comfortable with this line and length, lets it go easily. Yeah, I can recall at least 3 previous instincts where Imam almost got a leading edge. His head was to the wrong side of the ball, and that was very, very close. This appeal hasn't hit his rhythm just yet with the bat. Once again, left alone by Imam. And have to see that if that last ball comes back in. He set him up with those 2 away swingers. He has been struggling with the one that comes back in. The way it works is you want the batter to drag his front foot out towards that off stump line to cover that line. But if we can get a perfect execution with the final delivery, we can really catch Imam off guard. His intent to work on that angle. Excellent over from Athar. 33 for 1. काशिफ अली बॉलिंग जारी रखेंगे। शानदार तरीके से आगाज किया इस ओवर का, कलाइयों का शानदार इस्तेमाल। 2 रन तो यकीनी होंगे और तीसरे रन के लिए भी वापस आ जाना चाहते थे इमामुल हक, लेकिन मना किया इमरान भट्ट ने।
मेरे साथ अली सलमान मौजूद हैं। अली, क्या कहेंगे इस मैच को? बलूचिस्तान की ट्रेल 281 रन किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ज़्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं है ये? जी हाँ, काफ़ी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस इमरान भट्ट मौजूद हैं जो विकेट पे रुक के खेलने की सलाहियत रखते हैं। इमामुल हक मौजूद हैं। अजीम घुम्मन को अब देखना होगा उमर अकमल के क्या वो बैटिंग कर सकेंगे या नहीं, लेकिन मुश्किल सूरत हाल से ज़रूर 2-4 है यहाँ पर। बलूचिस्तान की टीम एक बड़ी उनको खसार है 281 रन का, लेकिन यहाँ पे जितनी दाद दी जाए कम है। हुरैरा को, जो मियादाद के बाद दूसरे यंगेस्ट हैं, ट्रिपल सेंचुरियन बने हैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। जहाँ बहुत ही शानदार इनिंग रही हुरैरा की जानिब से, आपने अभी जिक्र किया, बहुत ही कमिटेड इनिंग थी ये, और इतनी मेच्योरिटी इस यंग एज में अगर आपके पास आ जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। अगर आप जिसका जिक्र कर रहे थे, जावेद मियादाद के बाद दूसरे नंबर पे आ गए, बहुत ही शानदार लिस्ट है ये। आफ्ताब बलोच, वहीद मिर्जा, हमजा कांची, हनीफ मोहम्मद इस लिस्ट में शामिल है, इम्तियाज अहमद और बाजीद खान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। एक प्राउड मोमेंट है ये। ज़बरदस्त ये स्टैट्स हैं। मियादाद ने नेशनल बैंक के खिलाफ 1974-75 के सीज़न में रन किए थे। उसके बाद फिर हुरैरा के लिए तो ये यादगार है ही है अली, हम सब के लिए भी यादगार है कि हमने इस मैच को कवर किया। अंदर आती हुई गेंद, दिफाई अंदाज से इस गेंद को इमरान भट्ट खेले। तो जब इस मैच का जिक्र होगा तो हमारी भी गोल्डन मेमोरीज़ में ये मैच रहेगा कि हमें भी एजाज़ हासिल हुआ, और हुरैरा ने इसको बड़ा ऑनरेबल हमारे लिए बना दिया कि हमें इस मैच को कवर करने का, प्रोडक्शन टीम को इसको की प्रोडक्शन करने का एजाज़ हासिल किया। स्क्रीन पे मौजूद हैं हुरैरा, जब आज से 10 साल 15 साल के बाद अपने ग्रैंड सन्स के साथ बैठेंगे, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद हुरैरा, तो यकीनन याद करेंगे। जब इस इनिंग की वो वीडियो क्लिप्स देखेंगे तो हमारी आवाज़ें जो है उनकी गोल्डन मेमोरीज का हिस्सा होंगी। यार मुझे तो 2 ट्रिपल सेंचुरीज देखने का इत्तेफाक हो। एहसान अली की इनिंग हमने कदाफी स्टेडियम में कवर की, बहुत शानदार इनिंग थी वो भी। और अगर हम रेट करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चूज करना कि कौन सी इनिंग बेहतर रही, क्योंकि एहसान अली ने भी बहुत कमाल की बैटिंग की थी कदाफी स्टेडियम में। देखिए, एहसान की इनिंग को मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रेट करूंगा क्योंकि जो बॉलिंग अटैक था उनके सामने वो बहुत अच्छा था। प्रॉपर कीपर पीछे खड़ा हुआ था, टीम में जान थी, टीम लड़के खेल रही थी उनके अगेंस्ट। यहाँ पे हुरैरा की इनिंग किसी तौर पे भी कम नहीं है, लेकिन अगर आप देखें, कंपैरिजन करें तो बलूचिस्तान का वो पेस अटैक नहीं था, टीम उस तरह से लड़के नहीं खेल रही थी। विकेट कीपर उनको एडवांटेज था कि अगर निकल के भी खेल सकते थे, अगर वो एज भी निकलता है तो कीपर के लिए चांस ही नहीं है कैच करने का। तो लेकिन क्रेडिट गोज टू हुरैरा, लेकिन एहसान की इनिंग को मैं थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट दूंगा। एक बार फिर कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया है, अच्छी कोशिश थी मूसा की जानिब से, लेकिन पूरी तरीके से बॉल रोक नहीं सके। 2 रन जरूर हासिल किए, यहाँ पे 3 रन का मौका जरूर था, लेकिन जल्दी नहीं है कोई बलूचिस्तान के बैटर्स को। और आप इस लिस्ट में हमने देखा, हनीफ मोहम्मद साहब की हमने बात की, 499 उनका फर्स्ट क्लास का पाकिस्तान का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। कल अपनी सालगिरह भी सेलिब्रेट करेंगे अगर ज़िंदा होते हनीफ मोहम्मद साहब, लेकिन हम सबको उनको अपनी यादों में याद रखना चाहिए कि क्या ज़बरदस्त एक आइकॉनिक फिगर थे लेट हनीफ मोहम्मद साहब। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाएं, और आमीन। बड़े एक ज़बरदस्त प्लेयर थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा उन पर फ़ख्र रहेगा। ये हनीफ मोहम्मद साहब का नाम आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। 23 साल 27 दिन की उम्र में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने जो इनिंग खेली थी 337 रन की, उस इनिंग की ये यादगार है जिसका यहाँ पे तस्करा हो रहा है। हमारे फेलो कमेंटेटर बाजिद खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बहुत ही शानदार ड्राइव किया है, फील्डर उतनी ही शानदार फील्डिंग। ये बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है हमें दोनों जानिब से। इमरान भट्ट का लाजवाब ड्राइव और उतनी अच्छी फील्डिंग उमर अमीन की जानिब से। देखिए, ये फील्डिंग कमिटमेंट हमें बलूचिस्तान से नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं एहसान की इनिंग को ज़्यादा रेट कर रहा था। जिस तरह से पाकिस्तान के 200वें टेस्ट क्रिकेटर हैं, 200 टेस्ट कैप है इनके पास, उमर अमीन के पास। पाकिस्तान के 7 टेस्ट क्रिकेटर थे मोहसिन कमाल, और ये 200वें टेस्ट क्रिकेटर हैं उमर अमीन। हाँ, लेकिन अगर अली हम दूसरे तरीके से सोचें तो यहाँ पे जो कंडीशंस थी, जो पिच की अगर हम बात करें, काफ़ी घास मौजूद था। एहसान ने फिर मैं वही बात करूँगा, बहुत मुश्किल है दोनों में से चूज़ करना, लेकिन वो पिच थोड़ा फ्लैट थी, थोड़ी स्लो थी, लेकिन ये पिच इसमें जान मौजूद थी, घास मौजूद था। और बॉलिंग की अगर आप बात करें, काशिफ भट्टी, यासिर शाह क्वालिटी स्पिनर्स हैं, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन टीम में ज़रूर शामिल थे। तो बहुत ही 19-20 शायद हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने अली। पैड्स पे गेंद लगी, अपील की थी, लेकिन अंपायर नासिर हुसैन को ये अपील मुतासर नहीं कर सकी। नासिर हुसैन की जानिब से लेग बाय का सिग्नल बड़ा मुतासर किया, एक तरफ अगर हुरैरा ने तो दूसरी तरफ अतर महमूद और काशिफ अली ने।
या बेहतरीन ओपनिंग पेयर है ये बैट बॉलर्स की जानिब से, अतर भी और काशिफ अली भी आगे बॉल पिच करते हैं। यही खासियत रही इनकी। पहले इनिंग में हमने देखा पहले घंटे में ही काफ़ी प्लेयर्स आउट किए थे, 4 विकेट्स हासिल की थी, क्योंकि आगे पिच करते हैं बॉलर। इस पिच में जो भी बॉलर आगे पिच करता है उसके लिए काफ़ी विकेट्स मौजूद हैं। इमामुल्लाह को अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना होगा, इमरान बट को अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना होगा, लंबे रन्स करने होंगे, बड़ी बारी लेनी होगी, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत पीछे है इस गेम में, अप्रोच में, कमिटमेंट लेवल में, मकसद में। और ये अच्छा मौका है कि आखिरी इनिंग फिनिश करें, सीज़न को अच्छे तरीके से फिनिश किया जाए। यही मकसद यहाँ से अब बलूचिस्तान की बैटर्स का हो सकता है। अभी हम श्योर नहीं है कि अजीम घुमन बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। लंच के टाइम पे हमें प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। आई होप वो बैटिंग पे ज़रूर आए। बलूचिस्तान के लिए एक अहम प्लेयर हैं वो भी। उमर अकमल तो शायद यकीनी तौर पे नहीं बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनका फ्रैक्चर, उनको रेस्ट बोला है 5 दिन का डॉक्टर ने। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के लिए एक अच्छा साइन है ये, फिनिश अच्छा करना चाहिए सीजन। जी हाँ बिल्कुल, इमाम को अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना होगा। ये लेफ्ट किया था इमाम ने, और इमाम इस अंदाज के बैट्समैन हैं, और साथ साथ इमरान बट के यहाँ पे इस मैच को अगर जीत नहीं तो ड्रॉ पे ज़रूर ले जा सकते हैं, लंबा अपने आप को क्रीज पे रख सकते हैं। यहाँ आसान नहीं होगा, क्योंकि ये क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है। इसके बाद नुमान अली को हम एक्शन में देखें, मोहम्मद मूसा भी इस अटैक में शामिल हैं, उमर अमीन भी हल्की सी बॉलिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लेवल शो करना होगा यहाँ पे इमामुल्लाह को और इमरान बट को। यो गेंद उसको दफा अंदाज से खेलने में कामयाब हुए इमामुल्लाह, और इतनी उम्दा फील्डिंग, और जिस कमिटमेंट की हम बात कर रहे थे उस कमिटमेंट का अमली तौर पे मुजाहरा किया यहाँ पे मौजूद नॉर्दर्न के फील्डर ने। एक अच्छी यंग टीम है नॉर्दर्न। ओ ये बाल बच गए, किस्मत साथ दे रही है इमामुल्लाह का। ये बहुत आसानी से विकेट्स पे जा सकता था बॉल, लेकिन खुशकिस्मत रहा इमामुल्लाह की, बॉल चला गया फाइन लेके जानिब, 2 रन हासिल किए। इनसाइड एज हुआ था ये, पढ़ने के बाद गेंद अंदर की जानिब आई, इसको ड्राइव करना चाहते थे इनसाइड एज, और गेंद इमाम और विकेटों के दरमियान से होती हुई फाइन लेग की जानिब। तो रन बनाने का मौका ज़रूर मिला, लेकिन ज़्यादा कोई एतमाद के साथ खेला गया स्ट्रोक नहीं था ये इमाम की जानिब से। शान मसूद वाहिद आउट होने वाले प्लेयर। गली में कैच हुआ था महमूद की बॉलिंग में, बहुत अनलाइक शान मसूद खेले। नए बॉल पे ऐसा खेलते नहीं है, बहुत करीब आने देते हैं बॉल को, लेकिन इस बार ड्राइव करने चले गए। और ये पिच हमने देखा है, नए बॉल से इस तरह से एक्सपेंसिव ड्राइव करने वाला पिच नहीं है, को वेट करना होता है बॉल के लिए। ये बेहतर अप्रोच है इमाम की जानिब से इस इनिंग में। अच्छा छोड़ रहे हैं, अच्छा डिफेंस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कमिटेड हैं। साथ साथ लाइन और लाइन बड़ी अच्छी मेंटेन की हुई है नॉर्दर्न के बॉलर ने, और अतर महमूद बड़ा अच्छा नए गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ काशिफ अली भी, बैट्समैन को काफ़ी मुश्किलात हैं। दोनों एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं इनके सामने, इमाम और इमरान बट, और लेकिन नौजवान पेसर्स अपने सलाहियतों का भरपूर अंदाज में इजहार करते हुए एक्सपीरियंस बैट्समैन के सामने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी कॉल इमरान बट की जानिब से। अगर आपको शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करना है तो बहुत जोर दरकार है आपको, क्योंकि स्पेस से इस लेंथ पे कुछ खास होने वाला है नहीं है। 12 ओवर्स का खेल इख्तिताम पसीर हुआ, 42 पर 1 बलूचिस्तान। इस वक्त बलूचिस्तान की कोशिश ये होगी कि वो जीत सोच ही नहीं रहे होंगे, वो सेशन टू सेशन सोच रहे होंगे कि अपनी साख के लिए खेलें, अपनी प्राइड के लिए खेलें, क्योंकि अजीम घुमन प्रॉपर फिट नहीं है, उमर अकमल जो उनके मेन बैटर हैं अजीम घुमन, दोनों ही प्रॉपर फिट नहीं है। तो बहुत भारी जिम्मेदारी है इस प्लेयर के कंधों पर, क्योंकि ये दोनों वो बैटर हैं कि जो बारह अपनी टीमों को इस किस्म की सिचुएशन से निकालने में कामयाब हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अजीम घुमन भी 102 मैचेस फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, उमर अकमल भी 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं। दोनों बहुत फॉर्मिडेबल बैटर्स हैं। बलूचिस्तान की मैनेजमेंट चाहेगी कि यहाँ पे एटलीस्ट जैसे आपने कहा प्राइड के लिए खेला जाए, क्योंकि जो मैच हमने अभी तक देखा है उसमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, हमें भी, देखने वालों को भी, खेलने वालों को भी। जो अप्रोच रही बलूचिस्तान की साइड की बहुत ही पुअर रही। ये अच्छा मौका है कि उसको थोड़ा बेहतर किया जा सके। अली जी हाँ बिल्कुल, और अगर इस मैच को ड्रॉ भी करने में कामयाब हो गई है
बलूचिस्तान की टीम, तो उनके जो कोच है राजहंस, अगर उनको हंसने का नहीं तो मुस्कुराने का मौका तो मिलेगा। मौका देखा नहीं है हमने, मैंने पिछले 2 दिन में उनको उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी है। और हमें लगा था जब 305 रन पहली इनिंग में कर लिए थे तो अच्छी पोजीशन ले ली थी इस मैच में, लेकिन जिसके बाद जो फील्डिंग अप्रोच रही, जो बॉलिंग की अप्रोच रही, जो कैप्टनसी भी थोड़ी एवरेज रही यासिर शाह की जानिब से, इस चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे लाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, जो है इस पूरे मैच में बलूचिस्तान की टीम बैकफुट पे रही है और उसमें कोच यकीनी तौर पे कुछ चीज़ें हैं जो कोच के कंट्रोल में भी नहीं है। आपके 2 मुस्तनद विकेट कीपर्स दोनों इंजर्ड हो गए, उसके बाद पार्ट टाइम विकेट कीपर जो अवेलेबल थे वो विकेट कीपिंग करने के लिए तैयार नहीं, और फिर आपको स्पिनर से विकेट कीपिंग करानी पड़ी, सब्स्टिट्यूट से विकेट कीपिंग करानी पड़ी, तो बहुत कुछ इस मैच में जो है वो बलूचिस्तान के खिलाफ गया। और यही वजह है कि राजहंस के चेहरे पर अब तक हंसी तो दूर, हमने मुस्कुराहट भी नहीं देखी। लेकिन अली सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या आप एक बैटर को जिसकी स्पेशलिटी बैटिंग है, जैसे इमाम उल्लाह का हम जिक्र करें, उमर अकमल का जिक्र करें, अजीम घुमन का जिक्र करें, जिनकी स्पेशलिटी बैटिंग है, वो लॉन्गर फॉर्मेट में 4 दिन के मैच के अंदर विकेट कीपिंग करवाना क्या उनसे जायज़ है? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि वो आप दूसरा विकेट कीपर कैरी नहीं कर रहे हैं साथ? मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की ज़्यादा गलती है, रादर देन आप प्लेयर्स को हम ब्लेम करें। आप क्या सोचते हैं? मेरी इस हवाले से बात हुई थी मैनेजमेंट से इनकी, और इनका ये कहना था कि उमर अकमल को हमने सेकंड विकेट कीपर के तौर पे लिया था, और उमर अकमल इस पर राजी भी थे कि सेकंड विकेट कीपर होंगे। इस तरह सदरन में हम देखते हैं कि ज़ीशान अशरफ आए हैं, सेकंड विकेट कीपर हैं, इसके अलावा उमर सिद्दीक भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, और इसके अलावा आज़म है। तो उन्होंने ये इनका कहना यही था, लेकिन उमर अकमल के अनफॉर्चुनेटली बॉल लगी, उसके बाद इनके मसाइल में इजाफा हुआ। अगर उमर अकमल की गेंद नहीं लगती, जो वंस इन अ ब्लू मून नहीं होता है, तो शायद इतने इनके मसाइल में इजाफा नहीं होता, फिर विकेटों के पीछे निकलने वाले चांसेस भी जो है वो कैच होते हैं, बैट्समैन पे ही थोड़ा दबाव होता है, स्टंपिंग का भी थोड़ा दबाव होता, तो बहुत कुछ इनके खिलाफ गया। ये अच्छा ड्राइव है, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए इमाम उल हक। अच्छी इंटेंट से बैटिंग कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द बैट से खेल रहे हैं, बहुत अहम इनिंग होने वाली है। चाहेंगे कि अपना जो सीजन है वो अच्छी इनिंग के साथ इख्तिताम करें। जी हम सोच सकते हैं, जैसे आपने कहा कि उमर अकमल को एज अ बैकअप विकेट कीपर खिलाया गया, लेकिन स्टिल मेरा मानना यही है कि जब आप 4 डे टूर्नामेंट खेलते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा विकेट कीपर, जहां 15 प्लेयर्स कैरी कर रहे हैं 16 कर लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा विकेट कीपर 4 डे क्रिकेट में तो होना आपके पास स्पेशलिस्ट बहुत ज़रूरी है। इस मरतबा ड्राइव किया, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद थे। रन इस वक्त नहीं सोच रहे होंगे, ज़रूरत इस अमर की है कि विकेट पे रुक के खेलें और टाइम को स्पेंड करें। हमने देखा कि सबसे पहले उमर अकमल ने विकेट कीपिंग की, फिर अजीम घुमन ने विकेट कीपिंग की, जल्लाद खान ने विकेट कीपिंग की, उसके बाद हमने रज़ा उल हसन से विकेट कीपिंग करते हुए देखा। ये बहुत जाती है। एक ऑफ स्पिनर जो कि 12th मैन है, बाहर बैठा हुआ है, जिसने कभी ज़िंदगी में विकेट कीपिंग की नहीं हो, उसे एक बड़े मैच में विकेट कीपिंग करवा देना तो शायद थोड़ी नाइंसाफ़ी है उसके साथ। बिल्कुल, अजीम घुमन ने भी कभी विकेट कीपिंग नहीं की और जल्लाद खान ने भी नहीं की, और जल्लाद ने तो कैच भी किया विकेटों के अकब में। और टीम की ज़रूरत थी, इस लिहाज से मैं इनको ज़रूर क्रेडिट दूंगा इन तीनों को कि इन्होंने अपने हाथ उठाए, और जब टीम को ज़रूरत थी तो इन्होंने लब्बैक का ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा 42 से 1 विकेट के नुकसान पर। और साथ साथ राजहंस के जिन्होंने वो काफ़ी ताख़ीर के बाद जो वो टीम की कोचिंग संभाली, तो आप इस लिहाज से भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, या उनको नहीं कह सकते, वो तो सेकंड 11 के साथ थे। या बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ये कसूर उनका नहीं है, उनसे पहले वाले कोचेस का है। फैसल इकबाल इससे पहले टीम के साथ मौजूद थे, ये उनका काम था कि आप सेकंड 11 से बेशक प्रमोट कीजिए, लेकिन विकेट कीपर एक्स्ट्रा ज़रूर साथ रखिए। ये तो थंब रूल होना चाहिए 4 डे क्रिकेट का। आप एक विकेट कीपर के साथ पूरा सीजन नहीं खेल सकते हैं। मोहम्मद मूसा अब आ गए हैं बॉलिंग करने, इमरान भट्ट को बॉल करेंगे। से बाहर गेंद इसको लेफ्ट किया, जाने दिया इमरान भट्ट ने। गुज़िश्ता इनिंग की नाकामी का अजाला करना होगा बलूचिस्तान के इन दोनों बैटर्स को, और दोनों टेस्ट क्रिकेटर हैं, अपने आप को साबित करना होगा। आगाज़ है अपने फर्स्ट क्लास करियर का, सिर्फ 16 मैचेस खेले हैं, 36 विकेट्स हासिल किए हैं मूसा ने, और कजाफी स्टेडियम में अपने पहला 5 इन्होंने किया था, 5 आउट किए थे। बहुत शानदार बॉलिंग की थी, स्लो एंड लो पिच पे बहुत ज़ोरदार जानदार बॉलिंग की थी वहाँ पे मूसा ने,
5 विकेट्स हासिल किए थे। यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी फेवरेबल हैं, लेकिन स्टिल आपको सही एरिया, सही चैनल्स में बॉल करना है, तभी विकेट्स मिलेंगे आपको। अच्छी गेंद और इतना ही दिफाई अंदाज से खेले इस मौके पे इमरान बट। अच्छा आगाज़ था मूसा का, उसके बाद थोड़ा सा ही ऑफ कलर हुए, पाकिस्तान टीम से भी ड्रॉप हुए, लेकिन मुस्तकबिल इन्हीं नौजवानों का है। अतर महमूद, मूसा, काशिफ इकबाल, हुरैरा, एहसान अली, साद खान, तैयब ताहिर, अम्माद आलम, तो इस टाइप के जितने भी प्लेयर्स सीज़न की दरियाफ्त है यकीनी तौर पे मुस्तकबिल इन्हीं का है। लेकिन एक बड़ा अलार्मिंग साइन है अली कि कोई हमें स्पिनर कोई अच्छा नज़र नहीं आया। ये यंग स्पिनर, अगर आप देखें नौमान अली काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, वो स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, काशिफ भट्टी कर रहे हैं, जाहिद महमूद हैं, इस यासिर शाह, स्पिनर हमें कोई अच्छा नज़र नहीं आया। और पाकिस्तान मशहूर है स्पिनर्स के लिए, ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन है। और ये फिर बच गए, एक बार बाल बचे हैं, 4 रन मिल जाएंगे इमरान बट को। ये बॉल बहुत आसानी से विकेट्स पे जा सकता था, लेकिन लक जो है वो थोड़ा बलूचिस्तान को फेवर जरूर कर रहा है। यहाँ पे दूसरी बाउंड्री हासिल की इमरान बट ने इनसाइड एज से, स्कोर पहुंच गया 40 रन पर। अंदर की तरफ आया, जैसे बहुत तेजी से बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ आया, थोड़ा लेट हो गए इमरान बट भी। जहां स्पिनर का आपने जिक्र किया, अली उस्मान शायद एक वाहिद स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर साउदर्न पंजाब से, जो उभर के सामने आए। उसके अलावा अगर आप पूछें तो मैंने जितने 10 मैचेस कवर किए हैं, ऐसा कोई नया उभरता हुआ नजर नहीं आया। ब्रार ने बॉलिंग की है, असगर हमें एक्शन में नजर आए, मुबस्सिर ऑफ स्पिन करते हुए नजर आए हमें, यासिर शाह इस मैच में नजर आए, काशिफ भट्टी ने विकेट्स किए, लेकिन ये सारे एस्टैब्लिश नाम है। कोई नया अगर हम बात करें तो हमें मायूसी हुई है। बिलाल आसिफ का है जो बांग्लादेश के टूर में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। बिलाल आसिफ हमें एक्शन में नजर नहीं आया, लेकिन बाकी तमाम प्लेयर्स ने अपनी टीमों को ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं कि सरफराज ने आके मैच खेला, इफ्तिखार ने मैचेस खेले, फ़खर जमान ने आके मैच खेला, तो लेकिन बिलाल आसिफ हमें नजर नहीं आए। यार खबर तो ये भी है कि केपी की टीम बहुत स्ट्रांग होने वाली है फाइनल के लिए। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो खबरें आ रही हैं कि शायद रिजवान और शाहीन शाह को भी हम एक्शन में देखें फाइनल के लिए। ये बहुत अच्छा साइन होगा, बहुत कमाल का फाइनल होगा अगर वो दोनों प्लेयर्स भी केपी को ज्वाइन कर लेते हैं। और सूरत हाल तो ऐसी लग रही है अली कि जैसे नॉर्दर्न और केपी का फाइनल होने वाला है, क्योंकि सिंध थोड़ा पीछे रह गया है शायद दौड़ से। पता नहीं कितनी टीमें बदलेंगी इस फाइनल के लिए, कितनी चेंजेस होंगी और कहाँ कहाँ चेंजेस होंगी, कुछ पता नहीं। जो कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है, फाइनल स्क्वाड क्या होगा। स्टार आ जाएंगे सारे। दिफाई अंदाज से खेल रहे, दिफाई अंदाज से खेल रहे। 14 ओवर मुकम्मल, 46 पर 1। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को भी इस लिहाज से कह रहा हूँ क्योंकि जब स्टार आ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें भी जो है वो फिर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो मेरा अपना भी जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा जब स्टार्स आके स्टडेड फाइनल होगा। अच्छा, डेफिनेटली फाइनल की इंटेंशन सब डिफरेंट होता है, और जब बड़े प्लेयर्स होते हैं तो नेचुरली हमें बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलती है। एक तरफ अगर केपी होता है तो दूसरी तरफ यंग साइड होगी नॉर्दर्न की, बहुत ही एक्साइटिंग फाइनल हो सकता है। अभी मैं वक्त से पहले कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी असम्पशन है मेरी, क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं, क्योंकि सिंध बहुत पीछे है, मुझे ये मैच नॉर्दर्न हारता हुआ दिख नहीं रहा है। बलूचिस्तान ने केपी ने बहुत बड़ी लीड हासिल कर ली है सेंट्रल के अगेंस्ट, वो भी मुझे लगता है वहाँ से मैच जीत जाएंगे। यहाँ से नॉर्दर्न एटलीस्ट हार नहीं सकता, 270 रन की ट्रेल है अभी। तो जो सिचुएशन है, जो पॉइंट्स टेबल पे हालात हैं, नॉर्दर्न 135 के साथ सैर फहरिस्त हैं, उसके बाद केपी 134 के बाद सिंध तीसरे नंबर में 127 पॉइंट्स के साथ। इन तीनों टीमों के माबैन मुकाबला था, तो ऐसा लगता है जैसे नॉर्दर्न और केपी काफ़ी फेवरेट्स हैं फाइनल के लिए। मुबस्सिर खान अब आ गए हैं बॉल करने, और पहले ही बॉल पे कदमों का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा टाइमिंग मौजूद नहीं थी, लेकिन स्टिल 6 रन हो जाएंगे। बहुत ही कमाल बैटिंग है ये। ऐसा लगा था जैसे हवा में बॉल ज़्यादा एलिवेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इतनी फोर्सफुल शॉट था कि वो बॉल बाउंड्री के लाइन के बाहर चला गया 6 रन के लिए। 6 रन का सिग्नल अंपायर कैसर वहीद की जानिब से। पहली गेंद पे इस्तकबाल किया, वार्म वेलकम किया इमामुल हक ने मुबस्सिर को, और छक्के के साथ ही 50 रन भी मुकम्मल हुए बलूचिस्तान के। ऐसा लगता है कि इमाम ने सोच लिया है कि मुबस्सिर को सेट नहीं होने देना।
उनका रिदम नहीं बनने देना है, लाइन और लेंथ नहीं बनने देनी है। 22 विकेट्स हासिल कर चुके अपने करियर में, एक बार 5 विकेट्स भी हासिल किए एक इनिंग में, इसी टूर्नामेंट में, इसी कराची लेग में उन्होंने विकेट्स हासिल की 6। ये नेशनल के ग्राउंड पे बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी मुबस्सिर ने, दिफाई अंदाज से खेलें, अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है मुबस्सिर, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बैटर हैं, अच्छे बॉलर हैं, कम उम्र है, काफ़ी सीखने को मिलेगा यकीनन इनको। और ये अच्छा साइन है अगर आपके टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा बैटर है जो बॉलिंग कर सकता है। एक दफा फिर कदमों का इस्तेमाल, खुशकिस्मत रहे कि गेंद विकेट कीपर तक कैरी नहीं कर सकी और पिछले पाँव पे लगी इमाम के। स्पिन देखने को मिला है हमें मुबस्सिर की जानिब से, ये थोड़ा अनयूजुअल है इस पिच के मुताबिक है। देखिए पढ़ने के बाद स्पिन हुआ है और थोड़ा तेज स्पिन हुआ है, इसीलिए बीट हो गए इमामुल हक। पहली गेंद पे 6 रन्स के बाद अच्छा कमबैक किया है इस ओवर में मुबस्सिर ने। अच्छा मुकाबला है ये, क्योंकि इमामुल हक नहीं सेटल होने देंगे। कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अच्छी अप्रोच है, पिच ऑफ द बॉल पे पहुंच रहे हैं। 15 ओवर्स का इख्तिताम हुआ 52 पर 1 और अंपायर्स का हमें डिसीजन देखना होगा क्योंकि चाय का वक्फा बहुत करीब है यहाँ से, लेकिन अभी शायद एक आधा ओवर और हो सकता है। ये देखिए, ये कोई बैडमिंटन का कोई नेट नहीं है, कोई बैडमिंटन का कोर्ट नहीं है, बल्कि वो नेट है कि जो इस वक्त ग्राउंड के बाहर गेंद को जाने से रोकने के लिए बनाया है। जिस तरह शटल कॉक इस नेट में फंसी हुई है, इसी तरह बलूचिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल में फंसी हुई है। ऐसी ही किसी पंच लाइन का इंतजार था मुझे। और ये देखें गेंद भी फंसी हुई है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फंसा हुआ ही है। बलूचिस्तान भी फंसा हुआ है इस मैच की इस मुश्किल सिचुएशन में, विकेट कीपर भी फंसे हुए हैं और गेंदें भी फंसी हुई नजर आई हैं आपको, शटल कॉक भी फंसी हुई नजर आई है। आजाद है तो सिर्फ हम लोग, जो दिल चाहे बोल दें, बोल के लब आजाद हैं तेरे। आप आज बहुत अटैकिंग मोड में हैं, आज आपसे बात करना खतरे से खाली नहीं है। और जिस तरह हाथों पे चोट लग रही है, एक हाथ दूसरे हाथ में भी फंसा हुआ है। जब चोट लगती है तो जो मजरूब है, जो जख्मी है, वो दूसरे हाथ में अपने हाथ की उंगलियों को फंसा लेता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ये बड़े जबरदस्त, ये देख सकते हैं जिस अंदाज से मूसा ने, आप बात करते हैं मूसा की फाइफर के हवाले से। ये कजाफी स्टेडियम इनका स्पेल था, बहुत शानदार स्पेल था, ये बहुत तेज बॉलिंग की थी इन्होंने, क्योंकि स्लो और लो पिच थी कजाफी स्टेडियम में, और उस पिच पे इस तरीके से बॉलिंग करना बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। ये बॉल बहुत शानदार था, जब मोहम्मद साद को कोई मौका नहीं मोहम्मद साद के लिए, और ऐसी पिच के ऊपर अली जब आप इतनी तेज बॉलिंग करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई हो जाता है। एनर्जी बड़ी जबरदस्त रही है मूसा की, और ये काफी खुश आइंद है। जहाँ कजाफी स्टेडियम में तो रिवर्स स्विंग देखने को मिला था हमें मूसा की जानिब से। लास्ट विकेट अगर हम देखें जिस तरीके से मोहम्मद साद आउट हुए थे, बहुत पढ़ के तेजी से अंदर की तरफ आया। रिवर्स स्विंग के लिए एक्शन बहुत शानदार है इनका, पेस भी कमाल की है, बहुत ही शानदार प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, ये अच्छा फ्यूचर है इनका। लेकिन थोड़ा अली अनलकी रहे कि पिक नहीं हो सके PSL के ड्राफ्ट में, क्योंकि अच्छी पेस शामिल है, अच्छे बॉलर हैं, मतलब सरप्राइजिंग था मेरे लिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, कई अच्छे प्लेयर जो हैं वो पिक नहीं हो सके और मूसा उनमें से एक हैं। सोहेल खान भी पिक नहीं हुए, सोहेल खान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बैट और बॉल दोनों शोबों में दी, सोहेल खान भी पिक नहीं हो सके, अहमद शहजाद भी पिक नहीं हो सके। इसके अलावा आगा सलमान का आप तस्करा कर रहे हैं, आगा सलमान जो लाहौर कलंदर के लिए माजी में खेलते रहे। तैयब ताहिर के लिए सीज़न बड़ा अच्छा गया, तैयब ताहिर पिक नहीं हुए, तो काफ़ी प्लेयर नहीं हुए, लेकिन कुछ अच्छे भी प्लेयर पिक हुए, जैसे अतर महमूद हैं वो पिक हुए। इसके साथ साथ एहसान अली एमर्जिंग कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए पिक हुए, तो कुछ अच्छी पिक्स भी हुई हैं। बंगल से पिक हुए जो अंडर 19 के स्क्वाड में हिस्सा है पाकिस्तान अंडर 19 का। जी, और आप जैसे 2 सप्लीमेंट्री और प्लेयर्स आप पिक कर सकते हैं, विंडो खुलेगी जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो होप डेफिनेटली इन जो परफॉर्मर्स हैं कायद आज़म ट्रॉफी के, उनको काफ़ी होप मिली होगी इस ऐलान से, और हम चाहेंगे कि ये जो परफॉर्मर्स हैं कायद आज़म ट्रॉफी के, इनको ज़रूर पिक किया जाए। अच्छा शॉट है, शानदार तरीके से खेले हैं, गैप मौजूद था लेकिन उतनी टाइमिंग अच्छी नहीं थी,
अतर महमूद ने अच्छे तरीके से कवर किया। इमाम अच्छे लग रहे हैं आज बैटिंग में, अच्छी टाइमिंग से बैट कर रहे हैं। तो नॉर्दर्न की एक चीज़ ने जो इंस्पायर किया मुझे वो उनकी कमिटमेंट है, ये जानते हुए कि 262 रन की लीड है, एक बड़ी लीड है नॉर्दर्न को, लेकिन उसके बावजूद फील्डिंग एफर्ट्स देखें, चाहे एक्सपीरियंस उमर अमीन हो, चाहे नौजवान अतर महमूद हो, चाहे रोहिल नज़ीर विकेटों के अकब में हो, बड़ी ज़बरदस्त है। नौमान अली, जो फील्डिंग एफर्ट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। क्या मकसद दोनों टीमों के बहुत मुख्तलिफ हैं। बलोचिस्तान का मकसद है किसी तरीके से ये मैच गुजारा जाए, नॉर्दर्न का मकसद है कि मैच जीता जाए और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जाए। तो वो इंटेंट मकसद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि बलूचिस्तान का जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे, उनके लिए बेहतरीन रिजल्ट यही हो सकता है कि इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज जो हैं वो बेहतर हो सकें, थोड़ा अच्छे मौके पे ये इख्तिताम कर सकें इस सीज़न का। इमरान बट बड़े रन्स करें, इमामुल हक बड़े रन्स करें, अजीम घुमन रन्स करें, तो बेहतर तरीके से एंड कर सकते हैं अपना सीज़न। दूसरी जानिब नॉर्दर्न के लिए काफ़ी कुछ है, उनको फाइनल खेलना है, क्वालिफाई करना है, और जैसे वो मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, आई थिंक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है नॉर्दर्न की जानिब से। जी हाँ, जिस तरह बलूचिस्तान से ठंडी हवाएं आती हैं, इसी तरह परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ठंड आई हुई है, तो कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी होनी चाहिए परफॉर्मेंस में अली। जी यहाँ गर्मा गर्मी हमें ऑफ द फील्ड लगी, कंट्रोवर्सी से भरी हुई टीम। वाह, ये लाजवाब ड्राइव है, लेकिन सीधा नौमान के हाथ में। बड़ी अच्छी तरीके से टाइम और मेडल कर रहे हैं ये दोनों बैटर्स। जी अच्छी एक हारी हुई जंग जिसको कहते हैं उर्दू में, एक हारी हुई जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस मैच को अपने में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही इनसे एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है। अगर इनमें से एक प्लेयर भी अगर ज़्यादा देर खड़ा हो गया, हुरैरा जैसी इनिंग खेलने में कामयाब हुआ, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। दूसरी इनिंग में क्लैश भी कर सकती है नॉर्दर्न, तो बहुत कुछ इस मैच में अभी बाकी, इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं आपके, ये मैच अभी ख़त्म हो गया टिल द लास्ट बॉल। बहुत पॉजिटिव सोच है अली आपकी, शानदार। शानदार तरीके से मिडल किया है, और वैसे भी मैं तो आपकी प्रेडिक्शंस का फैन हूँ अली, बेहतरीन फेलो कमेंटेटर हैं आप। इसके साथ 16 ओवर्स का खेल इख्तिताम पजीर हुआ, 54 पर 1 बलूचिस्तान, और अंपायर्स ने शायद सिग्नल दे दिया है कि चाय का वक्फा हो जाएगा यहाँ पे तीसरे दिन स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे नॉर्दर्न की जो बर्तरी है वो 262 रन की है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे बलूचिस्तान के लिए सर्वाइव करना और इसका मैच में कम बैक करना। जी हाँ, यहाँ पे टी ब्रेक और टी ब्रेक तक अच्छी सूरत हाल है बलूचिस्तान के लिए। 54 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। अब आखिरी सेशन होगा और इन दोनों एक्सपीरियंस बैटर्स की कोशिश होगी कि इस आखिरी सेशन को किस तरह निकालें, और कल के दिन जो है वो ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से बलूचिस्तान 2-4 ना हो। अब तक का ये सेशन जो है मैं समझता हूँ ये वाहिद सेशन है जो अब तक बलूचिस्तान के नाम रहा कि जहाँ मौका नहीं दिया नॉर्दर्न को डोमिनेट करने का। इमरान बट और इमामुल हक ग्राउंड से बाहर जाते हुए, तालियों की आवाज़ यकीनन आपको आ रही होगी जो इनकी हौसला अफजाई के लिए का बाइस है। यहाँ ये अच्छा सेशन रहा है बलूचिस्तान के लिए। जो मुश्किल वक्त है जो अर्ली ऑन नए बॉल के साथ हम देखने को मिलता है हमें बैटर्स के लिए, वो गुजार लिया है। 103 रन बने अच्छी रन रेट से, 2 विकेट से गवाई हैं। तो इस वक्त यहाँ पर जो स्कोर है 54 1 विकेट के नुकसान पे 10 रन के स्कोर पे शान मसूद आउट हुए। यहाँ पे है चाय का वक्फा। चाय के वक्फे के बाद जैसे ही खेल का आगाज होगा इस मैच के लाइव एक्शन के साथ आपको खुश आमदीद कहेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सलमान एक दफ़ा फिर स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से खुशामदीद कहता है इस लाइव मैच में कि जहां पर इस वक्त बलूचिस्तान की टीम ने दूसरी इनिंग में 54 रन स्कोर किए 1 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली नॉर्दर्न की जानिब से, जहां पर 621 रन स्कोर किए गए 4 विकेटों के नुकसान पर। 311 रन की इनिंग खेली मोहम्मद हुरैरा ने। बलूचिस्तान की दूसरी इनिंग में 1 विकेट गिर चुकी है शान मसूद की सूरत में, जो 10 के मजमूई स्कोर पर अथर महमूद की गेंद पर मुतबादिल खिलाड़ी के हाथों आउट हुए। इमरान बट और इमामुल हक इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और मेरे पार्टनर ने कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान के अंडर 19 के फॉर्मर कैप्टन, एक ऐसा टैलेंट कि जो शायद ज़्यादा पाकिस्तानी खिदमत कर सकता था, अहमर सईद। वेलकम अहमर। शुक्रिया अली सलमान और तमाम नाजरीन को शाम बखैर। इमरान बट और इमामुल हक के कंधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी, 262 रन के खसारे को ना सिर्फ उतारना है और अपने आप को क्रीज पे मौजूद रखना है, क्योंकि अजीम गुम्मन प्रॉपर फिट नहीं, उमर अकमल शायद बैटिंग ना कर सके, उनको 5 दिन का रेस्ट बताया था, तो अब बड़ी भारी जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर। अहमर, क्या इस वक्त सोच होगी इन दोनों की एज ए बैट्समैन, क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या सोच होनी चाहिए? देखिए जी, दोनों टेस्ट बैट्समैन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। मुस्बत सोच न रखना तो जुल्म होगा अपने ही टैलेंट के साथ। मेरे ख्याल से इनकी भरपूर कोशिश ये रहेगी कि आज का दिन तो कम से कम बगैर किसी नुकसान के गुजारा जाए। और अगर आप इनकी बैटिंग लाइन देखें अली, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इनको नहीं होनी चाहिए मैच बचाने में, अगर आप टैलेंट के हिसाब से देखें। और इस मरतबा गेंद थोड़ी देर हवा में रही, पॉइंट के फील्डर के पास कैच का मौका नहीं। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, ऑफ से बाहर गेंद कट किया पिछले कदमों पे जाके इमामुल हक ने, और इमामुल हक स्ट्रोक्स खेलने से चूक नहीं रहे, बिलखुसूस मुबस्सिर के सामने। देखिए थोड़ी सी जगह इनको मिली थी, कट मारा एयर में थी, और नुमान जो कि पॉइंट पे खड़े उनसे खासी दूर। मायूस नजर आ रहे हैं बॉलर, लेकिन रिप्ले से साफ जाहिर है कि खासी दूर पॉइंट के फील्डर से 4 रन हासिल किए इमाम ने। इस वक्त फिर गेंद हवा में रही, अगर से लिमिट ऑफ पे कोई फील्डर होता तो यकीनन मुश्किल से 2-4 हो सकते थे। इमामुल हक स्ट्रोक्स खेलने से चूक नहीं रहे, इमाम अनसेटल करना चाहते हैं मुबस्सिर को। अमूमन बैट्समैन आजकल वाइट बॉल क्रिकेट की ज्यादती की वजह से दिफा का बेहतरीन अंदाज जो है वो जारहाना अंदाज ही को समझते हैं। इस मरतबा ज़्यादा बेहतर अंदाज से खेले इमाम, और इस विकेट पर, इस पिच पर फास्ट बॉलर्स के मुकाबले में स्पिनर्स पे ही जारहाना अंदाज अपनाया जा सकता है। इस मरतबा अच्छी फील्डिंग की थी पॉइंट पे मौजूद फील्डर ने, और रन बनाने से बाज रखा। अच्छा कट किया था बैक फुट पे जाने के बाद इमाम ने। ओवर मुकम्मल हुआ मुबस्सिर का। एक बार फिर थोड़ी सी शॉट कट मारना, लेकिन कैप न तलाश कर सके। अच्छी फील्डिंग। कराची का मौसम इंतहाई मोतदल क्रिकेट के लिए बिल्कुल आइडियल है ये वेदर है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। सूरज में भी ज़्यादा उसमें तमाज़त नहीं। इमरान बट 33 रन के साथ हैं, इमामुल हक 22 रन के साथ, 58 1 विकेट के नुकसान पर। और इन दोनों के बाद अजीम गुम्मन, उमर अकमल जो अगले 2 बैटर्स हैं वो प्रॉपर फिट नहीं है, तैमूर अली, और उसके बाद फिर बॉलर्स की आवत का सिलसिला होगा। शॉर्ट बॉल, नो बॉल का सिग्नल पुल किया यहाँ पे इमरान बट ने, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, तो 5 रन का इजाफा स्कोर में।
अंपायर नासिर हुसैन की जानिब से 4 रन का सिग्नल, प्रोफेसर नासिर हुसैन 4 रन का सिग्नल देते हुए। मूसा अब तक की जो कारकर्दगी है मायूस कौन रही है इस वक्त। देखिए नो बॉल, बहुत पीछे बॉल, बड़ा वक्त मिला इमरान को बैक फुट पे जाके पुल खेलने का। मूसा ना तो वो लेंथ अभी तक तलाश कर पाए जिसपे बैट्समैन को मुश्किलात में डाल सकें, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा पेस से मैं देख रहा हूँ कि बॉल कर रहे हैं। कोई जो एक्स फैक्टर हम समझ रहे थे कि इनकी बॉलिंग से होगा, वो अभी तक नज़र नहीं आया। दिफाई अंदाज से खेले इस मौके पर 1 रन के लिए। इस किस्म के सिंगल्स बड़े ज़रूरी हैं दबाव को कम करने के लिए। और जिस एंड पे इस वक्त अंपायर नासिर हुसैन खड़े हैं, इससे पहले यहाँ पर इम्तियाज़ इकबाल अंपायरिंग करते रहेंगे गुज़िश्ता मैचेस में। नासिर हुसैन जो बुनियादी तौर पे प्रोफेसर हैं, बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं ये, और इन्होंने एमफिल जो किया हुआ है एनवायरनमेंट में किया हुआ है। इससे पहले इम्तियाज़ इकबाल जो अंपायरिंग कर रहे थे इस एंड पे खड़े होकर, वो साइंस टीचर हैं, तो ऐसा लगता है ये जो एंड है ये साइंस के असातिज़ा के नाम है। कैसर वहीद हैं और ये मैच रेफरी नदीम अरशद हैं। शॉर्ट बॉल इस मरतबा कट किया यहाँ पे पॉइंट के फील्डर गेंद के पीछे, गेंद के साथ रेस लगाते हुए उमर अमीन, लेकिन गेंद तक पहुंचने में कामयाब नहीं, और दीवारों से सर टकराना आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ दीवार से जाके खुद टकरा गए उमर अमीन। एक बार फिर मूसा जो है वो शॉर्ट साइड पे बॉल करते हुए, और ये अक्सर हमने देखा है कि जब भी इस लेंथ पे बॉल गिरती है तो बहुत वक्त मिल जाता है बैट्समैन को, और इस बार अच्छा शॉट इमाम का। अच्छा स्ट्रोक था इस मौके पर, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अंदर आती हुई गेंद इस मरतबा दिफाई अंदाज से खेले और रन बनाने का मौका नहीं मिल सका। मूसा ने अब तक किया तो बहुत पीछे बॉल किए हैं, या बहुत ही मुंह पे बॉल गिरा देते हैं बैट्समैन के। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही अब तक मूसा से निपटने में दोनों बैट्समैनों को। इस मरतबा अंदर आती हुई गेंद उसको कट करना चाहते थे इमाम ख़तरनाक अंदाज से। इस मौके पर इस किस्म का रिस्क लेना बेहतर नहीं होगा इमाम और बलूचिस्तान के लिए। अंदर आती हुई गेंद उसको दिफाई अंदाज से खेले, मैनेज किया, अच्छा मैनेज किया एट द एंड। यहाँ तकरीबन यॉर्कर लेंथ पे बॉल थी ये, सही वक्त पे बल्ला नीचे लाए इमाम। इब्तिदा में कट करने गए थे, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हात में अपने इरादे को तब्दील किया। गेंद की लाइन और लेंथ को देखते हुए इमामुल हक ने शॉर्ट कवर्स में फील्डर मौजूद। सरमद भट्टी एक और सेंचुरियन बैट्समैन इस मैच के, 135 रन की इनिंग खेली थी सरमद भट्टी ने। अली हालांकि इमाम जो है वो 200 रन की एक इनिंग खेल चुके हैं इस सीज़न में, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा टच में नज़र नहीं आ रहे। या आप अगर देखें हाफ वॉलीज, जिसको अगर पिछली शान मसूद की इनिंग या हुरैरा की इनिंग्स देखी जाए तो इन बॉलों पे बहुत ही ज़्यादा उनका फ़ायदा उठाया है इन दोनों बैट्समैनों ने, लेकिन इमाम की टाइमिंग अभी तक वो नहीं लग रही जिसके लिए जाने जाते हैं। एक और अच्छा यॉर्कर, उतने उम्दा मैनेज किया मूसा की तेज़ यॉर्कर, उसको मैनेज करने में कामयाब हुए इमाम। ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा 69 पर 1। मुबस्सिर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे।
इमाम को थोड़ी उन्होंने लूज बॉल ज़रूर की है, लेकिन जो बॉल उन्होंने थोड़ी सी फ्लाइट की है वहाँ से एक आध बॉल हमने देखा उनको थोड़ी स्पिन भी मिल रही थी, जहाँ इमाम ड्राइव मारने गए और बॉल थोड़ी सी हवा में रही। मुबस्सिर कंटिन्यू करेंगे अपनी बॉलिंग को और इस ओवर में अब इमरान भट्ट सामना करेंगे। सरवत भट्टी ने इस गेंद को फील्ड किया। 135 रन की इनिंग सरमत भट्टी की, 311 रन की इनिंग हुरैरा की, 190 रन की इनिंग शान मसूद की। इस मैच की अब तक की हाइलाइट्स। दफाई अंदाज से इस मौके पे खेले इमरान भट्ट। एक तरफ जारहाना अंदाज अपनाए में इमाम उल हक, दूसरी जानिब डिफेंसिव अप्रोच के साथ हैं इमरान भट्ट। बहुत पीछे गिरा हुआ बॉल, और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, जो बॉल थोड़ी सी शॉर्ट होती है बहुत टाइम मिल जाता है बैट्समैन को। इस बार भी इमरान को खासा टाइम मिला, बैकफुट पे जाके उन्होंने कट किया इसको, कैप में 4 रन हासिल किए। ऑप्शन से बाहर गेंद, काफी जगह मिली स्ट्रोक को खेलने की और बैकफुट पे जाने के बाद इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए कवर्स में इमरान भट्ट। सिंगल के साथ स्ट्राइक को चेंज किया। उमर अमीन थे फील्डर। नुमान अली अब तक बॉलिंग करने नहीं आया, काफ़ी हैरानकुन बात है मेरे लिए, जहां विकेटों की तलाश नॉर्दर्न कर रही है और वक्त ज़ाया करना नहीं चाहेगी वो। हो सकता है इमाम की क्रीज पे मौजूदगी की वजह से मुबस्सिर ऑफ स्पिनर हैं जो उनको चांस दिया गया है, लेकिन एक दफ़ा फिर कदमों का इस्तेमाल इमाम की जानिब से। काशिफ अली थे फील्डर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। चार्ज कर रहे हैं इमाम मुसलसल मुबस्सिर को, और कोई भी गेंद जो ज़्यादा स्पिन हुई वो रोहिल नज़ीर के गिलव्स तक पहुंच सकती है। 19 मुकम्मल हुए, 74 पर 1। ये रज़ाउल हसन है मुतबादिल खिलाड़ी के जिन्होंने विकेट कीपिंग की, इसके साथ साथ बलूचिस्तान के डॉक्टर। और बलूचिस्तान की एक टीम में अगर कोई सबसे ज़्यादा बिजी रहा है तो ये डॉक्टर ही हैं जो सबसे ज़्यादा बिजी रहे। 12 इनको ग्राउंड में जाना पड़ा है। ये जो कीपर्स की पिछली इनिंग में हालत थी बलूचिस्तान के, उसमें ये ज़्यादातर अंदर ही रहे, बाहर कभी कभी आते थे। जी हाँ, थकावट आप देख सकते हैं डॉक्टर के चेहरे पे। मूसा कंटिन्यू करेंगे अच्छी पेस के साथ गेंद करते हुए। अमूमन फास्ट बॉलर के लिए कहा जाता है कि दराज कद हो, लेकिन मूसा की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी पेस जनरेट करते हैं। मेलकम मार्शल की भी तकरीबन इतनी हाइट थी, बिलावल भट्टे की भी इतनी हाइट थी, और ये तमाम तेज़ रफ्तार बॉलर, और मूसा भी किसी से कम नहीं। बॉलर्स बैक ड्राइव और एक और दफा हाथ पे गेंद लगी। काफी जोरदार स्ट्रोक था जो ये मूसा के हाथ पे लगाए। काफी जोरदार अंदाज से गेंद हाथ पे लगी जाके मूसा के। काफी जोरदार अंदाज से गेंद हाथ पे लगी। बॉलर्स बैक ड्राइव था, और अगर आपने मैट्रिक अगर आपने उर्दू पढ़ के किया हो तो मीर तकी मीर की गजल है, हाय जूदे पेशेमा का पेशेमा होना। खुद ही शॉट मारा, खुद ही खरीद पूछने पहुंच गए। काफी जोरदार अंदाज से गेंद लगी है मूसा के हाथ पे।
अच्छा, अच्छा टाइम किया था इस बॉलर्स बैक ड्राइव को। कि मेरे कत्ल के बाद इसने जफा से तोबा, हाय से जूदे पेशवा का पशिमा होना। लेकिन यहाँ पे मीर तकी मीर ने अपने हिसाब से कहा, लेकिन बहरहाल यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। और एक अच्छी चीज़ है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो हमें देखने को मिल रही है इस पूरे क़ायद आज़म ट्रॉफी में। अच्छी स्पिरिट के साथ ये इवेंट खेला गया। जी हाँ, अमूमन अब क्योंकि ये सारे खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में, फ्रेंचाइज की टीमों में साथ खेलते हैं, तो ये अच्छी दोस्तियाँ इनकी तमाम खिलाड़ियों के साथ, तमाम रीजन्स में अच्छे दोस्त होते हैं ऑफ द फील्ड, जैसा कि होना भी चाहिए। और सीनियर का रोल भी यही होता है कि आप जूनियर को अपने साथ लेके चलें। ये बॉलिंग कार्ड है अब तक का 9 रन का। वाहिद गिरने वाली विकेट अतहर महमूद ने हासिल की 19 रन के एवज। इसके अलावा अब तक 4 बॉलर आजमाए। नवान अली ने खुद बॉलिंग करने के लिए नहीं आए। 19.2 ओवर्स के अख्तिताम पर 75, 1 विकेट के नुकसान पर। मूसा अभी तक अपने हाथ को देखते हुए, काफ़ी ज़ोरदार अंदाज से मूसा के हाथ पे लगी, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि उनका ये बाएं हाथ तक बॉलिंग आर्म नहीं था, तो गेंद वो कर सकते हैं। काफ़ी ज़ोरदार अंदाज से बॉलर्स बैक ड्राइव था, मिडिल ऑफ द बैट खेले थे इमाम, और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर मूसा की जानिब से। अब तक जो तवक्कुआत थी मूसा से, उस पर पूरे नहीं उतरे हैं अभी तक। स्पेस की ये तवक्को की जा रही थी कि वो आखिरी इनिंग में ज़्यादा कारामद साबित होंगे। अब तक बहुत ज़्यादा अच्छी जगहों पे बॉल नहीं कर पाए। सरमद भट्टी हैं फील्डर, रन बनाने का मौका नहीं। रोहिल नज़ीर एक और टैलेंटेड प्लेयर, पाकिस्तान अंडर 19 के फॉर्मर कैप्टन, 2020 के वर्ल्ड कप में क़यादत की जिम्मेदारियां थी रोहिल के कंधों पर। और ये मूसा हैं, अच्छी रफ्तार जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अब तक विकेट नहीं मिल सकी इनको। बैकफुट के जाने के बाद इस मरतबा खेलने में कामयाब हुए इमाम। ध्यान से खेलते हुए, इत्मीनान के साथ खेलते हुए पेसर्स को, स्पिनर्स पे चार्ज कर रहे हैं, ख़ासतौर से मुबस्सिर को। इस सिंगल के साथ खसारा कम होता हुआ 240 रन का। इमरान दूसरी जानिब इस इनिंग में बड़े मुस्तनद शानदार अब तक खेल पेश किया है उन्होंने। पिछली इनिंग में एक लूज शॉट मारकर आउट हुए थे, गैप बन गया था उनके बैटर पैड में, बोल्ड हो गए थे, लेकिन इस बार अच्छा तेज बाउंसर था और उसको पुल करने में कामयाब हुए। क्या कैच ड्रॉप किया है देखना होगा। बड़ा तेज बाउंसर था ये। इमरान भट्ट को बिल्कुल चेहरे के सामने गेंद मिली और उसको पुल किया। ये देखिए रिप्ले, बाउंसर और बिल्कुल ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे, टॉप एज लगा सीधी हाथ में काशिफ के, लेकिन 3-4 कोशिशों के बावजूद वो इसको नहीं संभाल सके और जिंदगी मिल गई इमरान को। अभी मैंने जिक्र ही किया था कि बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट और संभल के इनिंग्स खेल रहे हैं, और उन्होंने पुल शॉट फौरन ही खेल के मेरी बात को गलत साबित कर दिया। काफी तेज बाउंसर था ये, हटने का टाइम नहीं था गेंद की लाइन से, इसलिए पुल करने चले गए। और दूसरी तरफ काशिफ कुछ भी नहीं करना है इस कैच में। गेंद सीधी उनकी जानिब थी, चेस्ट हाइट पे थी, कुछ वेस्ट हाइट पे थी और कुछ उनको करना नहीं था। कुछ कैचेस होते हैं जो बड़ी मुश्किल से किए जाते हैं,
और कुछ होते हैं जो बड़ी मुश्किल से ड्रॉप किए जाते हैं। शॉर्ट बॉल देखिएगा, शॉर्ट बॉल बिल्कुल चेहरे के सामने, और ये कैच कुछ भी इसमें नहीं करना था, बड़ी मुश्किल से कैच ड्रॉप किया है काशिफ ने। बड़ा आसान कैच। अमूमन जब बॉलर स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको लाइन और लेंथ नहीं मिल रही होती, तो विकेट्स जो हैं वो उसको मदद करती हैं रिदम में आने में, लेकिन यहाँ पर मौका गवा दिया नॉर्दर्न ने। यकीनी तौर पे मूसा जो बड़ी पेस के साथ गेंद कर रहे थे, अनलकी रहे, लेकिन क्रिकेट है और क्रिकेट का पार्ट है, कैचेस अच्छे कैचेस भी होते हैं, कैचेस ड्रॉप भी होते हैं, तो कभी कभी आसान कैच ड्रॉप हो जाते हैं, मुश्किल कैच पकड़ लिए जाते हैं, ये क्रिकेट का हुस्न है। और काशिफ को चाहिए अब इसको भुला के फोकस करें खेल पर। एक दफ़ा फिर चार्ज करने आए, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करें एग्रेशन के साथ खेलें मुबस्सिर को, इमाम उल हक, और कोई भी गेंद जो ज़्यादा स्पिन है कोई हमारे मुश्किलात में डाल सकती है इमाम को। जी हाँ, प्री मेडिटेटेड अगर ख़ास तौर पे करेंगे इस बॉल को भी अगर आप देखें तो बहुत पहले निकल गए थे, वक्त मिल गया बॉलर को चेक करने का। बड़ी शानदार बॉल इस बार, स्टंप के थोड़ी बाहर, और डिफेंड करना चाह रहे थे, उसको स्पिन हुई। ये देखिए बड़ा अच्छा बॉल फ्लाइट, बीट किया उनको स्पिन के साथ। टिपिकल ऑफ स्पिन डिलीवरी जो स्पिनर का खासा होती है, इस गेंद से कबल हमें वो देखने को मिली मुबस्सिर की जानिब से। इस मरतबा लूप के साथ गेंद को किया, थोड़ा सा गेंद की रफ्तार को धीमा रखा, डिसीव किया इमाम उल हक को मुबस्सिर ने, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ गेंद करते हुए नौजवान मुबस्सिर। एक अच्छा ओवर था ये मुबस्सिर की जानिब से, जहां पे इमाम को ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करने दिया। 78 एक विकेट के नुकसान पे 238 रन की बरतरी नॉर्दर्न की बाकी। पहले स्पिनर्स अली बड़ा खुश होते थे ये देख के कि कोई बैट्समैन उनको कदमों का इस्तेमाल उन पे करने की कोशिश कर रहा है, और वहीं से वो जो है उसको एयर में डिसीव करने और बीट करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बॉलर्स को ये पसंद नहीं है कि कोई उनको निकल कर खेले और चौका या छक्का मारे। काफ़ी रफ्तार के साथ गेंद कर रहे हैं मूसा, काफ़ी तेज़ गेंदें करते हुए, और इतना अच्छा उसको मैनेज किया इमरान भट्ट ने। बड़ा अच्छा दिफाई अंदाज है इमरान का, और फ्रंट फुट पे जब भी वो आते हैं तो दिलकश लगते हैं। शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा परेशान लगे हैं आज, आउट ऑफ पोजीशन हो जाते हैं कभी, और जैसा कि अली ने कहा काफ़ी तेज़ रफ्तारी से बॉलिंग कर रहे हैं मूसा, तो अमूमन इस रफ्तार के बॉलरों के साथ ऐसा हो जाता है। वापस खेले मूसा की जानिब, रन बनाने का मौका नहीं। इमाम उल हक बिस्मिल्लाह खान की शर्ट पहने में, और जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं इमाम, यकीनी तौर पे एक अच्छी कारकर्दगी की इनसे उम्मीद की जा सकती है। ये इमाम उल हक जो बिस्मिल्लाह खान की शर्ट पहने, बिस्मिल्लाह की शर्ट पे लिखा है, लेकिन ये जो बिस्मिल्लाह ये अभी तक मुकम्मल नहीं है, 100 बिस्मिल्लाह होना चाहिए। जो परफॉर्मेंस है इनकी वो मुतकाज़ी है इस बात की कि सेंचुरी स्कोर करें, तो जुमला जब भी मुकम्मल होगा 100 बिस्मिल्लाह यानी खुश आमदीद। एक और बाउंसर, लेकिन इस मरतबा टाइम मिला और बैठ गए, जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के गिलोज में। इस बार काफ़ी पीछे तैयार थे, जो बाउंसर उनके जिस्म की तरफ डायरेक्ट किया जाता है उसमें ज़रा मुश्किल होती है इमरान को, मैं देख रहा हूँ, वरना अगर ज़रा सी भी उनको
स्पेस मिल जाए, ऑफ स्टंप के बाहर हो या को नजर आ रही हो आग के सामने, तो उसको बड़ा अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाउंसर उनके जिस्म की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है तो थोड़ा सा ऑफ पोजीशन हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ बैट्समैन होते हैं जिनको रिप केज पे मुश्किलात होती हैं शॉर्ट बॉल खेलने में, और जिस तरह ने पिछले ओवर में देखा था, पुल किया था, बिल्कुल चिन के सामने गेंद थी और कोई चारा नहीं था इमरान भट्ट के पास इस गेंद को लेफ्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती रही थी मूसा की कि कैच नहीं हो सका। नौमान अली जिनकी बॉलिंग के मुंतज़िर हैं हम कि कब बॉलिंग करने आते हैं नौमान अली, अपने एक्सपीरियंस को बरोकार लाते हुए इस अंदाज से बॉलिंग करते हैं नौमान। बड़े अच्छे तरीके से नॉर्दर्न की क़यादत की, पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे मौजूद है नॉर्दर्न। और एक और अच्छा बाउंसर और उतना ही उम्दा लेफ्ट किया, काफी तेज गेंदे कर रहे हैं मूसा। खैरियत पूछी है मूसा ने इमरान भट्ट की, बहुत ही जबरदस्त ये बाउंसर था और इतने अच्छा अपनी निगाह रखते हुए लेफ्ट किया यहां पर। क्या बिल्कुल बहुत अच्छी तरह छोड़ा, और सबसे अहम बात कि उन्होंने नजर नहीं हटाई बॉल से। बड़ा तेज बाउंसर उनके बॉडी की तरफ, बड़ी अच्छी तरह से अपनी नजरों के सामने उन्होंने बॉल को छोड़ा है और अपने जिस्म को बिल्कुल कमान की मानिंद उन्होंने हरकत दी। और इस मर्तबा कट करने में कामयाब हुए और 4 रन हासिल किए। एक अच्छे ओवर का खराब इख्तिताम, नाराजगी का इजहार किया अपने आप से मूसा ने। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, तेज रफ्तार बॉलर और इतना ही उम्दा स्ट्रोक खेले पिछले कदमों पे इमरान भट्ट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या ये आखिरी बॉल तेज जरूर थी लेकिन बहुत विथ मुहैया कर दी उन्होंने बैट्समैन को, और इमरान ने भरपूर फायदा उठाया। पल्ला बॉल को लगाना था उन्होंने और ऐसा ही किया। पेस जो है बॉल की वो बाउंड्री लाइन के पार ले गई बॉल को, और इस चौके के साथ ही 50 रन भी मुकम्मल हुए इमरान भट्ट के। मुश्किल हालात में खेली गई एक अच्छी इनिंग। इमरान भट्ट अपनी निफ्स सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए इस चौके के साथ, और दूसरी जानिब कट करने में कामयाब। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, इमाम उल हक का, तो दोनों एंड से बाउंड्रीज का सिलसिला जारी। अच्छा शॉट था ये, डेलिकेटली इसको बड़ा लेट खेले, पेस को इस्तेमाल किया बॉलर की, थोड़ी सी इन्होंने जगह दी थी और ये कट शॉट खेला लेट, लेकिन और कोई मौका नहीं फील्डर के पास। इस मरतबा वाइजली लेफ्ट किया इमाम उल हक ने। अच्छा कलेक्शन था विकेट कीपर रोहेल का। कम बैक किया है मुबस्सिर ने, पहली गेंद पे उनको 4 रन लगे उसके बाद। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की इमाम ने, लेकिन पिछली बार की तरह ही इस बार भी बहुत पहले निकल गए। वो वक्त मिल जाता है बॉलर को चेक करने का और अपनी डिलीवरी को चेंज करने का। कदमों का इस्तेमाल, उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद सीधी शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के हाथों में महफूज। नौमान अली कैच लेने में कामयाब। और यही हम बात कर रहे थे कि बार बार कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गेंद ज्यादा स्पिन हुआ उस पर इमाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और इमाम जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश कर रहे थे। आउट होकर वापस पवेलियन की समत गामजन। ये देखिए बॉल एलिवेशन नहीं मिल सकी, बहुत करीब चले गए थे बॉल के, और अगर इतना करीब बैट्समैन बॉल के चला जाए तो उसको स्पेस नहीं मिलती उसके नीचे घुसने की बॉल को। 31 रन 70 बॉलों पर बनाकर इमाम आउट हुए। 86 पे 2 बलोचिस्तान।
Courageous Azim Ghumman walks in. Remember, he was hit on his fingers a lot of time yesterday while wicket keeping. This is a courageous move by him, by the not so youngster. He's got 100 matches to his name. That's not his picture though. 5,230 runs. That's last man. Imamul Haq was caught by Numan Ali off Mubassir Khan. It was on the cards. The way Imamul Haq was handling Mubassir Khan, it was a matter of time and he got his wicket. It's up to Azim Ghumman now. I've got Akil Samar with me. Akil, how do you sum up this game for Balochistan? Yeah, a lot of points to ponder, and not too much of time left before the One Day Cup. Pakistan Cup would be their next challenge, and I'm afraid not many things would change come the end of February, when they would be entering into different grounds of Punjab for another top contest, and they will have something to prove at that point in time. But good captaincy so far by Numan Ali. Introduction of Mubassir was there, and that wicket was on the cards. The way Imam was struggling before the tea break, and that continued after the break as well. Oh, there's an appeal. A finger has gone up. What a wonderful start for Mubassir. Not so good for Azim Ghumman, losing his wicket on the very first delivery. The ball that kept straight. He was expecting it to spin. The courageous time on the crease, ending very soon for Azim Ghumman. Lo and behold, Mubassir is on a hat-trick. That one straightened and continued until the gloves of the wicketkeeper Rohail, and what a proud moment for Mubassir. Mubassir, the off-spinner, has got into the wicket. He is on a hat-trick. What a game-changing over after the tea break. 86 for 3 Balochistan. '86 for 3 now, Balochistan. If dominance had a face, it would be Northern's performance in this game. The way they have played. Wonderful performance, not with this just the bat, but now with the ball. Earlier in the first inning, it was the fast bowlers doing it, and now it's the young Mubassir Khan getting 2 wickets of 2 deliveries. First Imamul Haq, then Azim Ghumman going out on the very first delivery. It's up to Taimur Ali now. 3,282 runs, 18 50s and 400s. Average which needs to improve. Yes, he has been fairly experienced, Taimur Ali. Got a decent season last time round, and struggled a bit during the current outing. Not too much of time left in this Azam Trophy for Balochistan, and they would have been 86 for 4 had that catch been taken against Imran. But a lovely over that one was by Mohammad Musa. Once again, this battle is going to continue between Imran Butt and Musa. Musa almost got rid of him, but Imran Butt had the last laugh in the previous over when he cut that ball, the last one, to 4 runs, and now we'll have to wait and see that how the action unfolds. But remember, Mubassir will stay on hat-trick come the next over. It's been a fiery spell. Another short one. Another time he's cut it well. He's gone through that point fielder. Should look to get 3. Now he'll settle down for 2. This is a good battle, as you were just mentioning. Musa is on fire. So is Imran Butt. We saw the approach is not bounding to him. That's how the wickets fell. It was on the cards. Imamul Haq never looked settled against Mubassir Khan. A bit of a nothing shot, and then the very next ball played for spin. The bat was away, way away. Good decision. Nice. Off the back foot, punched through the covers. 2 runs, 2 runs. Easily taken in the end. And this is a good thing for Musa. He can experience the way he wants. They were cut out against Imran Butt. They know that short ball has been a bit of weak link for the right-handed batter, so they've been trying it
hard against Imran Butt. Over in, over out. And why not? They have got a K2 of runs to play with. Still, they are trailing by 226 runs. So, by no stretch of imagination, they can go on to put on a challenge against Northern. So, a good time for Musa to make an impact and get into the thick of things just before the final. Oh, Quaid M. Thick outside edge will earn him a boundary. These are testing times for Imran, but it's a wonderful, wonderful spell by Musa. Got an opportunity to get his wicket, but the catch was dropped. Fiery spell, we would call it. Yes, what an interesting little battle in the context of this game. Squared him up, and then that one kept on going along the carpet, and something is on the card. This is good battle between Imran Butt, and interestingly, Imran Butt has to face the music for the last couple of overs. The strike has been rather put on him, so how is going to face this burden and who is going to have the final hurrah, we'll have to wait and see. But a long list of runs he's got on his backing. Mohammad Musa once again charging in. Another one. This is thrilling stuff by Musa. Equally good by Imran Butt. He's accepting the challenge. Whenever an opportunity is provided, he's looking to get runs. And this was that moment you were talking about, Akhil. Such a straightforward chance. At this level, you should be able to take those. Youngster Athar will have to learn quickly. You don't afford to drop such easy catches. Yeah, some basics were required. Keep your eye on the ball and the rest will follow. But that was not happening for Musa. A little heartbreak for him. But the good thing is that he has moved on and he has been focusing on the next deliveries. Oh, kicked on. Oh, this is exciting stuff. This is a wonderful battle. Probably the best competition that we have seen in this game so far between Musa and Imran Butt. Or else it has been all Northern. Yes, once again, that one rocketed off the surface and surprised Imran Butt. He was once again on the back foot and offered no shot. He was not expecting it to bounce that much and almost hit on the clubs. So the final delivery, they are now trailing with 222. Nice. Not quite middling it from the bottom of the bat. This is exciting stuff by Musa. Very good competition is on. 24 overs gone, 94 for 3 Balochistan. So lo and behold, ladies and gentlemen, Mubassir is going to be on a hat-trick. I hope that he will be continuing with his over if he's Don't worry, he is. Yeah. He is. So first he got rid of the set batsman Imamul Haq, and then on the very next delivery that one kept on straight in, but this is Imamul Haq could not get himself under the ball. Easy picking on that occasion for the fielder, and then on the very next delivery Asim Khuman was totally surprised by that one. He hung his bat way away from his body, and here we are. Mubassir is on a hat-trick. Wonderful moment. Have a look at the field. They've all gathered up around the batter. Taimur Ali, 72 first-class games to him. He's up against the hat-trick ball. It's never easy. It's never easy for the bowler even to control these emotions. Have a look at that. 2 slips, short leg. What can he do? Hat-trick delivery. Oh, that spun. They could have easily taken a leg slip. Why not? It was spinning. Missed the trick by Noman Ali. Nevertheless, a wonderful spell of bowling by Mubassir. Yeah, I think this grand vulture party will continue on the pitch, and you're right. No problem whatsoever if they would like to introduce a leg slip. The runs in that process could be made by Imran, but he's going with an aggressive pace, 58 of 73. He's getting the spin. He's getting the spin. Probably the first spinner that we have seen in this game getting a spin out of this pitch. Yasir Shah was disappointing. So was Kashif Bhatti for Balochistan. Noman Ali couldn't do much. It's good bowling by Mubassir. Already has gotten 6 wickets
against Central Punjab in this Karachi leg. What can he do here? So a very interesting evening here in Karachi, crisscrossing between NBP Sports Complex, UBL and SBP. What is happening with Central Punjab is that they are 36 for no loss. So Khyber Pakhtunkhwa opted not to enforce the follow-on, and they were all out 110. So a huge task in front of them, but they have been battling it out. 10 wickets for Khyber Pakhtunkhwa to be achieved in a matter of an hour or so and one full day. Very interesting, the UBL Sports Complex. And what's happening near the coastal part of the city is that Sindh are now 182 for 5 with a lead of around 100, and they have lost 5 wickets. So Southern Punjab is making a huge comeback, which might not take them into the finals, but a good show to put on in the final game of the round stage. End of the over, 95 for 3. Exciting stuff all over this Karachi leg. It's been beautiful. It's been fantastic from the time that the cricket has moved to Karachi. National Bank, State Bank and UBL Sports Complex. They've been wonderful grounds, lovely pitches, something for everyone we have seen. But State Bank will top the list because pitches over here have been lively. Batters have scored runs, bowlers have taken wickets. Spinners like Mubassir, who you just saw, have been able to spin the ball also. It's been fantastic. So has this battle been. This is the first time that Taimur will be facing the fire from Musa. Two slips a gully and a short leg in place. Shot cover too. Oh, that's in there. Has it come off the bat? Has it come off the bat? Yes, he's moving. He's moving himself. Another one gone down. Taimur this time. A quick bouncer by Musa. No answer to it. Another wicket falling for Balochistan. Wow, magical Musa. That one rocketed off the surface. Taimur just facing his second delivery. Survived the hat-trick delivery from Mubassir Khan, but that was too much for him. Like a cat on a hot tin roof. Easy picking for Faizan Riaz. And he was deserving this wicket for quite some time. Musa has got his prize. Taimur really departs. They are now 95 for 4, trailing by 2-1. The hero from the first inning, Kashif Bhatti, 101 matches, 3,334 runs, 16 50s, 200s, the best of 158. What can he do here against the fire of Mohammad Musa? We've seen him bowl such fiery spells before. This is amazing. And Balochistan are in danger to be bowled out today. We were hoping that they will get over this today. It's pretty embarrassing for a team like Balochistan. The performance, the show they have put on in this game. Embarrassing is the word. Yeah, sure, Ali. If you've got some other plans in Karachi for tomorrow, I think you can go on with it. Still 1.5 hours to go in today's proceedings. Kashif Bhatti will face these thunderbolts from Mohammad Musa. An extraordinary display, but the main man he was targeting is still out there, Imran Bhatt. At the non-striker end, he survived a drop catch, and now we'll have to wait and see that how he's going to bowl him. He's got his fuel. Mohammad Musa is now coming on to bowl after getting this supersonic magical fuel, getting wicket of Taimur. Kashif played an instrumental role in giving some stability to Balochistan in the first innings, but this is a different ball game. 2 slips and a gully for Kashif. And now one forward short leg along with a short fine leg as well. All to play for. A short ball expected. Let's see. Oh, wonderful. This is quality stuff. This is fast bowling of the highest quality. Wonderful spell of bowling by Musa.
He's given away a few boundaries, but has bowled some magical deliveries. This one, right up there. No question for... Oh, wonderful. Yeah, if you are a fan of cricket, I'm sure you are, tuning into PCB's YouTube channel, then some very encouraging, promising and good news coming in. This is the wicket of Taimur. Fazan Riaz taking that easy one. So New Zealand has just confirmed a tour for every format. 5 one-day internationals along with T20 and Test matches going to happen in the next year. Oh, what is happening here? It's a fiery spell. It has hit his helmet. Musa is worried. So is everyone in the ground. It's never a good scene whenever you see a batter hit on helmet. Everybody's gathered around him. He seems all right. Seems all right. Musa has been the... He's asking those questions, I believe. Where do you belong? Who are you? How many fingers? These are the questions that physios ask. He seems fine. Yeah, these are the interesting questions, but another hammer blow to Kashif Bhatti. He looks okay, but the protocols have to be followed. The spirit of cricket has been on the top over here in SPP Sports Complex since last half an hour or so. First, Imam ul Haq played a shot back towards Musa. Musa had a little bit of blow on his left hand. Imam ul Haq came on to check the well-being of Musa, and since then it has been happening. So the concussion protocols have followed. He was looking all right from the get-go, and we'll have to wait and see that how he's going to bowl, but the confidence is going to be shattered for Bhatti, and if he is going to continue the short ball or Yorker one, I'm not too sure, but I think the way things have gone so far, a Yorker is expected in a couple of deliveries to come in this over. Akhil, what do you make of the approach? He's facing the second delivery. Just look how he played. He could have easily let it go to the wicketkeeper. But the approach seems that they're in a hurry. They want to go home today. They're not waiting for tomorrow. Tickets are booked, I believe, the way they're playing. 221, the trail still for Balochistan. They're not getting there. Oh, expensive drive again. See, they want to go home. Yeah, as expected, a full-length delivery, and Kashif Bhatti once again tried to make something out of it. Not to be. Many of these players are such that we will be able to see them in the next season. Some of them would not be in action in the One-Day Cup, so it would be a responsibility on their part to stay fit and keep themselves hunting for the positions in the Balochistan team or any other team come the next season. Not too happy times for Balochistan throughout this Quaid Azam trophy. This is another good bouncer. This is wonderful stuff by Musa. He's running in hard, banging in hard. He's got the result. 1 wicket already to his name. Taimur Ali had no answer to that bouncer. Wonderful spell. We've seen him bowl like this before. Remember at Gaddafi Stadium against Central Punjab. He was getting the reverse swing. That's how he was hit on the back of the helmet. He's not got that new helmets that we see players use, which has protection on the back of your helmet. Lucky that it did hit the helmet, the solid part of it. But Musa is on fire. This is better. Respect the game. 26 overs gone. 95 for 4 Balochistan. Yes, Ali, what a time to receive the news that New Zealand will be touring Pakistan. 2 tests, then the 3 ODIs in December and January the next year, and then 5 ODIs, 5 T20 internationals. So one should be excited. Obviously, New Zealand has always been a very exciting team and should be an entertaining tour. Some part of it might be played in Karachi. Karachi, I'm sure that would be a good host, especially in the months of December and January, when the middle part or the northern part of the country remains under heavy fog. So
a good moment to be happy for any Pakistani or even any cricket fan out there. Absolutely. Wonderful news. Thumbs up to PCB for organising it, for inviting them. Oh, that kept low. That kept low. They just seem to be in a hurry. You can sense it. They want to get over it today. They don't want to come back to the ground again tomorrow. Shots like these, approach like this, definitely shows that it's better. So good news, yes. New Zealand, Australia coming, New Zealand coming, West Indies will be coming back. Lots of cricket to be played next year in Pakistan. Wonderful news for the fans. I've never seen you go to the stadium. You like it on the stadium or on TV screens? Mostly you're commentating while in Karachi. Yeah, obviously I would like to cover it from the best seat in the box, which is a com box for that matter, but I would never mind. At least there's a different buzz when you are in National Stadium or the Qaddafi Stadium. Use of feed by Imran Butt and our run as well to him. But I would sincerely hope that PCB would be able to add the credentials of maybe Arbab Niaz Stadium in Peshawar, which is undergoing some very heavy reconstruction and refurbishment, because the news which has been coming in on the pictures tells us that it would be the next big thing in Pakistani stadiums. So why not? If those stadiums are ready, then we have got a lovely stadium in Multan near your hometown. Would be good, because that facility has been brilliant. Unfortunately, never been there. End of the over, 96 for 4. Which is your favorite run? I would like to ask that. Imran Butt continuously using his feet, and that was an opportunity gone for begging. Akil, a guy who scored 300, young Herrera. Get him off there. He's done a lot of hard work already in this match. Have a look at that. He's not 100%. He's got hit on his arm too. Why are you making him stand here on a short leg? It's not fair on his part. He's been tired. He's been in the ground for 2 days. He's played an inning of a lifetime. That's good courage by him also. Youngster, 19-year-old, not shying off, standing at short leg. What choice do he has? That's the question. Musa will continue to Imran Butt. Balochistan trailing by 220 runs at the moment. It's been exciting. Just loved watching Musa, the rhythm he is in. Cuts well. Wonderfully done. Through the gap for 4. This is top quality batting by Imran Butt, showing that he belongs to the international level. Wonderful stuff. Musa banged short ball after short ball in the previous few overs, but changed his length a bit, and Imran Butt was ready to pounce on that opportunity. In a blink of an eye, and another boundary to not only Imran Butt but also Balochistan completing that little milestone. 100s now they have achieved after losing 4 wickets, so things have been rolling out very quickly. Sooner rather than later, we would be able to see maybe a result in this evening or tomorrow morning for this match. Whoa, that's kicked on. That length again came off his glove. That's what he asked. Musa, what are you appealing for? It came straight from my hand. But that's what fast bowlers do. They want a wicket on every delivery. And Imran Butt is not only enjoying but making the most out of that battle once again, sharply angling in towards the right-hand batsman. So coming back to my question, which is your favorite run within the country, the best stadium for you? It has to be Qaddafi Stadium. Just love it there. Just the feel that you get when you enter the stadium. It's the headquarters of Pakistan Cricket Board too. The media center. It's wonderfully made. The facilities there, it's amazing. National Stadium also, very good one. Nicely clipped. Straight to the man. Another wicket gone down. Wonderful captaincy by Numan. Kept the fielder there. The young Herrera making no mistake. Took it easily. Another wicket to Musa. The misery for Balochistan continues. Just a matter of time now.
First the morning and now the evening belongs to Herrera. An extraordinary catch, top use of reflexes, an excellent piece of fast bowling by Musa. Stood his ground, kept his eyes on the ball, and a brilliant catch to finish. Well done, Herrera. This is your evening in Karachi. Kashif Bhatti's innings coming to an end. Contributed nothing after facing 7 deliveries. They are now 101 for 5, trailing by 2 and 5. And this is time for us to get some breather and the players to have some drinks. उनका जो स्पेल रहा है पानी का वक्फा खत्म हुआ यहाँ पे स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यासिर शाह है नए आने वाले खिलाड़ी, कप्तान। जैसा कि मैं कह रहा था कि उमर अकमल की जो इंजरी है शायद वो बैटिंग करने नहीं आ सके। 113 इनका बेस्ट स्कोर है, 7 सेंचुरियां और 1 सेंचुरी बना रखी है, 3000 से जायद रन। बाउंसर से इस्तेकबाल किया मूसा ने और इस स्पेल में बहुत ही शानदार और तूफानी बॉलिंग की है मूसा ने। अली बिल्कुल दुरुस्त कहा शाह फैसल आपने, बड़ा तेज बाउंसर था और जिस अंदाज से ये काशिफ भट्टी का कैच किया, बड़ा अच्छा कैच था। यहाँ पे अपने आंखों को बिल्कुल रखा हुरैरा ने। इस मैच में बहुत कुछ है हुरैरा के लिए, आइज को बॉल पे रखा और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन हैंड एंड आई का, और एक क्लोजिंग पोजीशन पे इस किस्म के कैचेस हरगिज आसान नहीं होते। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही मुश्किल फील्डिंग पोजीशन है, लेकिन बहुत अच्छी टेक्निक का मुजाहरा किया और बॉल पे नजर जमाए रखी। इस मरतबा गेंद हुरैरा के पास से निकलती चली गई। यासिर ने 1 रन बनाया और दूसरे रन के लिए भी वापस आ गए। शाह फैसल एक अच्छी चीज़ है, आप देखें यासिर चाहते तो 1 रन पे इक्तफा कर सकते थे, क्योंकि बड़ी तेज गेंदें कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त मूसा और टेल एंडर हैं
यासिर शाह, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे क्या कमिटमेंट है उनकी कि 2 रन के लिए उन्होंने उकसाया इमरान बट को, दूसरे रन की कॉल की और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। तो एक सीनियर प्लेयर होने के नाते, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के नाते यासिर शाह को यहाँ पे मैं ज़रूर सराहूँगा। और ये हुरैरा कि जिन्होंने ना सिर्फ ट्रिपल सेंचुरी बनाई मियादाद के बाद, दूसरे यंगस्टर कि जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और इसके अलावा बड़ा अच्छा कैच भी लिया, बिल्कुल मियादाद ही की तरह फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे मौजूद हैं। मियादाद भी क्लोजिंग पोजीशन पे फील्डिंग किया करते थे और बड़े ख़तरनाक अंदाज से इस मरतबा इसको लेफ्ट किया। जी बिल्कुल, अपनी नजरें हटा ली थी बॉल से यासिर शाह ने, और बहुत ही अच्छी लाइन थी इस बाउंसर की। देखें थोड़ी सी एंगल बनते हुए बॉल यासिर शाह की बॉडी की तरफ आ रही थी और नजरें हटा दी। खुशकिस्मत रहे कि बॉल ऊपर से निकल गई। मूसा ने इस स्पेल में जो शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया वो बहुत ही शानदार रहा है। बदकिस्मत रहे इमरान की विकेट हासिल नहीं कर सके। वो जो बाउंसर उन्होंने किया था वो बहुत ही तेज था और टॉप एज सीधा फील्डर के पास गया, लेकिन वो विकेट नहीं मिली। उसके बाद 2 विकेटें ज़रूर हासिल की हैं मूसा ने। बहुत अच्छे रिदम में भी लग रहे हैं। आप उनका रन अप और फॉलो थ्रू देखें तो काफ़ी आगे तक चले आते हैं बॉल करने के बाद। और यासिर शाह जारहाना अंदाज अपनाते हुए 4 रन का सिग्नल अंपायर नासिर हुसैन की जानिब से। आगे गेंद थी और यासिर शाह को अंदाज़ा था कि कोई फील्डर मौजूद नहीं है इस एरिया में, तो इसलिए आसानी के साथ 4 रन के लिए खेले यासिर शाह। यासिर शाह और मूसा के दरमियान बातचीत भी हुई है इस शॉट के बाद। आप देखें अभी तक बात कर रहे हैं यासिर शाह। शायद यासिर ने फैसला कर लिया था या भांप लिया था कि अगली बॉल आगे ही गिरेगी, और प्री मेडिटेटेड लगा ये शॉट, लेकिन अच्छा कनेक्शन हासिल किया। लेकिन बलूचिस्तान की दूसरी इनिंग में इस पसपाई पर अली क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल टीम कहीं से भी टीम नज़र नहीं आई, और 2 जो जेन्युइन बैट्समैन उनका साथ भी हासिल नहीं था, तो ये भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होगा। इमामुल हक ने अननेसेसरी जल्दी की, निकल के स्ट्रोक्स खेल रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे सेशन टू सेशन खेलना चाहिए था जो अब तक इमरान बट खेलते हुए नज़र आए। तो कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन बहरहाल आखिरी मैच है सीज़न का, इसके बाद मिल बैठेंगे, गलतियों पे काम करेंगे और इंशाल्लाह अगले सीज़न में बलूचिस्तान में बेहतर रूप में नज़र आएगी। सरमद भट्टी हैं फील्डर, 135 रन की इनिंग खेली, 365 रन का ओपनिंग स्टैंड था इनके और हुरैरा के दरमियान। की अच्छी मिसाल दी आपने इमरान बट की, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने खुद को अप्लाई किया है। एक चांस ज़रूर मिला, लेकिन काफ़ी कंट्रोल्ड बारी खेली है उन्होंने दूसरी इनिंग्स में। 2 बड़े तेज बाउंसर उनको आए थे, एक वो अटेम्प्ट कर गए थे जो कैच ड्रॉप हुआ, दूसरा जो उन्होंने अपने आप को, अपने जिस्म को बिल्कुल कमान की मानने एक आर्च बनाई थी, वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने लेफ्ट किया था, बिल्कुल आखिर तक गेंद पे निगाह रखी थी। बिल्कुल, क्या जैसा पिछले ओवर में भी देखा, मूसा का जो बाउंसर है वो विकेट पर पड़ने के बाद एंगल करता है बैट्समैन की बॉडी की तरफ। बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे बाउंसर से बचना। कदमों का इस्तेमाल, निकल के खेले इस मरतबा इमरान बट, बड़ा छक्का होगा ये। इनफैक्ट यासिर शाह थे कि जिन्होंने चार्ज करने का फैसला किया, पहले चौका और अब छक्का। लगता है यासिर शाह भी जल्दी में हैं। इस मरतबा मुबस्सिर की फ्लाइटेड डिलीवरी को उन्होंने भांप लिया जल्दी से। मिड ऑन मिड ऑफ के फील्डर ऊपर थे तो उन्होंने फैसला किया ऊपर से खेलने का, और अच्छा कनेक्शन हासिल किया एक मरतबा फिर। यासिर शाह के जोन में गेंद की थी मुबस्सिर ने और निकल के खेले, कदमों का इस्तेमाल 6 रन के लिए। इस मरतबा दिफाई अंदाज से खेले, रन बनाने का मौका नहीं। रली ये फर्स्ट क्लास सीजन का आखिरी राउंड है ग्रुप स्टेज का और तीसरा दिन है। बड़ा ही शानदार सीजन रहा है ये ओवरऑल, इस तरह के मुकाबले देखने को मिले। पंजाब के लेग में हमें रिजल्ट्स कम देखने को मिले, लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ रिजल्ट्स मिले और ओवरऑल एज ए सीजन ऐसा लगा कि बॉलरों को भी सख्त आजमाइश से गुजरना पड़ा, और यहाँ कराची में बैट्समैनों की आजमाइश ज़्यादा थी बॉलर्स की निस्बत।
बेहतर मैनेज किया इस मरतबा यासिर ने। आखिरी गेंद थी, खेलने में कामयाब हुए और अब मूसा को झेलना होगा इमरान भट्ट को। और इमरान भट्ट चूंकि बेसिकली ओपनर है तो इस किस्म के पेस को खेल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। यासिर शाह के लिए बतौर टेल एंडर मुश्किल होगा। और अली, जैसा मैं जिक्र कर रहा था पूरे सीजन का, कोई आपका ऐसा लम्हा जो आपके लिए हाईलाइट हो इस सीजन की अब तक? मुझे काफ़ी ऐसे लम्हात आए। सोहेल खान ने जो बैटिंग की थी वो बड़ी ज़बरदस्त की थी, जब महज 155 रन सिंध की टीम बनाने में कामयाब हुई। इसके अलावा फिर आबिद अली ने जो 98 रन की इनिंग खेली वो बड़ी ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस थी। फिर खुर्रम मंजूर और असद शफीक के दरमियान जो 176 रन की पार्टनरशिप हुई। ये चंद ऐसे ग्लिम्सेस हैं कराची लेग के जो यादगार रहेंगे। फिर हुरैरा ने तो कमाल ही कर दिया। अभी मैं बात कर रहा था पिछले स्पेल में यूनुस से कि जब जब हुरैरा की इनिंग का जिक्र होगा तो हम अपने आप को बड़ा ऑनरेबल समझेंगे कि इस मैच को हमने कवर किया। और जब 25 साल बाद 30 साल के बाद हुरैरा अपने ग्रैंड सन के साथ बैठ के इस इनिंग को याद करेंगे, इसकी हाईलाइट्स देखेंगे तो हम सब की आवाज़ें जो हैं वो तारीख का हिस्सा बन चुकी होंगी। तो इससे बड़ी सुनहरी कोई याद हो नहीं सकती। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए कम है हुरैरा की इनिंग्स की। स्लिप कॉर्डन में मौजूद हैं। पहली इनिंग में भी 2 अच्छे कैच लिए थे, फील्डिंग में भी अच्छा किया है उन्होंने इस मैच में। और न सिर्फ ये कि उन्होंने जो रन्स की तादाद हासिल की, ट्रिपल सेंचुरी, लेकिन जो उसकी क्वालिटी थी, जो स्ट्रोक प्ले का मयार था, उनकी फुटवर्क थी, अशोर्ड फॉरवर्ड और बैकफुट डिफेंस था, वो बहुत ही ख़ास था और देखने से ताल्लुक़ रखता था। सीजन की दूसरी ट्रिपल सेंचुरी थी है। इससे पहले एहसान अली ने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की और अब यहाँ पे हुरैरा ने। वो इनिंग्स भी देखने का इत्तेफाक हुआ, वो भी एक बहुत ही शानदार इनिंग्स थी। जिस तरह एहसान अली ने अटैक किया बॉलिंग पर और जो अपने स्ट्रोक प्ले की जो रेंज है उसका जो मुजाहरा किया वो भी बहुत ही शानदार था। ट्रिपल सेंचुरी आप किसी भी लेवल पर बनाएं बहुत बड़ा कारनामा होता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर में तो वो बहुत ही बड़ी हाईलाइट होती है सीजन की जब ट्रिपल सेंचुरी बने। यकीनन एहसान अली भी दाद के मुस्तहिक हैं। नो बॉल का सिग्नल, काफी जोरदार आवाज में नो बॉल की कॉल थी नासिर हुसैन की जानिब से। अब तक काफी बेहतर अंपायरिंग की है नासिर ने, इनके डिसीजन काफी बेहतर रहे। नो बॉल का सिग्नल है नासिर हुसैन की जानिब से। काफी तेज गेंद थी और यहाँ पे पुल करते चले गए थे इमरान भट्ट, इनफैक्ट यासिर शाह थे जो पुल करने चले गए। मूसा थक रहे हैं, काफी तेज स्पेल किया है और काफी लंबा स्पेल हो गया है अब ये। कि दूसरी जानिब शायद यासिर शाह ने ये फैसला कर लिया है कि उनकी दिफाई टेक्निक इतनी मौसर नहीं है कि वो मूसा के अटैक को झेल सकें। मतलब अंदर आती हुई गेंद अच्छा यॉर्क करने की कोशिश की थी। यासिर शाह ने इसको मैनेज किया, मुस्कुरा देखा है यासिर शाह की जाने मूसा ने। एक मुमकिन विकेट से महरूम रहे हैं यहाँ पर। अच्छा यॉर्कर था, एंगल के साथ अंदर ही आता चला गया। हमने देखा ये भी मूसा की स्ट्रेंथ है। लाहौर के एक मैच में उन्होंने 5 विकेटों का कारनामा सरंजाम दिया था। ऐसी ही बॉलिंग करके रिवर्स स्विंग और यॉर्कर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ क़यादत भी काफ़ी अच्छी की है नौमान अली ने, अच्छा अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया नौमान अली ने। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक था उनका जो उन्होंने मुबस्सिर को पहले बॉल दी खुद बॉल करने के बजाय, और इमाम की बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए मुबस्सिर। इस मरतबा शॉर्ट बॉल और उसको खेलने में कामयाब हुए। डीप स्क्वायर लेग पोजीशन पे काशिफ अली के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को फील्ड करने का। तो 4 रन का इजाफा मजीद स्कोर में एक्सपीरियंस यासिर शाह की जानिब से। इस मरतबा तैयार थे शॉर्ट पिच बॉल के लिए। ये बॉल ज्यादा उठी नहीं, यासिर शाह भी ज्यादा तवील कामत नहीं है। अच्छा क्रीज का इस्तेमाल किया और गेंद को सिर्फ रास्ता दिखा दिया, जितनी पेस थी यही करना था उन्हें, और 4 रन हासिल किए। यासिर शाह ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, तो शॉर्ट पिच को खेलना उनके लिए कोई नई बात नहीं। अब तक काफी बेहतर मैनेज किया है। ये 9 रन का डग आउट है।
इस मरतबा अच्छी गेंद बीट हुए मूसा की पेस से यासिर शाह। बहुत ही शानदार गेंद थी, सीम पे पड़ने के बाद बाहर निकली। और आप अगर बाउंस इसका देखें, जब बॉल रोहेल नज़ीर के पास गई तो मजीद ऊपर ही ऊपर चली जा रही थी। यासिर शाह खुशकिस्मत रहे, बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को, बहुत शानदार रिदम के साथ बॉल किए हैं आज तीसरे दिन मूसा ने। अपना इम्पैक्ट डाला है मूसा ने। और जो अंदाजा था कि पहली इनिंग में ज्यादा मौसर साबित नहीं हुए, कि तीसरे और चौथे दिन जब ये विकेट ड्राई हो जाएगी और इसकी पेस बतदरीज बढ़ती चली जाएगी तो मीडियम पेसर्स के लिए लाइफ मुश्किल होगी इस विकेट पे। और मूसा जैसे एक्सप्रेस बॉलर ने जो है अपनी पेस का भरपूर मुजाहरा किया और यही उनकी कामयाबी का राज है। मिडिल लेग पे गिरी हुई गेंद, यासिर ने इसको निकाल दिया। फाइन लेग पे काशिफ अली को काफी इंगेज रखा हुआ है यासिर ने। एक और बाउंड्री हासिल की है, इस ओवर की दूसरी बाउंड्री है जो हासिल की। और इस चौके के साथ ही मूसा 50 रन भी का हिस्सा भी क्रॉस कर गए। 54 रन अब तक दे चुके हैं। पहले काशिफ के बाएं जानिब से बॉल गई, इस मरतबा उनके दाएं जानिब से। मूसा की पेस का जहां उनको फायदा है वहां ये नुकसान भी है। बिल्कुल मामूली सी डिफ्लेक्शन भी ये इनकी रफ्तार को तेजी से बाउंड्री के बाहर ले जाती है। लेकिन जैसा आप कह रहे थे, अच्छा मैनेज किया यासिर ने। दो खतरनाक बाउंसर जरूर मूसा ने किए, लेकिन उसके बाद यासिर का स्कोर पहुंचते हुए 20 रन पर सिर्फ 12 गेंदों पर। अच्छा मुकाबला किया उन्होंने मूसा का। इमरान बट एक एंड से डटे हुए हैं, दूसरे एंड से उनके सामने विकेटें गिरते जा रही हैं, लेकिन एक एंड से क्रीज पे मौजूद हैं इमरान बट। कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं। बसिर गेंद को स्पिन कराने में भी कामयाब हुए हैं। और ये जो आखिरी गेंद थी ये हल्के से पड़ने के बाद बाहर निकली। जैसे अजीम गुम्मन को पहला ही गेंद उनका बहुत शानदार बाहर निकला और बाहरी किनारा लगा, कोई जवाब नहीं था अजीम गुम्मन के पास उस गेंद का। हालांकि इंजर्ड थे अजीम गुम्मन, लेकिन उन्होंने चांस लिया टीम की खातिर, वो खेलने के लिए आए। अच्छी बॉल पड़ गई शुरू में ही, उन्हें ज्यादा दोष नहीं दे सकते उन्हें। ये रिप्ले उस गेंद का जिसको फेस किया इस ओवर में, और ये लाइव जहां पे एक रन हासिल किया इमरान बट ने। यासिर को अब सामने लेकर आए, उमर अमीन है फील्डर। ये दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। अब मिड ऑन के फील्डर को ऊपर बुला लिया है यासिर के लिए। ये उन्हें खुली दावत दे रहे हैं कि अगर आप बड़ा शॉट मारना चाहते हैं तो आप मारें। मिड विकेट पे फील्डर जरूर पीछे हैं, लेकिन मिड ऑन मिड ऑफ के दोनों फील्डर ऊपर हैं। बसर गए अपने कप्तान के पास बात करने के लिए, और ऐसा लगता है कि शायद रेंज से बाहर गेंद की जाएगी यासिर शाह की, ताकि टॉप एज का चांस हो, स्टंपिंग का चांस हो। और शायद यही एडवाइस किया होगा एक्सपीरियंस कैप्टन नौमान अली ने। और जिस तरह मैंने कह रहा था कि रेंज से बाहर की जाएगी, बल्ले का किनारा लेने के बाद गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, और यहाँ पे समझाया यही होगा यकीनन। यासिर शाह बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए जाएंगे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रखें, और गेंद बल्ले का किनारा लेने के बाद सीधा ग्लव्स में महफूज हुआ रोहेल नजीर के। स्पिन खेलने के लिए गए थे, थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन चेंज किया मुबस्सिर ने, और बॉल सीधा होते हुए बल्ले के किनारे से लगता हुआ रोहेल नजीर के पास। यासिर शाह ने अंपायर के फैसले का इंतजार भी नहीं किया। शानदार बॉलिंग मुबस्सिर खान की, और बलोचिस्तान की टीम शिकस्त के दहाने पर। यासिर शाह ने बनाए 20, 126, 6 आउट। नए आने वाले बैट्समैन है नजीबुल्लाह चकजई। नजीबुल्लाह चकजई ज्वाइन करते हुए इमरान बट को। और जिस तरह से बलूचिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है, लेकिन काफी लोगों के जहन में सोच होगी कि आज जाने की जिद ना करो। अब ये डिपेंड करता है कि कौन चाह रहा है कि आज जाने की जिद ना की जाए और कौन चाह रहा है कि आज जाने की जिद की जाए।
बल्कि चले ही जाया जाए। नहीं, कोई ये चाह रहा है कि जिद ना की जाए, कोई असबाब पैदा कर रहा है। 126 6 विकेटों के नुकसान पे अचकजई हैं नए आने वाले बैट्समैन। 67 रन के साथ इमरान बट एक एंड से नाकाबिल शिकस्त। कोई बैट्समैन उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। टेक्निकली 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं क्योंकि उमर अकमल बैटिंग के लिए नहीं आएंगे, और वैसे स्कोरबोर्ड पे 6 खिलाड़ी आउट हैं। बहुत ज़्यादा अटैकिंग फील्ड्स नहीं ली नॉर्दर्न ने। एक लेग स्लिप का इजाफा ज़रूर किया है, लेकिन स्लिप, शॉर्ट लेग और लेग स्लिप। उमर अमीन लेग स्लिप में है। फिर सीधा बॉल बाहरी किनारा बीट करते हुए निकल गई। ये वो मंजर जिसके नतीजे में यासिर शाह का डिपार्चर हुआ। ना रोकना चाहते थे, ना एंगल करना चाहते थे, बल्ले को थोड़ा सा एंगल किया और गेंद ग्लव्स में महफूज हुई है रोहिल नजीर के। स्लिप और गली ले ली है। इस मरतबा बॉल थोड़ा सा टर्न हुआ। 126 पे 6। दोबारा रिप्ले अगर यासिर की विकेट का देखा जाए तो थोड़ा सा एक्शन देखिए मुबस्सिर का। राउंड आर्म एक्शन उन्होंने किया और ये बॉल पड़ने के बाद बिल्कुल सीधा निकल गया। एंगल फेस ऑफ द बैट के साथ खेले यासिर और बाहरी किनारा लगा। अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर हैं मुबस्सिर खान। अपनी बैटिंग से नाम बनाया पिछले सीजन। इस सीजन भी सेंचुरी बना चुके हैं, लेकिन 21 विकेटें भी हासिल कर चुके हैं। अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है इस सीजन नॉर्दर्न के लिए। ये अच्छा साइन है कि अगर आपका कोई बैट्समैन इतनी उम्दा बॉलिंग करता है तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है टीम के लिए। और यहाँ पे डबल एडवांटेज, एडेड एडवांटेज जो है वो टीमों को हासिल हो जाता है अगर कोई आपका जेन्युइन बैट्समैन इतनी अच्छी बॉलिंग करे या कोई जेन्युइन बॉलर इतनी अच्छी बैटिंग करे। मूसा है एक जानिब बॉलिंग के निशान पे तैयार। एक एंड से काफ़ी दबाव डाला हुआ है मूसा ने। लेकिन इमरान बट के दिफा को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके अब तक। 2 स्लिप एक गली के साथ गेंद करते हुए मूसा। हम नॉर्दर्न कोशिश कर रही है कि 1 रन दे दिया जाए इमरान बट को और अटैक किया जाए नजीबुल्ला पर। इसके बाद आकिफ जावेद और ताज वली ही बचे हैं बैटिंग पे आने के लिए। लेकिन इमरान बट की निगाहें सेंचुरी की जानिब ज़रूर होंगी क्योंकि सीज़न का अख्तिताम वो ज़रूर सेंचुरी के साथ करना चाहेंगे। आखिरी मैच है ये लीग मरहले का और उसके बाद फिर पिंक बॉल फाइनल है। नॉर्दर्न पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। 2 स्लिप एक गली के साथ गेंद करते हुए मूसा। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तकरीबन जो है वो डिसाइड हो चुका है फाइनल की लाइनअप। और जो खबरें जिस तरह आ रही हैं कि शायद नेशनल ड्यूटी से जो स्टार्स हैं उनको भी फाइनल खेलने की इजाज़त दे देगी पीसीबी। देखना होगा, ये काफ़ी स्टार स्टडेड इनकाउंटर होगा। कट करना चाहते थे इस मौके पे इमरान बट, पेस से बीट हुए मूसा की। काफ़ी तेज़ गेंदें की हैं अब तक मूसा ने। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी पेस और बाउंस विकेट में है अगर आप राइट एरियाज पे बॉल करें। लेकिन ये ज़रूर इस पिच पे साबित हुआ है कि तीसरे और चौथे दिन यहाँ मीडियम पेसर्स के लिए गुंजाइश नहीं है। एक्सप्रेस पेस आपके पास होनी चाहिए इस विकेट का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए, और मूसा ने भी आज ये बात साबित की है। इससे पहले एक मैच में हमने शाहनवाज धानी और हसनैन को देखा था, काफ़ी इम्पैक्टफुल बॉलिंग की थी उन्होंने चौथी इनिंग्स में। दिफाई अंदाज से इस मौके पे खेले। मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद है नौमान, लेकिन 1 रन का इजाफा स्कोर में। तब अगली 2 गेंदों पर किस तरह सरवाइव करेंगे अचकजई, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, 31 ओवर्स हो चुके हैं इस बॉल से, 31.4 ओवर्स। रिवर्स स्विंग का ज़्यादा हिंट हमने देखा नहीं है। अगर वो हो तो मूसा के यॉर्कर्स बड़े लीथल होते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि नजीबुल्ला को यहाँ आउट करें। 2 मौके उन्हें मिलेंगे इस ओवर में, 2 गेंदें बाकी हैं।
अचकज़ई यहाँ पे जितना देर रहेंगे क्रीज पे कितना तकवीयत रहेगी इमरान भट्ट को। जो लोग कराची में देसी खानों के शौकीन हैं, बसों से सफ़र करते हैं, वो हसन जई के फ़ैन हैं, लेकिन यहाँ पे अचकज़ई को अपनी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा करना होगा। मेरे लिए, क्योंकि मैं कराची से बाहर से हूँ, ये एक नई वो टर्म है। बताएं कुछ अली इसके बारे में। कराची में बड़ी एक मशहूर कोच चलती है, और इसके अलावा जो बड़े दो देसी खानों के जो मशहूर होटल हैं, शॉर्ट बॉल हेलमेट पे लगी है गेंद या ग्लव्स पे लगी है, देखना होगा। काफी तेज गेंदें कर रहे हैं मूसा, बिल्कुल तेज भी, और जो लाइन थी बिल्कुल बॉडी के ऊपर थी। नजीबुल्लाह को कहीं पे इस बॉल से बचने का मौका नहीं मिला, निगाहें हटा ली थी बॉल से। खुशकिस्मत रहे, ज्यादा चोट नहीं आई उन्हें। लेकिन शाफिज एक और भी चीज है कि जब आप 10वें नंबर के बैट्समैन है या 9वें नंबर के बैट्समैन है, शॉर्ट पिचेस हो रही हैं, तेज रफ्तार गेंदें हो रही हैं, तो आर्म गार्ड क्यों नहीं पहना? इसमें बड़ी गलती अचकज़ई की खुद भी है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। जब आपके पास एक प्रोटेक्टिव गियर अवेलेबल है, फैसिलिटी है, तो आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हमने यासिर शाह को देखा इस बॉल के बाद, स्वीप कर दिया है ऐसे बट ने। फील्डर ऊपर थे 45 पर, उनको पार करती हुई निकल गई 4 रन के लिए। अपनी सेंचुरी पर नजरें जमाए हुए हैं इमरान भट्ट, और इस चौके से 4 रन मजीद नजदीक हो गए इस लैंडमार्क के। स्वीप करने गए इस मौके पे, 4 रन हासिल किए। सेंचुरी की जानिब जरूर निगाह होगी इमरान भट्ट की, 72 के मजमूए पे पहुंचे। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि यासिर शाह खेलने आए थे, उन्होंने चेस्ट पैड भी पहना हुआ था और आर्म गार्ड भी, लेकिन नजीबुल्लाह बगैर एडिशनल इक्विपमेंट के आए हैं। ये अच्छा शॉट है, इमरान भट्ट ने लेंथ को पिक किया, कदमों का शानदार इस्तेमाल, और बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी 1-2 टिप्पे खाने के बाद। अच्छा शॉट था इमरान भट्ट का, और इमरान भट्ट को भी एहसास है कि टेल एंडर के साथ खेल रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल, उठता हुआ स्ट्रोक मिड विकेट पोजीशन पे, और 1 बाउंस के बाद गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। मजीद अच्छे स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे हमें भट्ट की जानिब से, क्योंकि सेंचुरी ज़रूर करना चाहेंगे वो। उनको भी एहसास है कि उमर अकमल मौजूद नहीं है, तो स्कोर बोर्ड पे तो 6 खिलाड़ी आउट हैं, लेकिन टेक्निकली 7 खिलाड़ी आउट हैं। इस मरतबा उन्होंने 3 गेंदों के लिए एक्सपोज कर दिया है नजीबुल्लाह को। स्पिन के खिलाफ शायद वो ज़्यादा पुरएतमाद हैं कि नजीब सरवाइव कर जाएंगे। आपको याद होगा दराजकद मोहम्मद इरफान एक दफ़ा इसी किस्म की सिचुएशन में मिसबा की सेंचुरी को मिस करा चुके हैं। और कदमों का इस्तेमाल किया, काफ़ी निकल के खेले, अच्छी फील्डिंग थी काशिफ अली की जानिब से। यकीनी 4 रन यहाँ पे महफूज की अपनी टीम के लिए। गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से रोका है, और जरा निकलना आप देखिएगा नजीबुल्लाह अचकज़ई का, बल्ला कितनी दूर से वो लेकर आए थे। ये देखिए, ये कितनी दूर से बल्ला लाए थे और गेंद तक उन्होंने कनेक्ट किया। दाद देनी होगी नॉर्दर्न की कमिटमेंट की। काफ़ी रन हैं उनके पास, लेकिन अपनी एफर्ट पूरी की काशिफ अली ने और चौका बचाया। ये अच्छा शॉट है इमरान भट्ट का, इस मरतबा रिवर्स स्वीप, गैप मौजूद था और बॉल उन्हें मिल गई उस एरिया में, भरपूर फायदा उठाया। तीसरा चौका इमरान भट्ट का इस ओवर में। 81 के इनफरादी स्कोर पे जहां पहुंचे मुबस्सिर खुश नहीं है, क्योंकि रिवर्स हिट थी यहाँ पे। अच्छा मैनेज किया यहाँ पे इमरान भट्ट ने, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी पावरफुल ये स्ट्रोक था। और मॉडर्न डे क्रिकेट में रिवर्स स्वीप की भी काफ़ी वेरिएशंस आ गई हैं। पहले रिवर्स स्वीप, अभी लैप स्वीप सिर्फ हुआ करता था, फिर ज़ोरदार रिवर्स स्वीप का ऑप्शन आया और उसके बाद स्विच हिट। काफ़ी वेरिएशंस हैं और
मॉडर्न डे बैट्समैन काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने में। इसी स्वीप शॉट की वजह से फील्ड में तब्दीली कर दी गई है। हुरैरा स्क्वायर लेग से शॉर्ट लेग से स्क्वायर लेग पर आ गए हैं और एक फील्डर पॉइंट पे भी चला गया है। ओवर की आखिरी गेंद और स्टंप हो जाएंगे। इमरान भट्ट जो जारन अंदाज से खेल रहे थे इस मरतबा भांप लिया कि क्रीज से निकल के खेलेंगे। इमरान भट्ट गेंद की लेंथ को दूर रखा, परे रखा और इमरान इसको मैनेज नहीं कर सके और पलक झपकते में बेल्स को डिसलॉज किया रोहिल नजीर ने। तो यूं 7वीं विकेट गिर गई है इस मैच में। शानदार बॉलिंग मुबस्सिर की, उन्होंने भांप लिया। इमरान भट्ट पहले ही बाहर निकल आए थे, गेंद को वाइड कर दिया और रोहिल नजीर बिल्कुल तैयार। इजी स्टंपिंग थी। इमरान भट्ट के इरादे काफी वाजे थे, तो अपनी सेंचुरी के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन इस मर्तबा मुबस्सिर ने उन्हें धोखा दिया और वो आउट करने में कामयाब हो गए। 81 रन की शानदार इनिंग्स भट्ट की, 141 पर 7। नए आने वाले बैट्समैन है आकिफ जावेद। 7वां मैच खेल रहे हैं, 33 रन स्कोर किए, 20 इनका कैरियर बेस्ट, 11 के एवरेज। तब से तकरीबन 25 मिनट पहले आकिफ जावेद और ताज वली जो हमारे बाएं जानिब का एरिया है वहां पे दरख्तों के साए में सस्ता रहे थे और कप्तान यासिर शाह ने उन्हें आवाज दी कि आ जाएं, आपकी जरूरत पड़ सकती है, आप वाइट किट पहने जल्दी से। और वही हुआ, आधे घंटे के अंदर अंदर काया पलटी और विकेटें गिरने का सिलसिला मुसलसल जारी है। और अब आकिफ जावेद पर आ गई है जिम्मेदारी बलोचिस्तान की। 1983 के वर्ल्ड कप में शायद महबूब ड्रेसिंग रूम में पीछे काउच पे सो रहे थे, उनकी बैटिंग आई, उन्होंने पहली गेंद पे जाके चौका लगा दिया। बाद में पता चला इमरान खान उस वक्त क्रीज पे मौजूद थे, तो वो हैट्रिक बॉल थी वो, तो उनको अंदाजा ही नहीं था उनकी इतनी जल्दी बैटिंग आ जाएगी और पहली गेंद पे उन्होंने चौका लगाया। तो होता ही है कि टेल एंडर्स कभी कभी समझते हैं कि उनकी बैटिंग इतनी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन हालात और वाकयात उनकी बैटिंग जल्दी ले आते हैं। या चकजई थे जो बड़े हिट लगाना चाहते थे, अटैक इज बेटर डिफेंस, ये वो मंजर जिसके नतीजे में इमरान भट्ट आउट हुए और आकिफ जावेद की आमद हुई। फ्लाइट में बीट कर दिया और मुबस्सिर ने अपनी स्ट्रेटर वन का अच्छा इस्तेमाल किया। आज 4 विकेटें अब तक लेने में कामयाब हो चुके हैं। और जो वर्ल्ड कप की जिस मैच की आपने बात की उसमें भी पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन बाद में 75 रन की इनिंग खेली थी शायद महबूब ने, वहाँ बल्ले के करीब से गेंद चकजई के गई है विकेट कीपर के ग्लव्स में। 175 रन की एक बड़ी बरतरी अभी भी हासिल है बलूचिस्तान के खिलाफ नॉर्दर्न की टीम को। बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे नजीबुल्लाह विकेटों को कवर करने की, ज्यादा दोष भी नहीं दिया जा सकता। ये देखिए फिर मूसा को उन्होंने तीनों स्टंप्स दिखाई, लगता है कि जस्ट सिर्फ क्या कहना चाह रहे हैं किसी भी लम्हे। और नजीब की ये इनिंग्स काफी स्ट्रेंज है और जैसे कहते हैं जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कब मूसा एक सीधी गेंद करें और इनकी इनिंग्स का खात्मा कर दें। और जितनी कोशिश मूसा कर रहे हैं उतनी ही कोशिश नजीब भी कर रहे हैं, हर बॉल विकेट छोड़ देते हैं। हालांकि जो उनके कोच हैं जरूर ये सोच रहे होंगे कि सरवाइव करें। अच्छी फील्ड प्लेसमेंट थी लेकिन फील्डर गेंद को नहीं रोक सके, काशिफ ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का मजीद इजाफा हुआ स्कोर में, इस 1 रन के साथ स्कोर 142। और अब आकिफ आए हैं सामने, यॉर्कर या बाउंसर, अली क्या कहेंगे आप?
फिलहाल तो ख्वाहिश ही है कि सरवाइव कर जाए, ख्वाहिश भी है और काफी लोगों की फरमाइश भी है। अच्छी गेंद थी यहाँ पे और सरवाइव करने में कामयाब हुए। एक 174 रन का खसारा भी बलूचिस्तान को। काफ़ी, लेकिन अगर बलूचिस्तान, जैसा आपने कहा, ये सीज़न का आखिरी मैच है, इनके पास काफ़ी वक्त मिलेगा कि वो मिल बैठें और इस सीज़न का बगौर जायज़ा लें फर्स्ट क्लास का, क्या मामलात हुए, क्या वाक़यात हुए और इनको कैसे सुधारा जा सकता है। वाइड ऑफ द क्रीज गए थे मूसा, अच्छा टाइम किया आकिफ ने और शायद बाउंड्री भी मिल जाएगी उन्हें। 146 पे 7। Lovely winter evening in Karachi, not so cold throughout the day, and this is perhaps the best time of the day when the shadows are now double the size of the players. Not the best moment for Balochistan. This might well be their some final flurry, whatever they want to show. The tail is already exposed. Umar Akmal cannot bat. Effectively, they are 8 down. And finally, I get to sit with Ahmed Saeed in the comm box in this Quaid Azam Trophy. What an honor. How are you, Ahmed? Yes, very well, thank you. Good evening to all the viewers. Well, the evening doesn't seem to be too lovely for Balochistan, Akhil, but yes, if you look at it from Northern's point of view, quite lovely, yeah. Oh, use of feet, and here we are, the curtains for Najibullah. It was just a matter of time. Najibullah was like a cat on a hot tin roof, trying this for quite some time now, and paid the price. Effectively 9 down. Najibullah takes the long walk. Yes, he came down the wicket much too early, and Mubassir very easily bowled it away from him, missed it altogether. Chakzai out for 2 of 12 balls, 146 for 8, Balochistan. And Hammer, perhaps a good time to discuss that. Who should be the captain for Balochistan come the next season? Because it might be too early, it might sound very early for our viewers, but before that they will have to play Pakistan Cup, and also a lot of work has to be done behind the scene on the fitness, on the player selection, who is going to be a part of the playing 11. But they were captained by Imran Butt, Bismillah, and finally by Yasir Shah. And now we can see Shan Masood also joining this team. So among these three who have led the side, who do you reckon have the guts? Because unfortunately, we haven't seen much of a performance on the ground, but the ability is what that will count towards the next season. Well, I would definitely go for Bismillah, because he's been with the unit, with the team for quite a long time now, and he's also captained Balochistan and Quetta sides, you know, before the change of this format. So he Okay, it's a long and very confident appeal. So here we are. That is the end of Balochistan in this Quaid Azam Trophy. Mubassir, the off-spinner, has been on a roll. And what a disappointing end for Balochistan. And perhaps this sum up the performance which they have been putting in throughout the last 2.5 months. Better luck next time, and see you in 2022, Balochistan. And well done to Northern. They have now been firmly placed in the final, and they would be waiting that who is going to join them
The final wicket. It's the last wicket, yes. Trying to heave it and go away from that white line. Umpire says, thank you very much. End of the Balochistan innings. Northern winning by 170 runs. The back of that fiery spell from Musa. He had bowled with aggression, with pace. And as we have seen so many times that when there's a fast bowler bowling that sort of a spell, the bowler bowling from the other end gets all the wickets, because batsmen usually try to take some sort of liberty off him and in the process lose the wickets, and that is exactly what happened today at State Bank ground. Very well said, Hammer, and that is what captaincy is all about. But well done to Northern, very proudly led by the experienced Noman Ali and some very top performers. They have got that great bit of experience and the youthful exuberance between them. Noman Ali has been back with the team and led them with perfection. Umar Amin also played his part, but these were the youngsters who played their heart out, starting with Herrera. He took some good catches as well, and joined by Mubassir, the off-spinner, and also Musa, the way he has bowled, is going to be instrumental come the 25th of December with a pink ball, a different ball game, and a different stadium altogether. Lovely to see Shan Masood encouraging young Herrera, who is the talk of the town, but I must say he is talk of the cricketing world. A triple century, not even 20 years of age, and he would be the man to watch in the final, Amber. Yes, definitely. In form, and in form at the right time. In fact, he's been very consistent throughout this season. Scored 3 centuries and now this triple 100. What an exceptional talent he is. And I'm sure you must have witnessed that catch he took at short leg. It was absolutely a blinder. Brilliant effort by this youngster. Yes, Balochistan would be back for the Pakistan Cup, but Northern is all set to feature in the pink ball final. And we would soon see points table in a few seconds to explain you that what's happening in NBB Sports Complex and UBL. But this moment belongs to Northern, Ijaz Junior, their coaching staff, their leadership, and also these players having the youthful exuberance who have played an instrumental role in their performance throughout this Quaid Azam trophy, be it Punjab and especially in the Karachi leg. Balochistan had a huge comeback. They were 49 for 5, but Shan Masood played one of the innings of his life in the first class cricket, 190 courtesy. They went past 300 runs. That were the best score in ASPP Sports Complex in this season in the first innings. But Northern had a huge total to reply with, a mountain of runs, courtesy a memorable innings by young Herrera, triple century under his belt, and Balochistan were all bundled out for 146, giving them an innings and 170 runs margin to win this match. The wickets to fall, the first one to go. Shan Masood caught in the slips, and then Mubassir started his act. Imam trying to heave it over. Very next delivery. Azim Gumman caught behind. And then Musa with that fiery pace. Taimur, Faizan Riaz was the catcher. And what a brilliant catch that was from Herrera. To dismiss Kashif, Yasir, the captain, was playing well and could not keep his bat away from that straighter one. Imran trying to accelerate, got out, and then the tail-enders playing as tail-enders do. So 6 wickets for Mubassir in the end. Brilliant bowling performance by Northern. Yes, this is how the cookie crumbled. In the beginning, they were looking strong and solid, especially the partnership between Imam ul Haq and Imran Butt. They yielded 76 runs between them. But since then, it was just a flurry of runs by Yasir Shah and no cameo in between them.
and a lot of decks you can see Taj Wali, Azim Kuman, Taimur and Kashif could not even open their account of runs. Imran Belt stood out, and it would be a good innings for him to use as an impetus come the next season of Quaid Azam. If dominance had a face, it would be this performance by Northern, beating Balochistan inside 3 days by an innings and 270 runs. It's time to talk to the captains. First, it's time to talk to the Balochistan captain, Yasir Shah. Yasir, disappointing performance. कैसे sum up करेंगे इस मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अगर आप देखें तो हमने तीनों शोबे मतलब फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तीनों शोबों में अच्छा नहीं किया। और मैं क्रेडिट देता हूँ नॉर्दर्न की टीम को कि वो अच्छा खेले, वो उसने बॉलिंग भी अच्छी की है, उन्हें जो नया बॉल यूज़ किया वो उनके फास्ट बॉलर ने वो अच्छा किया है, स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। इस पर देख लो, अगर दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग आई है तो स्पिनर्स ने आउट भी किए हैं, तो दे प्लेड वेरी वेल। बलूचिस्तान बहुत बड़ा रीजन है, क्या चेंजेस चाहेंगे आप गोइंग फर्दर नेक्स्ट सीज़न के लिए? ये आप लोगों ने देखा टीवी पे मैच आ रहा था और हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है अवेलेबल, जिस तरह हमारे पास दूसरा कीपर अवेलेबल नहीं था और हम उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी मुश्किलात रही पूरे उसमें, तो उसने भी तो ऐसे मतलब परेशान किया होता क्योंकि कीपर नहीं था। और क्योंकि कीपर का सबसे बड़ा रोल होता है, अगर आप देखें तो पूरा मैच जो होता है वो कीपर ही चला रहा होता है। तो ये हमारे साथ थोड़ा सा हुआ है शुरू में। हमारे बिस्मिल्लाह जो अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गया, वो उधर होटल से जब सुबह आए तो कहता कि मेरे हैमस्ट्रिंग की छी हुई है, तो उसी वजह से वो खेला नहीं। तो हमारे पास उसके मुतबादिल अपना वो कीपर ही नहीं था और वो अच्छा प्लेयर, अच्छा बैट्समैन भी है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। सारे नेगेटिव्स में 2 पॉजिटिव्स रहे आपके, शान मसूद की इनिंग और एंड में इमरान भट्ट जैसे खेले। या शान भी अगर आप देखें तो अब जब से हुआ 3 मैच में उन्होंने 300 किया और वो उसकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, तो उसके जब वो खेल रहा है तो ऐसे लगता है कि विकेट पे कुछ भी नहीं हो रहा। राइट, ऑल द बेस्ट यासिर शाह। थैंक यू। टाइम टू कॉल अपॉन द प्राउड कैप्टन नुमान अली। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गए, काफ़ी खुशी का मोमेंट आपके लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत खुशी का मोमेंट है। जिस तरह हमारी टीम ने खेला, मेरे ख्याल से थ्रू आउट बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मैच जीता और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। देखिए, क्रेडिट आपको मैंने पहले भी दिया था, आज फिर दूंगा कि यंगस्टर्स को आपने मौका दिया है और एक यंगस्टर ने प्रूव करके दिखाया, उस मौके को अच्छी तरीके से ग्रैब किया, मोहम्मद हुरैरा ने।
हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह, वो जिस तरह अंडर 19 वगैरह से खेलता आ रहा था, परफॉर्म करता आ रहा था, पिछले साल भी वो हमारी रिज़र्व टीम में था, वो अनफॉर्चुनेटली उसे चांस नहीं मिल सका, लेकिन इस सीज़न जिस तरह उसने स्टार्ट लिया था और ये एक इम्पोर्टेंट मैच में जहाँ पे पिच में मेरे ख्याल से काफ़ी इतना आसान नहीं था, जो जिस तरह उसने इनिंग खेली, तो जब वो बारी कर रहा था तो मेरे ख्याल से उसने जिस तरह बारी की है ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही अच्छा बैटिंग पिच है। लेकिन आपने देखा होगा जब तीसरी इनिंग के अंदर हमने बॉलिंग की है तो काफ़ी डिफरेंट पिच था, लेकिन उसने बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है और बहुत ही ज़बरदस्त खेला है। और उसके साथ जो सरमत भट्टी है, उन्होंने बहुत अच्छी, मतलब एक मेरे ख्याल से वो हमारी टीम के लिए एक की रोल रहे हैं हमेशा से। 3 सालों से हम जिस नंबर पे कहते हैं वो खेलते हैं, और उन्होंने ओपनिंग की और इतने बहुत ही एक क्रुशियल मैच के अंदर उन्होंने 100 किया और हमारी टीम को एक अच्छी पोजीशन में लेकर आया, फाइनल तक पहुंचाया। हमारे फाइनल में आप पहुंच गए, कौन से ऐसे एरियाज हैं स्टिल जिस पे आप काम करना चाहेंगे फाइनल के लिए? जी मेरे ख्याल से जिस तरह हम लोगों की जो परफॉर्मेंसेस है, मेरे ख्याल से जो आखिरी 4 मैचों के अंदर बहुत ज़बरदस्त रही है। बस ये कोशिश ये करेंगे कि एक दिन का एक्स्ट्रा रेस्ट भी मिल गया, अच्छी तरह रेस्ट करके जो कोशिश ये करेंगे कि फाइनल में भी इसी तरह परफॉर्म करें और अच्छा खेलें। राइट, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन 25th नोमान। थैंक यू जी। राइट, that is all we have from the Catmans. You heard them. It's back to the commentary box now. What a wonderful match we had here in SBP Sports Complex. So this is it from this lovely scene of SBP Sports Complex. This has been a tremendous host. Everything has been at its place in this lovely setting of the northern part of Karachi. But the 2 games, remember, are still going on. So we are not clearly sure that who is going to meet either Khyber Pakhtunkhwa or Sindh, the team of Northern, in the final. But we will see you from the National Stadium, Karachi, where the action will unfold for the final from the 25th of December. That will be a day-night encounter. So just watch your clock and keep it set for the 25th of December. See you from NSK, and this is it from SBP Sports Complex. Hopefully see you SBP in the year 2022. Thank you very much for watching this live broadcast. We hope you had a good time, as we also had here in the SBP. Good night and Allah Hafiz.